ready to listen, is being very stubborn, is not open to a conversation, then I could say, it's no point. It's like no point talking to her or to him. It's like talking to a brick wall. All right, good one, Kushan. Let's have someone else read. Maybe Rohit. Rohit, would you like to read? 1 second, Maliha. We'll ask Rohit if he wants to read. Rohit, do you want to read the 6th one? Yes, ma'am. Okay, go ahead. Yes, yes, sir. Please read the 6th sentence. Can you try? Yes, yes. It's on the tip of my tongue. Yes, it's on the tip of my tongue. So if somebody says, it's on the tip of my tongue, what do you think they mean to say? For example, I had watched that movie last month, the name is on the tip of my tongue. So what do you think I'm trying to say here? Any idea? Yes, it's like American. 1 second. Ma'am, it's remember. All is remember. Let him try. 1 second. 1 minute. Rohit, any idea क्या उसका meaning हो सकता है? On the tip of my tongue. Ma'am, if any word told, then place on the tip, and then let's say example में. Okay, so it's something related to a word. Word से related कुछ है, is what you're saying, right? Okay, we'll help out Rohit. Bhupinder, what were you saying? Sorry, go ahead. No, I'm just explaining about it, this meaning of this word. So it means, suppose these idioms on the tip of my tongue after completing this class, I believe. Which means what? These idioms, in my minute, get it off your chest. They are on the tip of your tongue. Okay. Yeah. Okay. Let's ask Maliha. Maliha, what do you think this means? Ma'am, it's like I remember all things. Easy to these things. Okay. Tip of my tongue. ठीक है. Sarub, you also raised. Yes, ma'am. I'm a little confused, ma'am. Like it is related to something which we know, like which we remember, or it is related to something which we used to remember, but right now we are not remembering it. Correct. It's the second one, Sarub. It's like, like I was giving you the example, I was saying, right? Yes, I have watched that movie so many times, but it's the name is on the tip of my tongue, but I just can't remember it right now. Okay. In that situation, it was or it is. Which one suitable? Is suitable? You can say it's on the tip of my tongue. It is on the tip of my tongue. Okay. Fine. It's on the tip of my tongue. So that means that I know it. I know what the name is, but I just can't recollect it. I can't remember it right now. Okay. Okay, ma'am. Yeah, so that's what it means. Maliha, Bhupinder, did you get it now? Yeah, ma'am. It is opposite meaning. Opposite meaning of what it sounds like. Okay. Bhupinder, what about you? Did you understand the meaning now? Okay, he's on mute. Ma'am, can I go for 7 months? Yeah, you can read the 7th one. Okay. Anyway, long story short, we are moving to India. Ma'am, it's mean we have done some work now. Okay, Work has done now. Okay. So we can move on like this. Okay. I think. Let's see what the others also have to say. Anybody else? What does long story short mean? Any idea? Say that when we say someone that we are going to do this, like shifting to some country, and they start bombasting lots of question why, when, and lots of things, and we just don't want to answer all of them, then we can use it. Okay, somewhat on the right track.
Sandeep, you also unmuted. Did you want to add anything here? Yes, ma'am. Explaining what happened in a few words. Right, correct. That's actually what it means. It's you will use this idiom when you don't want to get into all the details. For example, if you don't have the time to speak, if you don't have the time, you don't want to give the person all the details. So you say, listen, long story short, we've decided to move to India and we are flying tomorrow. So when I reach, that's when I'll call you and I'll give you all the details. I'll tell you the entire thing about what happened. So maybe right now you don't want to tell, you don't have the time, or you just don't want to share all the details. So you'll say, long story short, we are moving to India and we are flying tomorrow. Yeah, for example, I can give you, which I gave yesterday. Say, for example, in a company, in an organization, say someone got sacked. Okay, someone in the higher management got fired, and there is a new boss, a new manager the next day immediately. So maybe your immediate manager will say, listen, long story short, we have a new manager now. I'll give you all the details later. So that is how you can use long story short. When you don't have the time, when you don't want to share unnecessary or too many details with somebody. When, like yesterday, who was it? Zishan gave an example. He said, I'm running out of time. So long story short, you have to, take up this project, or you will have to cover up for me, something like that. Are you guys getting it? Sarub, Maliha, everybody else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब हमें ज़्यादा details नहीं बतानी है, you can use that. Sarub, the word you were using is bombarding. You were trying to use the word bombarding when someone bombards you with questions. Okay. You were explaining, right? So the word is bombarding. Okay. Let's have someone else read the 8th one. Meera? Yes, ma'am. Yeah. Go ahead, Meera. How much is the house worth? Off the top of my head, I would say around across. Yeah. Let's try to read it with better intonation, Meera. Try to read it like a question and an answer. Okay, ma'am. Okay, ma'am. How much is the house worth? Off the top of my head, I would say around across. Yeah, that's better. How much is the house worth? Yeah. Off the top of my head, I'd say around 1 crore. Okay, so what do you think Meera, off the top of my head means here? Ma'am, means which we have knowledge, means we have means memory from the knowledge, ma'am, we can say. Perfect. Yes, you're giving, जैसे अंदाजे से हम कहते हैं, मुझे exactly पता नहीं, but I think, Idea. yeah, this is the idea. I think Yeah, it's around 1 crore. So Yeah, off the top of my head. Perfect. Yeah. Thank So this again can be used in different kind of situations, different contexts. Whenever you want to say like roughly, approximately, like that, off the top of my head. Okay. Does anyone want to make any sentences, or does anyone have any questions till here? We've done 8 idioms till now. Do let me know. Okay, I'll ask you all a question then. We've done 8 idioms. So from here, which one do you think, for example, Meera, which one do you think you could use in your conversation? Easily you could incorporate it. If you have to pick one from here. Ma'am, first one The first one. Okay. and third one, ma'am. Okay. He talks a mile a minute. All right. So when you want to tell somebody that वो बहुत fast बात कर रहा है, Yeah. at a very high, has a very high rate of speed. Yeah. And the third one, I'm all ears. Yeah. So in what situation will you use it, Meera? If you're saying I'm all ears, can you think of an example? Ma'am, I have to make sentence on this. Give me an example, a situation where you will use this. I'm all ears. For example, ma'am,
in the party. Hmm. I was with my friends. One of my friend was talking a mile, talking a mile a minute, ma'am. Okay. So one of your friends was talking a mile a minute. All right. Yeah. Fair enough. And what about the next one? I'm all ears. How will you use it in what situation? Third one, ma'am. Third one, yeah. Yeah. Are you listening to me? Yes, I am all ears. Yeah. So you know Ma'am, what it means, right? means I'm excited. It means, ma'am. Am I right? Not excited. It means that I am paying attention. I'm listening to you Okay. with full focus. Okay. And can Okay, we ma'am. say this? I can Whenever, understand. 1 second, Maliha, hold on. Meera, yes. Okay. me? ma'am, whenever my son comes from school and he tells me about her last means Hmm. what happened Hmm. in his class, Hmm. that I can use, he can use, ma'am. No, you will use it now because he's telling you all about his I can day. use, ma'am. So you can say, Yeah. Beta, sit Yeah. down and, I'm all ears. Tell me what happened. Tell me what happened. Yeah. Yes. Yes, ma'am. है ना? ऐसे कुछ. Every day, ma'am, he describe about her school and classroom, ma'am. Discuss to me, ma'am. Correct. And say, for example, God forbid, if he comes home one day and he's not in a good mood. So maybe you'll ask him and say, what happened? Tell me everything. I'm all ears. So in that kind of a situation. Sometime, ma'am, sometime he told me, "Are you listening to me?" That time I can use this sentence, ma'am. You say, yes, I yes, am all all ears. ears, ma'am. That's up to you Yeah. whether you're all ears or not. But you Yes. say, Yes, ma'am. I'm That all time. ears. Yes. Sometime, ma'am, I could not take a drink. I mean, he may be irritated, ma'am, and I can use this sentence, ma'am. Yeah, this idioms, ma'am. Idiom. Correct. Yeah, Yeah, ma'am, it look irritated. Someone not listen to me, then I can say, I am all here. I can understand. I can listen very well. I can understand. Yeah, if someone is asking you, Maliha, are you listening to me? Are you with me? Yeah. You can say, yes, I'm listening to you. I'm all Yes, ears. I am Correct. all yeah, here. ma'am. Yeah. Okay. Sometime he told me, you are not taking interest means, to listening me. That time I can use, ma'am. Yeah, correct. Okay, Yeah, Tarup, ma'am. you've raised your hand. Ma'am, can I read, ma'am, ninth one, ma'am? Yes, Abhay, 1 minute. You read the ninth one. I just want to finish up the questions and examples first, okay? Yes, Then you ma'am. read it. Tarup, Please explain Thank you, the ma'am. meaning of fourth one. fourth one. Please keep me in the loop. Okay. Yes, ma'am. So please keep me in the loop means please keep me updated about what's happening. एक एग्जाम्पल ले लीजिए तरुप से फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग राइट एंड Yes, you ma'am. you take leave for a couple of days but you want to be updated, you want to stay updated about what's happening at office. So maybe you'll Okay. tell your colleague, listen, I'm taking a leave for 1 week's time, but please keep me in the loop about whatever happens at work. Okay. Keep me updated, जो भी हो रहा है, changes हो रही है, updates है, जो भी है, keep me in the loop. So that, and when I come back, it shouldn't be that I have no idea about what's happening. Okay. Okay, ma'am. All right, Bhupinder, what's your question? Go ahead. What do you want to say? Ma'am, there is no any question. Just about sharing about the fourth one. Keep me in the loop. Oftenly, I use these words during writing email to my client and my colleague. If write any email to my client directly my client, I always say, so please keep in the loop me. Please keep me in the loop. Loop, yes. I oftenly use during office time. Correct. It's a very common idiom to use in email communication, especially work-related communication. That's true.
Also, Bhupinder, oftenly, I think I have told you this before. There's no word like oftenly. It's only often. Okay. Correct. एडवर्ब नहीं बनता मैम उसका. वही adverb है. Often. Yeah. Yeah. एलवाई नहीं लगता है. Yes, L ma'am. में नहीं लगता, बराबर. ठीक है. The questions are done. Abhay, yeah, you can read the 9th one. Go ahead. Yes, ma'am. Hmm. They put me on the spot. Hmm. Then they asked me about the other project. Yes. Means, ma'am, give responsibility to other thing, other work. Hmm. Yes, ma'am. It could be, let's see, okay, you're sort of on the right track. Let's ask somebody else also. Anyone else who can tell us what does this mean? Put me on the spot. They put me May on I? the spot. Yes, go ahead, Sushant. Ma'am, when you want to put someone in spot and you should want to ashame them for some work, if you want to show what he did in front of everyone, Okay. something like Something like that, but it's not to shame anybody. Basically, if I say that somebody put me on the spot, I think Sandeep wants to answer. Sandeep, go ahead. Yes, ma'am. Forcing someone to answer a difficult question. Yeah, perfect. If when, for example, if I am sitting in a conference, okay, and the press is asking me all these kind of questions, regular questions, but then one reporter asks me some controversial question or something that I am not comfortable to answer. Maybe it is too personal or it's a controversial question. So then I can say that the press reporter put me on the spot by asking me all those questions. So like Sandeep said, it is forcing someone or putting them in a situation where they have to answer some questions like that, or say something that they're not comfortable, or do something that they're not comfortable with. Yes, ma'am. ma'am, Alright? yeah. So putting someone in a uncomfortable situation. Uncomfortable situation. जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि quite often family gatherings में, when everyone's together, sometimes some elderly people or somebody else could ask some question which you are not comfortable with. Quite often it's about personal things like wedding and pregnancy and all those kind of questions, right? So what happens is that one person is put on the spot in the entire group. It becomes an uncomfortable situation. So I could say, my aunt put me on the spot by asking about my wedding plans, or my aunt put me on the spot by asking me about my plans for the future. Something like that, put me in an uncomfortable situation. Okay, ma'am. Yeah. Abhay, did you understand the meaning now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To put someone in that. Understood, ma'am. Okay. Okay. Would someone like to read the? Ma'am, I want to ask one thing. Ma'am, you asked Abhay, did you understand everything? Now, ma'am, we can use You put yes, ma'am. Yeah, yes, ma'am, I'm you all put ears. Ma'am, we can. Abhay on the spot. No, not really, because how is it an uncomfortable question? No, ma'am. I said, can he reply yes, I'm all ears? He can say yes. I'm all, no. He can't say I'm all Oh. ears. See, all when ears, when you ask are you listening, then he can say. yes. Okay. So also, are you listening means मैं जो बोल रही हूँ तो बता रही हूँ कि आप सुन रहे हैं ये सब. Then the Yes, person. ma'am. Yes, ma'am. I got it. I want to make a sentence, ma'am, on this. Go ahead. एक second, ma'am. I want to increase the volume. Sure. Yes, ma'am. The media. Can we use, ma'am, the media? Yeah. The media. Yes, ma'am. The media put the leader on the spot to explain how to control the inflation on the grocery and petrol. Yeah, perfect. Absolutely. You can definitely Right. like that. Thank you, ma'am. Welcome. All right, cool. Anyone else who wants to make any sentences or has any questions?
Maliha, you unmuted. Do you have a question or a sentence or something? No, ma'am. Sorry. ठीक है, चलेगा. So let's do the 10th one then. Someone who's not read or spoken. Reena, do you want to read the 10th one? Yes, ma'am. Hi, good morning. I think. Yes, ma'am. Good morning. Time. Good morning. Good morning. Yes, ma'am. Rumors spread like wildfire. Yes. Rumors spread like wildfire. So what do you think this means, Reena? Spread like It wildfire. means just like a news which is spread very quickly. That is the fulfill this idiom, spread like a wildfire. It means just like fire as a woodland. It means जंगल की आग. कोई भी न्यूज जो जंगल की आग की तरफ फैल जाए, that is the means of this idiom, ma'am. Yes, that's absolutely correct. Anything that spreads very quickly. So we can say the news spread like wildfire, the rumors spread like wildfire. Even for example, the COVID infection, the virus spread like wildfire. So anything that spreads very quickly, very fast. Yes, Tarun? Ma'am, what is the second and third form of spread? Say that again, please. Ma'am, what is the second and third form of spread? Like it is a verb. Yeah, it is a verb. I don't think it has, no? Spread, spread, spread. Okay, ma'am. I think it's Yeah, a regular noun. yes, okay, ma'am. All right. So rumors spread like wildfire. Or example, if you want to use it in the past tense, you could say that the COVID cases spread like wildfire. All right. Thanks, Reena. Ma'am, Yes. ma'am, last two sentence I could not get the proper meaning. Would you like to explain? Yes, yes. We'll do them now. We've not done them yet. You can read why don't you read the 11th one? Okay, ma'am. Stop talking to riddle. Stop talking in riddle and tell me what this is about. Yes. So what do you think this could mean when I tell somebody stop talking in riddles and tell Riddle? me what this is about? Yes, ma'am. Stop talking means don't don't create mess. I mean to say. Yes, you're somewhat on the right track. It's like जब हम कहते हैं ना पहेलियां मत बुझाओ, घुमा घुमा के बात मत करो, सीधे Okay. point पे आ जाओ. Means Okay, saying get in on the a confusing way, ma'am. Yeah, don't try to confuse me with what you're saying and or with all your talk. Just come straight to the point. Oh, okay, right. Thank you. Welcome. So stop talking in riddles and tell me what this is about. Or stop talking in riddles and come straight to the point. Right, ma'am. Sometimes we also use an idiom which is don't beat around the bush. Right? Don't Yes, beat ma'am. around the Yes, bush or stop beating around the bush is similar to that idiom. yes, ma'am. Got it, ma'am. All right. Meera, you unmuted. Do you want to add something? I was describing that idioms, ma'am. The idiom. Okay. So Confusing way, ma'am. Yes, ma'am. correct. Okay, let's do the last one here then. Someone who's not read, maybe Dipali. Dipali, do you want to read or? Yes, ma'am. Yeah, okay. We get most of our work through word of mouth recommendations. Yes, so word of mouth is the idiom. Okay, ma'am. What do you think word of mouth means? Means, ma'am, mouth publicity or when we spread the information person to person. Perfect, yes, absolutely. Word of mouth publicity, word of mouth recommendation. That's exactly what it means. Information person to person. Yes, correct. Like, for example, if we. Ma'am, may I give example, ma'am? Yeah, okay, go ahead. Ma'am, shopkeeper was yes, ma'am.
Hmm. Shopkeeper was and telling customer word to mouth, ma'am. You're Yeah. on the right Mm. track, but Impressing, ma'am. Impressing Ma'am, can I try? word of okay, Sushant, right? Ma'am, that restaurant is running by the word of mouth. Like, Yeah, ma'am, because yeah, people are recommending that restaurant. That's why it's like running so well. right, absolutely, yes. So you can say the restaurant is successful, simply by word of mouth, or it has Ma'am, become journalist, famous by we word of can say mouth. Journalists, journalists do their work word to mouth नहीं only. नहीं word of mouth ma'am. का मतलब जैसे एक मिनट 1 second जो कुशांत ने एग्जाम्पल दिया है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ठीक है व्हेन समथिंग इज पॉपुलर जब कोई चीज पॉपुलर हो जाती है फेमस हो जाती है सिर्फ बिकॉज लोग एक दूसरे से इसके बारे में बोल रहे हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जैसे कोई लोकल बिजनेस भी होती है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है right? They don't have advertisements on TV or whatever and all. But how do they become famous? If they, for example, if there's a very popular, very good salon in your area, I may go to the salon and I have a good experience there, and then I'll tell my friend, and she'll tell somebody else, and so on and so forth, right? So what's happening Yeah. there? It's becoming famous through word of mouth publicity. Word of mouth. Okay. Ma'am. Yeah. So, ma'am, can I thought understand. that means how we can impress with मतलब our words, ma'am. Ah, I no. thought it's Now you meaning like understood this. the meaning. No? Yes, Ma'am, ma'am. Now I some restaurant give their service very well. Then the famous mouth to mouth, word of mouth, They become famous through word of they mouth. become okay. They become famous through word of mouth. Okay. Yes. Okay. Someone else wants to. Saru, yes, go ahead. Ma'am, can I say, when we asked the makeup artist to give the demo of her makeup, she said at initial days we used to give demos, but now we get our customers through word of mouth, so we have stopped giving the demos. Perfect. Yes. She can definitely say that we get most of our customers through word of mouth. So now we don't do this or we don't do that or whatever it is. Yes. Okay. Okay, Bhupinder, go ahead. Uh, I just want to add on two more idioms. Can I? Okay, ठीक है, tell us. First one is red flag. Red flag. Yes, that's a good one. Can you tell us what it means? Yeah, it's a sign. It's a warning about potential problem. For example, it means when you are in love, you sometimes don't see the red flag, but in love we don't see the actual problem, but in we are in love. Yeah, correct. That could be a situation where you can use that. So how will you put it in a sentence? Yeah, another one, he lies a lot. That is a big red flag. Yeah, correct. He's a big liar. He's quite a liar. That is a red flag in a relationship. I It's a could say, warning. It's a warning. yeah. Go ahead. What is the next one? It's next one. It's written all over his face. It's written all over his face. Yes, that's a good one too. It means it means everything written on him or them face and understand what is the problem. For example, I know you are lying. It's written all over your face. Right, absolutely. When किसी के चेहरे पर सब दिख जाता है क्या चल रहा है. Right. When, for example, someone is upset also, so I can say, what happened? You look so upset. It's written all over your face. Yes. Or, say we can figure out. Like you look at your friend or someone and you say, did you have a breakup? It's written all over your face, which means Yes. by the way that you look, your expression, it looks like something has happened.
Yes. Yeah, those are very good ones. Did you guys get it? Did the others get it? The two idioms that Bhupinder shared? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So I have also written one example here about red flags. I could say I was so blinded in love that I couldn't see any of the red flags. That, like what he was saying, in the relationship, I couldn't see any of the red flags. I didn't realize all the problems or all the issues. Means I get blind. I was already so Blindly blind in faith. love. Blindly. I was Okay. so blindly in love with the person that मैंने Yeah. उसके जो भी bad habits है या जो भी Mhm. चीजें मुझे पसंद नहीं है, Negative. Yeah. negative things, so I didn't notice Okay. any of the red flags. Okay. All right. Thanks, Pupinder. Thank you. Okay. Anyone else who wants to give us any sentences or any situations? Ma'am, Yeah, uh, Batali. ma'am, for the last one, I have made two sentences. Is it right, ma'am? The political candidate meeting people through word of mouth recommendation. The political candidate meeting people. People, हाँ मैम. मैम, मीन्स घर घर जाकर वो मिलते हैं. घर घर जाकर मिलेंगे तो वो पर्सनली मिल रहे हैं ना. Dipali, there's lot of Yes. background noise now. Could you please move to this location or side? I can hear like things in the background. I'm just putting you on mute, okay? Okay. So, Dipali, to answer your question, that can't be word of mouth because you're saying that the person was going physically to meet people, right? So that is meeting somebody in person. Word of mouth is just basically when, like the others were giving examples, right? People talk about something and mostly they talk about something that is good and they share the information about it. It could be a business, it could be about the service provided by somebody, it could be about a school, for example. Think about it, right? If I have my child going to a school and it's really good, so I'll tell you, I'll say that the school is really good, this teacher is really good, so I'm spreading this information, it's happening through word of mouth. Okay, ma'am. I got it. Yes. Ma'am, Yeah, ma'am, Manju. yes, ma'am, word of mouth. When we make the sentence on this word group of words, how we can use subject? How do we frame a sentence basically? Yes, ma'am. Okay, for example, I'll give you one sentence over here. The school received many admission applications because they got famous through word of mouth. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि this year, for example, this year the school received many admission applications because they got famous through word of mouth. This is how I could use it. Okay, there is, ma'am, there is no need of a group of a clause which here on the screen printed earlier. We get most of our work through. There is no need. We can frame in our group of words. Am I right, ma'am? Yes, you can frame the situation the way you want. Okay, there is, yes, ma'am, there is no need. We can frame as per the situation. Am I right? Yeah, as per the context, as per the situation, you frame it. Correct. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, I want to make one sentence. Yeah, go ahead. Ma'am, our academy is getting my academy is receiving so many praises and getting so many new students through the word of mouth. Yeah, perfect. Yes, you can say through word of mouth or through word of mouth publicity. Perfect. That's a good Yeah. example. Ma'am, it's like being told by another person.
एक को अच्छा लगा वो दूसरे को बोलेगा, वो तीसरे को बोलेगा, ऐसे everyone will come to me. So that's called word of mouth publicity. Ma'am, can we use by in place of through? Is it fine? By word of mouth publicity is also fine. By or through, both are okay. Okay, ma'am. All right, one second. Dipali, you said you had 2 sentences, na? Sorry. Was there another sentence you want to share? It was same of that kind only, so I didn't share it. Okay, Komal, you've raised your hand. Go ahead, please. Yes, ma'am. I want to know how to pronounce this word. Riddless. I got disconnect, ma'am. Then when you, मतलब जब आप बता रहे थे. Sure. What is the word again, please? Stop talking in riddles की riddles, ma'am. Riddle. And tell me riddles. Riddles, yes. Okay, ma'am. How minutes? इसका meaning क्या है? What is Stop meaning? talking in riddles. तो जब हम कहते हैं stop talking in riddles, riddle का मतलब क्या है? जैसे पहेलियाँ, puzzle. तो basically I'm trying to say कि आप पहेलियाँ मत बुझाओ, बातों को घुमा के मत करो, सीधे point पे आ जाइए. So Okay, stop talking in and riddles. tell me what this is about. Yeah, Okay, exactly. I got. Okay. Ma'am, cut of the chase, like Cut to the chase. cut to the chase. Correct. Stop beating around the bush, cut to the chase. They all have the similar meaning. Correct. Okay. Anyone else who wants to give us any sentences or situations? Ma'am, can I? Yes, go ahead. Yes. Sarla. So many patients come to me by word of mouth. Yes, excellent. Yes, absolutely. As a therapist, you can use that particular sentence. So many patients come to me, or most of my patients come to me through word of mouth. Okay. Perfect. Yes, very nice. Okay, what about the Ma'am? others? Yes. May I, ma'am? Yes, go ahead. Yes, he is a good teacher, but no one know him. So he need word of mouth. He needs word of mouth publicity, or Yes. he needs some word of mouth recommendation. Yes. 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 That's a good one. Correct. Yes. Okay, so let me Ma'am? go. Okay, Kushan, tell me. Ma'am, I heard a phrase like when someone asked you like how was the party, he said like it was hell of a party. Ma'am, what's that mean, ma'am? It was a hell of a party, which means it was an awesome party. You had a blast. Yes, ma'am. That's what it means. Ma'am, it is also an idiom. Ma'am? I'm not sure if it's an idiom or an expression, but it definitely means that it was amazing. It was fantastic, mind blowing, all of that. Yeah. Ma'am. Okay, it's a very casual, it's like a slang way of speaking. Yeah, ma'am. It's more like a slang. Ma'am, sorry. Yes. What was their words, ma'am? What did he say? Yeah. Said it was a hell of a party. Okay. Hell of a party. Yeah, it was a hell of a party, which means it was an awesome, fantastic party. I had a great time. Okay, Shailendra, you've raised your hand. Go ahead, yes. Yes, ma'am. Okay, so ma'am, I want to make a sentence on 6th one on the tip of my tongue. The names of all the members of Indian cricket team are on the tip of my tongue. So here, what do you mean? Do you mean to say you know them all, or do you mean to say that you've forgotten right now? Because No, ma'am. It means I know the names of all the members of Indian cricket team. I can speak the names of all the members instantly. Is it? No, but that is not what the meaning is, Shailendra. That's what was confusing some of the others also. But if something is on the tip of my tongue, that means, like how you said, maybe you know all the names of the cricketers, but right now you can't remember some names. Okay.
That's what it means. जैसे हम कहते हैं ना मतलब अरे यार I know it but I just can't remember it right now. Okay, ma'am. Got it. I was wrong. Okay. I thought, ma'am, it means when you have when you know something and it something you can recall very easily. Yeah, correct. That's what it sounds like, but it's actually the opposite of it. Okay. Got it. I think the idiom that we are looking for, जैसे हम कहना चाहते हैं ना कि मुझे तो ये सब पता है, I think we can say something like at the back of my hand. We say now, for example, I know my city at the back of my hand, which means कि मैं कोना जानता हूँ city के बारे में, सब कुछ जानता हूँ. Every nook and corner of Yeah. my city. Correct. I know every nook and corner of my city. So I think something like that is also, I know my city like the back of my hand. So Okay. that would be a little similar to what you wanted to say. Okay. All right. Bhupinder, Ma'am, can I say I Yes. watched that movie? It is on the tip of my tongue. yeah, I watched the movie, but I can't remember the name right now. It's on the tip of my tongue, but मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा. तो बेसिकली जब कोई चीज ऐसी है जो आप जानते हैं उसके बारे में, किसी का नाम जानते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आंसर जानते हैं, जैसे इट हैपेंस इन क्लास आल्सो, राइट? अरे आई नो द वर्ड, आई नो व्हाट इज द वर्ड टू यूज हियर, बट इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग, व्हिच मींस यू जस्ट कांट रिमेंबर इट एट दैट मोमेंट. Maybe you'll remember it later. Okay, Bhupinder, yes, go ahead. So also would like share one sentence on the sixth one. On the tip of my tongue. It's most of the accounting concept on the tip of my tongue. Which means what? Which means you know them or you know what you've forgotten? Accounting concept. नहीं. See, on the tip of my tongue means मुझे पता है but अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है. उसका मीनिंग वो है. ये idiom बहुत confusing है. When we say on the tip of my tongue, तब हमें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे सब पता है, I know everything, but that's not what the meaning is. The meaning is कि, for example, अगर आप कोई somebody asks you what is the name for this thing, this process or this software or this term, so then you say, I know it. I have done this course or I have worked on this software, but right now the name is on the tip of my tongue. I can't remember it. Okay. Give me 5 minutes. I'll try to remember. I'll try to check and tell you. Okay, got it. That is how you can use on the tip of my tongue. Okay. Got it. All right. Shailendra has given us an example. Sorry, I forget. I am forgetting your name. It's on the tip of my tongue. Yeah, I forgot. Your name is on the tip of my tongue, Shailendra. You can say it like that. Your name is on the tip of my tongue, but I just can't remember it right now. Okay, ma'am, I am forgetting. Is it correct? Can we use forget as a gerund? Forgetting? No, you can't. When you're talking to someone in a live present conversation, I can't tell you I am forgetting your name. You can say I have forgotten your name. You can I have say forgotten it. Because right now you're not forgetting. You have already forgotten it. Yeah. Okay, ma'am. Okay. So sorry, your name's on the tip of my tongue, but I think I have forgotten it. Something like that. Okay, ma'am. Thank you. Achha, Tarub, you've raised your hand. Go ahead. Ma'am, I want to ask, this is related to something which we say in Hindi, like we say in Hindi, ma'am, ये मेरे मुंह पे है but बाहर नहीं आ रहा है sometime. बराबर, सही, वही है ये on the tip of my tongue. But Okay, ma'am. That's exactly what it is. Ma'am, some people say that मैं जीप पे आ रहा है पर बोल मतलब याद नहीं आ रहा. ऐसे भी होता है. वही same वही है वो. Okay, Kushant, what do you want to say? Go ahead. Ma'am, when someone is like blaming you, when everybody is blaming you for something, and when can we use like, why you all putting me on the spot? I didn't do that. Yeah, you could say that. They're putting you in a difficult situation, a difficult scenario, right? Yes, ma'am.
You guys are putting me on the spot. You know, it's not my Ma'am, fault. someone did like a bad, like a naughty one incident happened, and like everybody is like blaming you like randomly, like they're saying he did that thing. So then we can use like stop putting me on the spot. I didn't do that. Yeah, a better one to use over here could be, yeah, Shailendra is written over here. You threw me under the bus. You can also say you are barking up the wrong tree. Yes, ma'am. That's a better one actually. जब आप जो आप सिनारियो बता रहे हो ना कि Yes, ma'am. कुछ गलत हुआ है और लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए, but you are absolutely innocent. So you can say, guys, you are barking up the wrong tree. I have not done anything. You know, I am innocent. So they have put you in the spot, no doubt, and but they are barking up the wrong. So Okay, ma'am. you are barking up the wrong tree. I'm not the one who's done it. He's done it. Somebody else has done it. Something like that. Okay. Okay, Sarla, go ahead. Ma'am, I missed your class. Maybe. So, but if you don't mind, give me meaning of the idioms, if you don't mind. Okay, yes. Which any particular one that you want me to tell you? Get it off your chest. Get it off your chest. Okay. So basically, it's, especially in your case, right? You are a therapist. So people come to you and they tell you so many things, right? They must be sharing their stress and all of that and talking to you about it. Yeah. That's what they are doing. They are getting their worries off their chest. So for example, if you have a friend, Sarla, okay, and your friend is looking very low, depressed and so on. Yeah. So you say, you know, I can see that you look very worried. Please tell me whatever it is. Get it off your chest. मतलब अपना मन खाली करो. हाँ, मन हल्का कर लो, जो भी है, you know, just talk about it. Talk it out. Talk about it and get it off your chest. And keep me in the loop. Keep me in the loop is a very simple one. It's basically when you want to tell someone, keep me updated. Okay. Okay. Keep me updated. जो भी चल रहा है, maybe I'm not able to attend the meeting, right? Maybe you're not able to attend a meeting on a particular day, but you tell your colleague, you know, I'll be on leave, but please keep me in the loop about whatever happens at the meeting. Okay. Okay. It's like talking to a brick wall. Yeah, talking मतलब to पत्थर पे सर मारना ऐसा कुछ. जैसे when you want to talk to somebody, make them understand something, you want them to listen to something, but they are not responsive at all. They are not paying any attention to you. They are absolutely not interested. They will say it's like talking to a brick wall. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Okay. Komal, you've raised your hand. Go ahead. Ma'am, one more thing. Spread like wildfire. Spread like wild. Hello, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, Milan. How are you? I am fine, ma'am. Great. And you, ma'am? Yes, I'm also fine. Okay. मैम Yes. जो वुड है ना वुड जी. वुड को मैं पास्ट एंड फ्यूचर जो नियर बाय फ्यूचर है उस दोनों में क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? Would, W-O-U-L-D. WOUL. Yes. Right. Past I would G कर सकते हैं. We can, but then the formation of the sentences will be different, right? The structure will be very different. I'll just give you 2 examples and you will understand. Everyone, please, all the pro learners, join quickly. We will start. And if you guys have any questions, you can also ask. Okay. So, Milan, I'll write 2 sentences. I would have gone to the party had you invited. Okay. And I can also say something like,
Now that you have invited me, I would surely go to the, or you can say I would surely attend the party, right? Whatever you want. You see in both these sentences I'm using would, right? दोनों में ही would का इस्तेमाल किया जा रहा है. But ये जो पहला वाला sentence है, इसमें past का sense आ रहा है, right? It gives us a sense of past, and this sentence gives us a sense of present. Okay? कैसे हो रहा है? I would have gone to the party had you invited me. ये conditional sentence है. Okay? Conditional. ये हम सीखेंगे और भी, but meaning क्या आ रहा है? Meaning आ रहा है कि मैं पार्टी अटेंड किया होता अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता, right? Okay. So this is giving us a sense of past, and we are using would. But you see, the structure is different. Have gone, would have gone, right? So the structure is different. Now, if you look at the second sentence, now that you have invited me, अब जब आपने मुझे invite किया ही है, I would surely go to the party. I would surely go to the party. So simple, बस would का इस्तेमाल किया जा रहा है, right? And it is meaning कि मैं अब पार्टी में जरूर आऊंगी, future, right? Sorry, not present. So sorry, I wrote present here. It is giving us a sense of future, right? यस मतलब मैम would का सिर्फ मतलब किस वजह से यूज किया जाता है would? मतलब मेनली नहीं बिल्कुल भी नहीं. Would is actually a modal. Okay, इसको modal बोला जाता है. अभी हम करेंगे modal कुछ ही दिनों में. ये एक टाइप का वर्ब है, राइट? एंड जो मोडाल वर्ब्स होते हैं वो मोडालिटी शो करते हैं. दे शो मोडालिटी. ओके, सो ये मोडालिटी क्या चीज है, ये क्या करता है, ये हम मोडाल्स करते वक्त थोड़ा अच्छे से समझेंगे. ओके मिलन, ठीक है. ओके मैम. would has a lot of functions. Modals have a lot of functions. Okay, it's just not one. Yes, so modals have a lot of function. They show modality. So that is something that we will discuss when we are discussing modals. Okay. Okay, ma'am. Yes, I hope this answers your question a little bit. Chaliye. Any other questions, guys? Any other doubts? Good morning, everyone. If you guys have any questions or doubts, you can ask me. If not, then we will continue with what we were doing. Ma'am, belly part in stomach means internal organ, ma'am. No, belly is you can also refer to the external part of the stomach as the belly, but stomach जो होता है ना, that is mostly the internal organ, right? Yes, ma'am. जो internal organ होता है जिससे हम खाना digest करते हैं, जिसमें खाना जाता है, उसको stomach बोला जाता है. Belly is usually considered as the entire thing, the inner and outer, exterior and interior both मिलाकर हम belly बोलते हैं. Okay. And tummy, ma'am. Tummy, ma'am. Tummy is again another very informal way of talking about belly. Okay, and it's mostly considered as the external part of the belly. Okay. Okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Right? जैसे कि हम बोलते हैं ना that belly dancing जो होता है, it relates to the external workings of the belly, right? So Yeah. बाहर का. And we say tummy ache. I have a tummy ache. मतलब कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है. So it basically again talks about maybe the internal or external. दोनों ही हो सकते हैं. Okay, okay. Good morning, ma'am. Good morning, Manju. Ma'am, Yes. what's going on? We are just discussing a few doubts that people might have. Okay. If you have any doubts, you can ask. If not, then we will start with linking verbs, right? We will continue. Yes, ma'am. Continue, ma'am. Continue. Yes, chaliye, let's Ma'am? continue. Yes. मैम हेलो इंग्लिश पे किसी को फॉलो करने से क्या होता है? No idea. मुझे नहीं पता है मिलन. Yes, शायद आप टेक्स्ट कर सकते हैं उनको, राइट? पर्सनली टेक्स्ट किया जा सकता है अगर फॉलो करेंगे. नो फॉलो का ऑप्शन है तो मैं सोचती हूँ तो फॉलो करने से क्या हो, सिर्फ देखूंगा. आई थिंक आप उनको मैसेज कर सकेंगे, वो भी आपको मैसेज कर सकेंगे, राइट? ओके. सो सारे स्टूडेंट्स से मिलकर एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है. वहाँ पर लोग बातें करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं. आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह चलती रहती है. सो यू कैन आल्सो जॉइन दैट. You can talk to other people about doubts. उनके साथ conversation कर सकते हैं आप इंग्लिश में. So these are some things. Yes. Ma'am, how can we add the name with that group?
can you give us that the जी group आप of थोड़ा names? सचिन से पूछिए because I know that Sachin is one of the admins. सचिन कार्तिक इन लोगों से पूछिए. They are the people who kind of are the admins of that group. They kind of. Okay, ma'am. How can we ask them, Ma'am, because you are the mediator, na? No, I don't know about the group. I just know no, that no, there ma'am. is a group. That's the students group. Ma'am, I think there are जी, few teachers students also group. in that group. No, teachers Is are there? not there. Teachers are not there. Teachers are not. Ma'am, I also like joined that group, but I wasn't जी, that active. But you have to active in that group. That's the like right. You have to first be condition active. of that condition ma'am, of that. So I was please not guide active. us. They removed me, ma'am. I was not active. हाय हाय रिमूव हो गया कोई बात नहीं आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से भी एक ग्रुप बना सकते हैं फॉर अदर Ma'am, मेंबर्स I और यू think कैन जॉइन दैट if we take like all the Hello English classes, that's enough. We cannot like go. नहीं There are like लाइक so many यस classes, ma'am. ऑफ कोर्स डेफिनेटली it's like how much ever you can do that much. Don't go overboard with it. You will get bored of it very soon. You will get irritated Yeah. of it. So जितना हो पाए उतना कीजिए. And Milan, if you follow people, you can talk to them. Right? I think, if I'm not wrong. नो मैं वैसे किसी को फॉलो नहीं करता ज्यादा. कर सकते हैं, no problem. कर सकते हैं बिल्कुल. They will also follow you back if need be, right? If they want to. ओके चलिए मैम. नो थोड़ा स्टार्ट करते सुबह हैं जी. सुबह में भी आपको फॉलो किया था जब. अच्छा मुझे एक टीचर्स को फॉलो करने पर आई डोंट थिंक यू कैन टॉक टू मी पर्सनली. मुझे तो मैसेजेस वगैरह आते नहीं है. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट. सो बट Yes, हाँ ma'am. टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं. शायद उनके लाइक व्हाट टू से what they are doing and stuff, you will get notifications, I think. I'm not Yes, sure. ma'am. Okay. Yes. Chaliye, let's start. Let's Ma'am, continue with what I have we were mentioned doing. his जी like Telegram ID in the chat. Like if anyone right. wants to join, you can जी talk to जी him. जी देखिए कुशांत ने टेलीग्राम आईडी दे दी है. आप उन चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके at such 9445. Okay, चलिए let's continue. Please repeat, ma'am. Please repeat the numbers. Which what's the number? At such 9445. 924 9445. नहीं ये देखिए मंजू I have written on the screen. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Take it. Yes, everyone. Repeat again. English connection. Who is want to It's on the join? screen, guys. You can like watch Yes, and it's on write the it. screen. Yes, you can take a screenshot or write it down. This is Sachin ID, ma'am. Yes, it's on like Telegram. It's He's on one of the Telegram. Admin, admins. जी. He's one of the admins. आप Telegram पे ये search कीजिए. You'll get the okay, and it's for students only, so you guys can join and discuss anything. All right. या मैम इट इज प्राइवेट ग्रुप, सो सर्च करने से नहीं मिलेगा. सचिन को फॉलो करना होगा. तो फॉलो कर लीजिए. राइट. ओके चलिए. So let's continue with what we were discussing. All right. So we were talking about the linking verbs. Okay. So linking verbs हमने काफी अच्छे से किए हुए हैं already, and we have understood the basic concept of linking verb. कि linking verb क्या है? Linking verb basically links the subject to. बताइए subject to. फटाफट जवाब आना चाहिए. Verb. No, not word. Linking word connects the subject to main verb. No subject complement. Very Complement, good. Thank you complement. so much, Milan. Subject Okay. complement. एकदम मतलब नींद से भी कोई उठाकर पूछेगा क्या करता है linking verb, आप बोलेंगे subject और subject complement को जोड़ देता है. Right? Because कोई main verb नहीं होता है, कोई object नहीं होता है. Right? Simply एक linking verb होता है जो subject और subject complement को जोड़ता है. Subject complement में क्या क्या दो parts of speech आते हैं? What two parts of speech can be a subject complement? Noun and adjective. Very good. Noun and adjective. सिर्फ और सिर्फ nouns और adjectives से हमारे subject complements हो सकते हैं. उसको हम noun phrase बना सकते हैं, उसको हम adjective phrase बना सकते हैं. Okay. Linking verb क्या करता है? Equals to का काम करता है. Anisha is a teacher. Anisha equals to a teacher. Anisha subject और teacher हमारा subject complement है जो अनीशा को describe कर रहा है. और a teacher क्या है? एक noun है. Okay. ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस चीज पे.
Okay. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Abhay. We are How are you, continuing ma'am? with linking verbs. Yes, I'm fine. How about you, Abhay? Yes, ma'am. I am good, ma'am. Great. Chलिए, What linking is your verbs. health, ma'am? Yes, my health is much better. I'm doing much better now. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. चलिए. So subject complement, sorry, linking verbs का हमने बहुत सारे parts कर लिए थे, बहुत सारे different types of linking verbs कर लिए थे. In fact, we were also doing the modals, right? Modals वाले दिन ये start किए. आज हम last वाला जो modal है वो करेंगे. और लास्ट वाला modal का फॉर्म सबसे easy है. Modal plus be. Simple. Modal plus be. Maybe, should be, could be, would be, will be, can be, etc. So यहीं से सारे के सारे लिख लेते हैं. Will be तो कर लिया है हमने. Shall be. उसके बाद should, could, would be, should be, और क्या बच रहा है? May, might, must. Can भी हो सकता है, राइट? यहाँ पर तो can भी होगा. Can be, might be, must. Okay. Now, what is ought to be? You can say. Ought to be भी बोल सकते हैं यहाँ पर. Okay. जो उनको एक्चुअली क्वासी मोडाल्स बोला जाता है या सेमी मोडाल्स बोला जाता है. वो पूरे तरीके से मोडाल वर्ब नहीं कहलाते हैं. These are the true modals. So वो जो क्वासी मोडाल्स है वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. Ought to be लिख देते हैं. Ought to be, dare to be, need to be. Right? तीन ही है शायद. Ought, dare, need. Most of तीन. Okay. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. So एक सेंटेंस ऑलरेडी कल किसी ने बनाया था. बहुत अच्छा सेंटेंस था. I'll be angry if you do this again. Right? So I is equals to angry. I is equals to angry. Angry क्या है? Adjective है. Angry किसको डिफाइन कर रहा है? I को डिफाइन कर रहा है. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन गया. Will be हमारा क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब बन गया. Okay? चलिए let's start. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. You should be drive carefully in bad weather. You should be driving होना चाहिए पहली बात. और ड्राइविंग ठीक क्या है हमारा? एक्शन ड्राइविंग हमारा एक्शन वर्ब है. Action. तो एक्शन वर्ब जैसे ही लग गया. लिंकिंग वर्ब नहीं रहा. सो लिंकिंग वर्ब नहीं रहा. सेंटेंस डज नॉट वर्क. राइट? Drive carefully, ma'am. तो ये ड्राइव केयरफुली. ड्राइव भी तो हमारा वर्ब है. राइट? yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हैं यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. बन गया लिंकिंग वर्ब. राइट? लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा. मैम इट शुड you should be careful while बन गया हमारा लिंकिंग वर्ब. अंडरस्टूड? ठीक. Yes, ma'am. सो ड्राइव इसके बाद नहीं आएगा. इसके बाद केयरफुल आएगा. क्यों? केयरफुल क्या है? You can be drive slowly. अगेन ड्राइव क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया. राइट? यस. जी बताइए. व्हाट वर यू सेइंग? इट शैल You बी can be drive carefully. वन बाय वन बाय. यस जी बताइए. it shall be wrong again if you do the same. It shall be wrong. Very good. It shall be wrong. थोड़ा सा सेंटेंस shall be wrong if you do this. बिल्कुल सही है. राइट? मैम may I ma'am? यस. यस मीरा Ma'am, बताइए. it could be easy if you took interest. It could be easy If you took interest in study, we good. can say, ma'am. Very good. It could be easy. थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं. It could be easier for the both of us if you took interest in Excuse me, ma'am. May I do your work? studies. May I do your work? अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं may I do your work, मेन वर्ब क्या है बताइए? Do, May I right? do your work? May I do your work में क्वेश्चन फॉर्म. सो do जो है हमारा वो हमारा मेन वर्ब है.
may I do your work? So main verb आ गया, do एक action verb है, not linking verb. Okay. Ma'am, may I? Yes, one by one. मलिहा बताइए. Yeah, ma'am. First one, I will be angry if you do again. If you Yes, do this again. Yes, this is correct. Yes. Okay, Maliha, you think no problem. Srinivas बताइए. Meera, one second, one by one. Yes, Srinivas बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा वो हो जाता है श्रीनिवास. Trustful. ट्रस्टफुल नहीं, ट्रस्ट वर्दी होता है. एडजेक्टिव जो होता है वो Adjective हो ट्रस्ट जाता वर्दी है, होता ma'am. है. राइट, सो बिल्कुल करेक्ट है. मस्ट बी कहाँ है? वेरी गुड. सो यू मस्ट बी trustworthy in order to get this job. आपको ट्रस्टवर्दी बनना पड़ेगा ये जॉब मिलने के लिए. ओके, इसीलिए सी मतलब why do I teach adjectives, adverbs, इनके फॉर्म्स इतने अच्छे से मैं क्यों करवाती हूँ? Because this is where the problem arises. जब तक आप समझेंगे नहीं कि डिफरेंस क्या है, कौन सा हमारा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, तब तक आप इस टाइप के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाएंगे. ओके, Srinivas, focus on the different types of the word. Trust is the word. Trustworthy is our adjective. Okay, ट्रस्ट एक्चुअली नाउन भी होता है, बट क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट है? ये तो आप नहीं बोलना चाहते, आप बोलना चाहते हैं आप ट्रस्ट वर्दी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट. गुड, वेरी नाइस श्रीनिवास. अमित बताइए नेक्स्ट. Yes, ma'am. It can be bright if you scrub properly. इट कैन बी ब्राइट एंड शाइनी लिख देते हैं. दो एडजेक्टिव्स आ गए. इफ यू Scrub प्रॉपर्ली. बहुत अच्छा सेंटेंस है. वेरी गुड. Ma'am, यस, प्रशांत बताइए. the key must be in the car. जी मंजू. Ma'am, Preeti. Sorry, yes, Preeti. The key must be in the car. Again, the key must be in the car. In the car क्या है? क्या in the car हमारा noun है? क्या in the car हमारा adjective है? Ma'am, preposition. Prepositional phrase है. प्रीति, एक चीज अच्छे से समझिए. अगर मैं linking verb लगा रही हूँ, because I can see Preeti you are struggling with this. आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. The key must be in the car. सिंपल है. क्वेश्चन आपको ये करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है, बट ये लिंकिंग वर्ब नहीं. The key must be owned. ओके, आपको क्या याद रखना है प्रीति कि अगर ये लिंकिंग वर्ब है, इफ दिस इज अ लिंकिंग वर्ब, देन वी कैन रिप्लेस इट विद व्हाट? वी कैन रिप्लेस इट विद इक्वल्स टू. इक्वल्स टू. सो यहाँ पर अगर मैं इक्वल्स टू लिख दूं, the key equals to in the car, क्या इसका कुछ मतलब होता है? No, right? We want to say the key must be old जब बोल रहे हैं, so key equals to old. This makes sense. So ये हमारा linking verb है, ये हमारा action verb है. Okay, the understood प्रीति? ये थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए. ये सुशांत बताइए नेक्स्ट. Ma'am, can we say like this? Ma'am. One by one, everyone, please just put your hands up. I'll call everyone's name, okay? According to the list. बताइए सुशांत. I would be happy if you do this work on time. Again, I would be happy if you do this. Yes, it is correct. Very good. I would be happy If you finish this work on time. Okay, if you finish this work on time. बिल्कुल correct है. Very good, Prashant. Next is Perla, बताइए. We ought to respect our elderly senior citizens. If we say we ought to respect our elderly citizens, respect क्या है? Respect, respected, respected, respecting. Word, right? Action verb. Okay. So not going to work. Correct है, sentence correct है, but it's not linking verb. Yes, Vishakha बताइए. Ma'am, I have sentence, ma'am. One second, Abhay. I'm going according to the list. Okay. You have to wait a little bit. Yes, Tarla बताइए. So in place of respect, we what used to
You ought to be respectful. You ought to Respect be. to be, ma'am. Ji, 1 second, Vishakha. You ought to be respectful towards your elders. ये क्या Elders. हो गया देखिए, यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं. You equals to respectful. ought to be क्या हो गया हमारा linking verb हो गया. Understood? बताइए विशाखा बताइए. The situation might be worse if rain comes, or when if rain will come, I am not sure. In for the second clause, Very good, Vishakha. The situation might be worse. might be worse. इसमें ना might become लिखेंगे तो ज्यादा better होगा, okay? And वो Okay. become भी हमारा linking verb की तरह ही काम करेगा, okay, Vishakha? But this is Okay. also like I'll let this pass because this go. The situation might be worse when if नहीं होगा when the Okay. When the नहीं होगा when it starts to rain. it starts to Rain rain को means simple present tense ही use करना होगा मैम बिल्कुल यहाँ. बिल्कुल Starts to rain. राइट. रेन के साथ क्या होता है लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेन कम्स रेन पोर्स इस टाइप का हो जाता है. हाँ yeah रेन ma'am, I know, I knew I knew राइट it. जी. Yeah. रेन को हम ऑलवेज ट्राई करेंगे वर्ब की तरह यूज करने के लिए. ओके Okay. अगर जरूरत Okay. पड़े तो ऑलवेज वर्ब की तरह यूज कीजिए, हमेशा सेंटेंस अच्छा साउंड करेगा. ओके वेरी गुड Okay. विशाखा. यस Ma'am, अभय yeah, बताइए. I have another sentence also, अच्छा ma'am. बताइए बताइए. We ought to be obedient बिल्कुल करेक्ट. वी ऑट in टू बी in ओबीडिएंट. in order to follow traffic rules. Is it correct, ma'am? करेक्ट बिल्कुल करेक्ट है. ओके वेरी नाइस. यस अभय Ma'am, बताइए. यस we might to liable about poor. we might Might be liable about. liable. हाँ yes ma'am. we might be liable about मैंने मीन्स गरीब के प्रति हमें मैंने झुकाव होना चाहिए, लिएबल होना चाहिए. liable नहीं होगा. then we should be empathetic, right? we must be or we might be or we should be empathetic towards the poor. बिल्कुल सही है. very good है. okay liable का मतलब होता है जिम्मेदार. okay I am liable for this. इसका मतलब है कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ. alright so आप जो वर्ड ढूंढ रहे हो वो empathetic हो सकता है. okay lenient हो सकता है. you can say lenient. okay इस टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं. alright very good अभय करेक्ट है. okay after that बताइए मीरा बताइए. मीरा okay Amit. Yes, those who ma'am. have their hands up. Yes, ma'am. yes one by one. मीरा then Amit. मीरा बताइए. He may be happy after after talking to you, ma'am. She may be happy. Correct. सही है. Okay. We have already done happy. So कुछ और try करते हैं. But correct है. Very good. Excuse Yes, me, ma'am. Amit. Yes. Excuse me. Yes, Maliha. We must be respectful full to others. Correct. We must be respectful to Ma'am. others. Correct. Ma'am, Yes, other one one is by one. He may One be. by one, we guys. must 1 be, second. ma'am, Maliha बताइए. trustworthy to our relations. We must be trustworthy to our relations. Two नहीं होगा. We must be trustworthy in our relations. Relationship में In our हमें trustworthy होना चाहिए. In our relations. Correct. Very good, Maliha. Yes, Amit बताइए. Ma'am, he may be brilliant if he gets coach. He may be brilliant if he gets coaching. Yes. See, the sentence is correct. He may be brilliant. That is correct. But if he gets coaching, मतलब नहीं आ रहा है क्योंकि he may be brilliant का मतलब है वो शायद एक brilliant है. Okay, present. अगर उसे coaching मिले, so not really Yes, gelling up. But हम बोल सकते हैं अमित something like he may be a brilliant. यहाँ पर noun की तरह यूज हो रहा है. Pay careful attention, guys. Brilliant यहाँ पे noun की तरह यूज हो रहा है. और लगाया है मैंने. Okay, he may be a brilliant, but he can't even find his socks. Okay, so कुछ इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं. हो सकता है कि वो एक बहुत ब्रिलियंट इंसान है, बट वो अपने सॉक्स भी नहीं ढूंढ सकता.
Okay. Yes, ma'am. Ma'am, he may be happy, ma'am. He may be happy. Correct, correct. बिल्कुल सही है. Yes, मीरा बताइए. Ma'am, I have question, ma'am. Yes, Amit, 1 second. I'll answer the question. Okay, 1 second. Yes, मीरा बताइए. Yes, ma'am. She may be beautiful because I heard about her beauty, ma'am. Can be. Very good. बिल्कुल सही है मीरा. Absolutely correct. Yes, तरला बताइए. My daughter will be hungry if I don't cook the food. Daughter will be, yes, correct. Hungry बिल्कुल is सही है. बिल्कुल सही है. Yes. Excuse me, ma'am. We should be clean our environment. You can see. We should be Keep clean our environment. keep clean हमारा क्या हो गया? Keep clean. Keep is Action verb. Yeah. action verb. Keep, Action verb, kept, ma'am. kept, keeping. Right? Action verb हो गया. Okay. Very good, guys. बहुत अच्छे sentences I थे. have, ma'am, dare to be. जी, I विशाखा. have he dare to be aggressive if we are not able to fulfill his wishes. Again, if we are not able to fulfill, future हो गया और हम बात कर रहे हैं present की, right? बोल सकते हैं. It is Okay. correct. So, ma'am, if B is there, so we are talking about future tense now. B means बन जाएगा. नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है. We must be trustworthy is Excuse me, not ma'am. I future can't tense. hear what you said. I'm saying We that should be keep. Yeah. we Keep or should be kept. keep नहीं होगा. Keep is our action verb, right? Maliha? Keep, kept, हाँ, keeping. then? Action verb है, so नहीं होगा. Kept. Right? Kept भी नहीं होगा. कोई Okay, verb okay. नहीं आ सकता. अगर linking verb use कर रहे हैं उसके बाद कोई action verb नहीं आ सकता. Right, Maliha? Okay, okay, ma'am. Okay, Okay, so the ma'am. sentence is not correct. Okay. Okay. Dare to be पे आते हैं, dare to need to be आते हैं. It's Vishakha, we will have to change the sentence a little bit. Okay. Manju, do you have a sentence? Yes, ma'am. बताइए. Ma'am, and the result could be better. Very good. बिल्कुल सही है. The result could be better. Okay. The result could be better if he took it sincerely. बिल्कुल सही है. The result could be better if you took it sincerely. बहुत अच्छा है. Very good. Second one, ma'am. बताइए. You must be analyzing the situation. नहीं मंजू. Analyzing क्या हो गया? Ma'am, analyzing, I think it is Verb. a, yes, ma'am. Verb. Action verb. Verb. Yes, Okay, action verb. okay. Right. I used Analytical. I made it as a Adjective. second. Yes. Right. Analytical हमारा adjective होता है. Right. You must be analytical. If I say Yes, you must be analytical. analytical. Right. Yes. बन गया adjective. And then it is okay, ma'am. Absolutely okay. Right. Okay. वो sentence भी सही है. That sentence is also correct, but वो action verb है. That's the only Action difference. verb, right. Right. We used Right. as a link verb, right, ma'am. Correct. Correct. Linking verb use करना है. बिल्कुल. Yes, ma'am. Linking. Okay. Thank you, ma'am. चलिए. 1 second. Give me 1 second. Let's go to the question. Amit has a question. Amit बताइए. Yes, ma'am. When we use ought to and dare to, ma'am. अच्छा, ought to and dare to. इसके Yes. मीनिंग्स थोड़ा अच्छे से सीखेंगे जब हम वो कर रहे हैं. मोडाल्स करेंगे तो अच्छे से देखेंगे. ought to का मतलब होता है obligation. Okay, obligation से आता है ought to. मतलब you are obliged to do so. If I say you ought to take care of your parents, इसका मतलब ये है कि ये आपकी responsibility है, ये आपका obligation है कि आप अपने parents की देखभाल करेंगे. Alright, and dare to का मतलब होता है इतना साहस से कोई like साहस कैसे हुआ कि ये कर दिया. Right? For example, if I say do not dare to go there. Okay, आप ये साहस मत दिखाइए, दुस्साहस मत दिखाइए कि आप वहां जाएंगे. Kind of like this. Okay. I hope थोड़ा सा आपको समझ में आया. Do not dare to do stunt. Is it correct, Yes, ma'am? yes, correct है. दुस्साहस stunt करने का दुस्साहस मत दिखाइए. Yes, yes. Okay. This Excuse is me, the ma'am. meaning. जी. मलिहा बताइए. We ought to be. You ought to be careful towards your country. बोल सकते हैं about बोल सकते हैं. Careful से ज्यादा अच्छा होगा patriotic. Okay. Adjective correct है, but adjective थोड़ा change करेंगे तो better लगेगा. Yeah. जी कुशांत बताइए. Yes, ma'am. He dare to be a bold person
when he speaks in front of his boss. करेक्ट करेक्ट है बट वहां पे डेयर टू आ जा रहा है रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं मैम यहाँ पे यू ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर कंट्री बिल्कुल बिल्कुल you ought to be responsible towards your country is much more better sounding, right? Much more appropriate, fitting. So he dared to be bold. Yes, ma'am. Bold person. Ma'am, a bold person. Be a bold person. बिल्कुल सही है. In When he front. speaks in front of his boss. Very good. When he spoke होगा, right? ये past tense पे है. या फिर नहीं तो he dares हो जाएगा. Yes. So he dared to be a bold person when he spoke in front of his boss. Correct. Okay, very good. बिल्कुल सही है. He needed to be confident to win the match. Correct. बिल्कुल सही है. Very good, जी. He needed to be confident in order to win the match. Right? बिल्कुल सही. Very good. And ma'am, one more. A student can be shine if he do work harder. Right? If he works hard. If he works hard. Right? Okay. A student can shine. Sorry, आपने क्या बोला जी? A student can be shine if he do work harder. Shine नहीं होगा. Shine is our adjective. Sorry, shine is our verb. Shine नहीं हो सकता है. But shine यहाँ पे correct नहीं है, right? So you can say that student can be excellent, right? So adjective लगाना जरूरी है. Ma'am, why we add order to in the sentence? In order to, आपने क्या बोला था? He needed to be confident to win the match. हाँ, वो भी correct. He needed to be confident. In order to is just an expression. Okay, ये बोलते हैं हम like in order to do this, we should do this. ये करने के लिए ये करना जरूरी है. Alright. Okay. Yes, ma'am. बताइए. Yes, विशाखा. तरला जी जिनके हाथ ऊपर हैं बताइए. Ma'am, that sentence he dared to be aggressive when can we say we are not able to fulfill his wishes? When we were not able to fulfill his wishes, he dared to be aggressive. Past tense. So past tense correct है. बिल्कुल सही है विशाखा. Okay. Yes, तरला बताइए. Do you have anything else? चलिए. Okay. I hope आप लोगों के लिए linking verbs जो ये वाले हैं पूरे clear हो गए हैं. Yes, this is clear for you guys. So यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दे दिया गया है structure. उससे आप sentences बना सकते हैं easily. Okay. So what we will do is so अभी तक हमने linking verbs किस किस के देखे हैं? I want to take screenshot modals. जी मीरा क्या बोल रही हो? Ma'am, I want to take screenshot of modals. जी, Yes, ma'am. जी Yes. बिल्कुल बिल्कुल definitely. Thank you, ma'am. जी बताइए. One minute. This Thank you, ma'am. need to be done. जी प्रीति. This work need to be done. Need to be done. Again, done जो है हमारा verb है. Okay. This work needs to be done. Done. So done हमारा verb है. Okay. Yes. Alright. अच्छा अभी तक हमने linking verbs के जो types देखे हैं जितने भी हमने sentences बनाए हैं formulas देखे हैं वो सब be से related है. They are somehow related to be, right? Be forms, modals, इनसे ही related हमने सारे के सारे linking verbs देखे हैं. Now there are certain linking verbs that are not in the be form. वो हमारे action verbs होते हैं जो linking verb का काम करते हैं. So next we will look at that. So वो हमारा होगा next topic. Alright. So यहाँ पर हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है linking verbs के बारे में जो कि action verbs है. So यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं. Action verbs is linked. Okay. Action verbs as linking verbs.
सो कुछ ऐसे एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, राइट? दे फंक्शन एज लिंकिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। सो आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि इनका भी काम सेम होगा एज द लिंकिंग वर्ब। अगर ये फंक्शन कर रहे हैं सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब की तरह, सो ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग द सेम फंक्शन एज द लिंकिंग वर्ब। क्या फंक्शन है लिंकिंग वर्ब का? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ देना, राइट? So to connect the subject with the subject complement, we are using linking verbs. So these action verbs also do the same thing. Usually action verb का काम क्या होता है? What is the actual work of the action verb? What is the actual function of an action verb? जी, we have discussed action verbs. बताइए, anyone? कुछ भी, जो भी आपको लगता है बताइए. If I say I ate an apple, if I say I taught English, so इसमें क्या काम क्या हो रहा है? जी, Ma'am, action verb works on a action. it shows an action, Action verb correct? tells Action verb shows the tell us action of the about the noun and tenses. pronoun. जी, one by one. It talks about an action, it shows an action. ये correct है. वो क्या जोड़ता है? Subject के साथ क्या जोड़ता है? It either connects, right? It either connects objects, or it connects prepositional phrases, or it connects adverbial or adjectival phrases. Adjectival means, sorry, adverbial phrases. Okay. So इन चीजों को जोड़ा जाता है. Okay. So prepositional phrases, adverbial phrases, and objects are connected through action verbs, right? And of course, action verbs show an action. But when action verbs are used as linking verbs, they are not showing any action. They are not connecting the subject to objects or prepositional phrases or adverbial phrases. ये सब कुछ नहीं करता है. वो क्या करता है? वो linking verb का काम करता है. So everyone please mute yourselves. Thank you. So वो क्या करता है? वो subject को subject complement से जोड़ता है, right? So an action verb that is functioning as linking verb will join or connect the subject to the subject complement. Okay, simple. कुछ common जो हमारे action verbs है जो linking verb की तरह काम करते हैं, they are smell, look, taste, feel, remain, turn, appear, become, sound, seem, grow. Okay, ये सारे के सारे हमारे action verb की तरह काम कर सकते हैं. Alright, and they can also take other forms. B के forms भी ले सकते हैं. कैसे? So यहाँ पर बोला गया है if an action verb can be replaced by a B verb without changing the meaning of the sentence, it is a linking verb, right? इससे भी ज्यादा simple तरीके से हम यूज करेंगे. कैसे याद रखेंगे? Equals to formula, I equals to worthy, she equals to upset, eggs equals to rotten, plans equals to nice, you equals to exhausted, right? इस तरीके से. So आप देख सकते हैं worthy adjective है, upset adjective है, rotten adjective है, nice adjective है, exhausted adjective है, sleepy भी adjective है, heavenly भी adjective है. Okay, so you can very well understand कि ये सारे के सारे subject complements हैं. These are all subject complements. Subject के बारे में बोल रहे हैं, right? They are talking about subjects. So यहाँ पर तो बिल्कुल simple form में दिया गया है, present form में दिया गया है. I feel worthy when the boss compliments me. She seems upset about the announcement. The eggs smell rotten, वगैरह वगैरह. But इनके different forms भी हो सकता है. The forms that we have learned till now, इन forms को भी इनमें use किया जा सकता है. For example, I can say, Bob has been feeling sleepy. If I say Bob has been feeling sleepy, वो भी हमारा क्या होगा? Linking verb होगा. Bob has been. Okay. So क्या हो गया? देखिए, has been feeling पूरा का पूरा लगेगा आपको देखकर कि शायद ये क्या है? Action verb है, right? But नहीं. इसको हम replace कर सकते हैं linking verb से. We can say Bob is sleepy, right? Simply बोल सकते हैं. या बोल सकते हैं Bob was sleepy, right? So अगर मैं बोलूँ Bob has been sleepy, feeling sleepy, ये भी हमारा linking verb है. और क्योंकि ये linking verb है, इसको हम किससे replace कर सकते हैं? Of course with equals to, right? Equals to से कर सकते हैं. But you see, these are also action verbs. ये तो हमारे action verbs भी है. So कभी-कभी ये action verb का काम करेंगे. कैसे? Excuse me, ma'am. जी अभय बताइए. If you have a question. Ma'am, is a type of action? Is any type of action? Is. Means मैंने action का type भी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल होते हैं. No, types of action verbs.
मीन्स फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन. नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है. हैव यू रेड एनीथिंग Okay. लाइक दैट? मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है. Okay. एक्शन वर्ब्स के टाइप्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वगैरह, बट इस टाइप से डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है. ओके. Okay, ma'am. Thank you. यस, मोस्ट वेलकम. अब देखिए, ये जो एक्शन वर्ब्स है या ये जो लिंकिंग वर्ब्स है, ये एक्शन वर्ब्स का भी काम करता है कहीं कहीं पर. सो इसको डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है द एग स्मेल रॉटन. इफ आई से समथिंग लाइक, इसके बाद अगर एक एक्शन वर्ब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्शन वर्ब बन जाएगा, राइट. या फिर हम चाहे तो कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज लगा सकते हैं. सो आई कैन से समथिंग लाइक, सिंपल, बहुत ही सिंपल, द Ma'am, you are not audible. I'm thinking, I'm coming up with the example. I'm not saying anything. Okay, no problem. These are all examples, ma'am. You are thinking another example. जी, ऐसे एग्जांपल्स जहां पर ये एक्शन वर्ब का काम कर रहे हैं, राइट. आई डोंट नो व्हाई आई एम आउट ऑफ एनी आइडियाज. वेरी फाइन, साउंड नाइस. Can I यस, say one, ma'am? हाँ हाँ, प्लीज बताइए, प्लीज. This garbage pile smells like a stale flesh. Can we say like that? लाइक अ स्टील फ्लैश अगर बोलेंगे, Or ये भी हमारा लिंकिंग ही हो रहा है. ओके, इट इज आल्सो लिंकिंग. फॉर एग्जांपल, आई हैड सम एग्जांपल्स, आई फॉरगॉटन कंप्लीटली. okay, you are finding that not linking verb. नो, नॉट लिंकिंग वर्ब. आई एम Okay, ट्राइंग टू गिव okay. एग्जांपल्स एज एक्शन वर्ब्स. जी, अगर मैंने बोला द स्मेल, जी, ये तो हमारा नाउन हो गया. ओके, ये सही. दे सीम टू बी कमिंग हियर. ऑलराइट, इफ आई से दे सीम टू बी कमिंग हियर, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीम क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है. ओके, कैसे पता चलेगा? सीम को हटाइए, इक्वल्स टू लगाइए, हो रहा है. दे इक्वल्स टू बी कमिंग हियर, नॉट वर्किंग, राइट. सो ये हमारे एक्शन वर्ब का काम कर रहा है. ये एक्चुअली वर्ब है. ओके, कमिंग इज अ वर्ब. ये हमारा इंफिनिटिव है, इसको छोड़िए, दिस डज नॉट मैटर. दिस इज बेसिकली अ वर्ब फ्रेज. ओके, सो ये वर्ब का काम कर रहा है. कमिंग इज फंक्शनिंग एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. आई होप दिस इज अ लिटिल क्लियर गाइस. थोड़ा सा समझ में आ रहा है, राइट. सो सीन Yes, जो है ma'am. यहाँ पर, ये एक्शन का काम कर रहा है, ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है. बट ये वाला जो सेंटेंस है, शी सीम्स अपसेट, क्योंकि अपसेट हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर सीम हमारा जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है. दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो कि कभी कभी ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे, कभी कभी ये एक्शन वर्ब का काम करेंगे. मैम, ये आपका, यस, यहाँ पर सीम है मेन वर्ब. यस, मतलब यस, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली. यहाँ पर कमिंग क्या है? कमिंग, देखिए ये एक्चुअली क्या है, जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि दो वर्ब है, राइट, दिस इज बेसिकली अ फ्रेज. और सो ये थोड़ा सा जब सिंटेक्स करेंगे अच्छे से समझेंगे. बट सोचिए, इफ आई से समथिंग लाइक, we love how they dance. We love how they dance. तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम ओके, ये मेरा सब्जेक्ट,
राइट, वी सब्जेक्ट, लव मेन वर्ब है, ये भी हमें पता चल रहा है, राइट। एंड हाउ दे डांस, ये पूरा का पूरा एक्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या लव करते हैं, हाउ दे डांस, वी लव, व्हाट डू वी लव, हाउ दे डांस, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप पूछेंगे मैम हाउ दे लव, इसमें भी तो सॉरी हाउ दे डांस, डांस भी तो एक वर्ब है, सो ये किसका काम कर रहा है, ये एक्चुअली वर्ब है, बट ये इस फ्रेज का वर्ब है, इस सेंटेंस का वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस का वर्ब लव है, ओके, विच इज द मेन वर्ब। ये जो फ्रेज है हाउ दे डांस, ये एक्चुअली फ्रेज नहीं है, क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। सो हाउ दे डांस इज द वर्ब ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। सो क्लॉजेस, फ्रेजेस, उनके जो वर्ब स्ट्रक्चर्स है वो थोड़ा बाद में सीखेंगे, थोड़ा एडवांस्ड में है, बट आपके लिए फॉर द टाइम बिंग आई थिंक दिस इज इनफ। मिलन, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। Okay, so guys, you are understanding कि जो action verbs linking verb की तरह काम कर रहे हैं, they can also function as action verbs in certain cases, and you have to distinguish. आपको ये देखकर समझ में आना चाहिए, basically हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं तो हमेशा सोच रहे हैं, but at least एक understanding होनी चाहिए कि कहाँ पर linking verb का काम कर रहा है, कहाँ पर action verb का। क्यों? Because you should be able to identify कि इसके बाद object लगा है या फिर adverb या adjective लगा है, कौन सा पार्ट लगा है, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल कम बैक अगेन इन सिंटेक्स, अभी नहीं समझेंगे, सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगी, ओके। सो बताइए, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट्स है? नो मैम, इट इज क्लियर। क्लियर, राइट। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स, if you guys have any doubts you can ask, if not then we will try and make some sentences. चलिए मैम इन्हीं वर्ड्स से थोड़े बहुत thinking verb की तरह sentences बनाते हैं जी। मैम जी मैम up to this level we have we got well understand, but in detail you taught us that that is of the head. it went above the head, कौन सा बताइए? Ma'am, to be and must be and dare to be, that is. Then I too, I am also not understanding. जी मतलब कौन सा एग्जैक्ट पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए मुझे थोड़ा सा। Ma'am, there is a ought to be and must to be and dare to be, need to be, that group. अच्छा अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड। एंड No. मलिहा बताइए। Ma'am, I can't understand whole chapter today. आपने स्टार्टिंग से देखा है मलिहा? मैम थोड़ा सा मिस हुआ है मेरा। जी थोड़ा सा ना, मतलब मिस मत कीजिए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ओके। I'll explain it. ओके मैम, थैंक यू। यस, ये थोड़ा सा नोट्स में देख लो, राइट। चलिए, सो सबसे पहले तो एकदम बेसिक समझते हैं, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, बताइए। यस, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या करता है लिंकिंग वर्ब एक सेंटेंस में? सब्जेक्ट को किससे जोड़ता है? कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द subject to the मैम नाउन एंड एडजेक्टिव। करेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड अभय एंड वेरी गुड मंजू एज वेल, बिल्कुल सही है ये बात, मीरा एज वेल, बिल्कुल सही, राइट। सो एकदम सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना है, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। यही तो अच्छे से समझना है, कॉम्प्लीमेंट, यही ओके जी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, राइट। ये अगर समझ गए तो आधा लिंकिंग वर्ब समझ गए, राइट। सो फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट complement. Subject देखिए पहले से अगर पूरा वीडियो देखेंगे 100% समझेंगे, नहीं समझने का कुछ नहीं है, ओके। सो ये देखिए हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। और अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, इनके अलावा कोई भी चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ओके। सो अगर आपने एक सेंटेंस लिखा उसमें सब्जेक्ट है आई,
उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है लिंकिंग वर्ब? एम। उसके बाद ओके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की जगह पे आपने लिख दिया गोइंग। अब गोइंग तो नाउन भी नहीं है, गोइंग तो एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या है वर्ब भी हो गोइंग? सकता है मैम। वर्ब नहीं वर्ब हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता। दैट इज द एंटायर थिंग, राइट? अगर लिंकिंग वर्ब ओके यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब नहीं होगा। इट इज नॉट ओके अ मैम लिंकिंग वर्ब, तो फिर वो लिंकिंग वर्ब रहा ही नहीं। लिंकिंग वर्ब होने के लिए क्या जरूरी है? नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सो आई एम ओके अ स्टूडेंट, या फिर आई एम एडजेक्टिव लगा देते हैं, स्मार्ट। ओके, स्मार्ट या क्या हो गया देखिए, अब एम के बाद आई हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। एम हमारा लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। अब नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अ स्टूडेंट नाउन है हमारा, स्टूडेंट या स्मार्ट स्मार्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव हमारा। अब या ये जो या अ स्टूडेंट या स्मार्ट है, ये क्या कर रहा है? ये आई को कम्प्लीमेंट कर रहा है। आई के बारे में कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट देते हैं ना हम लोगों को कि अरे आप तो बहुत या ब्यूटीफुल मैम लग रहे हैं, अरे आप तो आज या बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सो ये कम्प्लीमेंट कर या रहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज हमें बता रहा है, या तो नाउन के द्वारा बताया जा रहा है या फिर एडजेक्टिव के द्वारा बताया जा रहा है। एडजेक्टिव इसीलिए इसको या बोला जा रहा है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ओके मैम ओके ओके, ओके ये है लिंकिंग वर्ब का काम, राइट? दिस इज द वर्क ऑफ लिंकिंग ओके वर्ब। लिंकिंग वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लिंकिंग वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सोचिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम ए स्टूडेंट या आई एम स्मार्ट, और मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब आप बोलेंगे मैम इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, जी जो लिंकिंग वर्ब है उसको हटा देना है, उसको स्ट्राइक आउट कर देना है। उसके जगह पे क्या लिखना है? ओके इक्वल्स टू। इक्वल्स टू हम लिखते हैं ना मैथ्स में, 1 + 1 या इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू लगाएंगे और देखेंगे क्या मतलब आ रहा है, क्या मीनिंगफुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब है, अगर नहीं हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब नहीं है। कैसे? आई इक्वल्स टू गोइंग, क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं इक्वल्स टू गोइंग, मैं इक्वल्स टू जा रहा हूँ? नो, नो नॉट, वी कांट राइट? से मैम राइट, मैं सो ये बोथ लिंकिंग वर्ब सेंटेंसेस नहीं वी है। कांट से Right. So this, no, in the second sentence we can say, I can say I equals to a student. मैं equals to a student. मैं एक student हूँ. Right. So a student is making sense with equals to. A student is defining I. A student is another name for I. So ये हमारा linking verb है. This is our linking verb. Okay. यही है. There is nothing else. Okay. This is the entire explanation of linking verb. इससे ज्यादा कुछ है नहीं. अब ये जो मोडाल्स वाले हैं, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इवन देन इट इज फॉलोइंग द सेम रूल। फिर भी ये सेम रूल भी फॉलो कर रहा है। कैसे? देखिए, यू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी इन ऑर्डर टू गेट दिस जॉब। यू सब्जेक्ट, यू मस्ट बी लिंकिंग वर्ब, ट्रस्टवर्दी क्या है? एडजेक्टिव मैम करेक्ट, एडजेक्टिव बिल्कुल सही। किसको बोला जा रहा है ट्रस्टवर्दी? यू को बोला जा रहा यू है। यू सो को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन गया, कंप्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट का, एडजेक्टिव अगर कंप्लीमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन गया। सो ये तो हमारा ओके डेफिनेटली लिंकिंग वर्ब है। ओके, बट अगर मैं बोलूं यू मस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट हर, यू मस्ट ट्रस्ट हर, इसमें क्या हो गया? देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट है, चलिए बढ़िया है। मस्ट हमारा मोडाल वर्ब है, कोई तरह का एक वर्ब है, राइट? बट ये ट्रस्ट क्या है? मैम वर्ब वर्ब है, वेरी गुड, एक्शन वर्ब है, राइट? ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, ट्रस्टिंग, राइट? सो यू इक्वल्स टू ट्रस्ट, क्या हम बोल सकते हैं यू इक्वल्स टू ट्रस्ट? आप ट्रस्ट है? ये तो नो हम बोलने की नो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं रहा। अंडरस्टूड? यस यस, मैम मंजू एज ओके वेल? मैम यस सेम मैम गॉट रूल इट हर एक में हो रहा है, सेम रूल। देखिए, दूसरे वाले में देखिए, he dared to be a bold person when he spoke in front of his boss. He dared to be a bold person, यहाँ तक लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा दूसरा क्लॉज है, उसको हटाइए। He dared to be a bold person. He क्या है? सब्जेक्ट है। dared to be क्या है? कोई ना कोई तरह का वर्ब है, राइट? अ बोल्ड पर्सन क्या है? अ बोल्ड पर्सन एक बोल्ड इंसान, नाउन है, नाउन यस फ्रेज है, मैम बेसिकली नाउन। यस मैम ओके, अब ये जो नाउन फ्रेज है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? कौन है बोल्ड पर्सन? ही को मैम ही है, ई राइट? मैम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट ही को।
तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब ये जो वर्ब है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देती है, ये तो ऑब्वियसली लिंकिंग वर्ब बन जाती है, राइट। सो इसके जगह पर क्या लिखाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। सो ही इक्वल्स टू अ बोल्ड पर्सन, पूरा पूरा मतलब आ रहा है, डेफिनेटली लिंकिंग वर्ब है। ओके Ma'am, yes, ma'am. But ma'am, I got confused. Dare to be. Could not get the meaning. Dare to be. What's the meaning of dare उसने to be? साहस दिखाया एक बोल्ड पर्सन होने का जब वो बॉस के सामने बोला। मतलब साहस dare दिखाया, साहस दिखाना दिखाना। यस काइंड ऑफ लाइक दैट। मंजू जब मोडाल्स करेंगे तो थोड़ा मीनिंग अच्छे से समझा पाऊंगी। ओके अच्छा, अभी के लिए थोड़ा Thank you, स्ट्रक्चर ma'am. ज्यादा अच्छे से समझिए। यस वन मोर आई वांट टू से, ही dared to go to the office। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सेम dared to ही यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, dared to सॉरी dared, हाँ dared to क्या हो गया, कोई ना कोई वर्ब है, देखेंगे नहीं एक्शन नहीं है, मोडाल है, राइट मोडाल है, मोडाल वर्ब है, सीखेंगे उसके बारे में, बट कोई ना कोई वर्ब है। उसके बाद गो आ रहा है, कि dared to go। अब गो क्या है, एक्शन वर्ब है, राइट, एडजेक्टिव तो है नहीं, नाउन भी नहीं है। सो ये इसका एक्शन शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। सो ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ही इक्वल्स टू गो नहीं बोल सकते। सो देखिए सेम वर्ब है डेड टू, बट यहाँ पर लिंकिंग है, यहाँ पर एक्शन या मोडाल है। ओके अंडरस्टूड, यस मैम, करेक्ट। बताइए कोई डाउट है गाइस, लिंकिंग वर्ब में डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद, बिकॉज बिल्कुल एकदम क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। यस अगर फिर भी हो रहा है, यस अगर फिर भी हो रहा है, थोड़ा पिछले वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए वर्ब्स के, कोई डाउट नहीं होगा। ओके सो वी विल एक्चुअली ट्राई एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल आल्सो स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, राइट, वी आर डन विद दिस। शायद हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे, जी हेल्पिंग वर्ब्स हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। डिड वी डू हेल्पिंग वर्ब्स, क्या हमने किया नहीं, राइट नहीं किया जी। लिंकिंग और मॉडल्स हो गए। अब मोडाल्स नहीं हुए हैं, मोडाल्स नहीं हुए हैं, मोडाल्स इन लिंकिंग वर्ब्स किया है हमने, मोडाल्स अलग से करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। ओके वर्ब इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बी वेरी पेशेंट, प्रैक्टिस कीजिए जैसे जैसे चल रहा है। अभी आपका बहुत अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने का, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कीजिए आज, बिल्कुल लिंकिंग वर्ब्स के ऊपर जितने हो सके सेंटेंसेस बनाइए, वर्कशीट्स कीजिए, व्हाटएवर यू कैन डू, एंड गेट क्वेश्चंस लाइए, मुझसे पूछिए, शाम के क्लास में पूछिए। ओके दैट इज हाउ यू बी इन्वॉल्व्ड, जितना इन्वॉल्व होंगे उतना इजीली सीखेंगे। Okay, ma'am. See you guys at 3 p.m. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much, guys.
Good afternoon, everyone. Pro learners, quickly join the Zoom meeting. Good afternoon, ma'am. Students, I have changed the topic, so we'll make sure you refresh the page ASAP. जल्दी से refresh कर लीजिए page को. And yesterday we learned about verbs, regular and irregular verbs. Today we'll talk about main verbs. Right? Ma'am, sorry, ma'am. Display is shaking too much. Sorry, what displays? Shaking. Shaking too much? Whose display? My Good afternoon, ma'am. Actually, the video is unable to like a stable. I am not able to understand what you are trying to say. Ma'am, your video is shaking in my mobile phone. In your phone, so there must be a network problem or something, because I am stable. There are many problems I'm facing regarding, Hello Learner Live. Like, still, it is written on my display. Wait, host, to start this meeting. It is still written on the display. दीपेंद्र, आपके पास email address है. You need to drop an email to the team. I cannot help you in this case, though I really want to, but it's not in my hands. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Good afternoon, जी ma'am. रोहित, good afternoon. मैम इसमें ये प्रॉब्लम है इस ऐप में, जैसे मान लीजिए कि वायरलेस ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं हेडफोन, एक वायर वाला हेडफोन यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों लगाए रहते हैं. कभी देखते हैं तो वायर वाला में आवाज आता है, कभी ब्लूटूथ वायरलेस ब्लूटूथ में आवाज आता है, तो हमको दोनों लटकाए रखना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम चल रही है. I totally understand your problem, रोहित. ऐसी प्रॉब्लम 2-3 स्टूडेंट्स को हो रही है, बट जो दिक्कत है वो ये है कि मैं आपकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकती. मेरा काम यहाँ पे आके पढ़ाने का है, आपके सवालों के जवाब देने का है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन. मैं ये टेक्निकल काम नहीं देखती. तो आप लोग अगर मुझसे ये शिकायत भी कर रहे हैं तो मैं इसके लिए आपको हेल्प ही नहीं कर सकती. मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ हेलो लर्नर का, और वो आपको सिर्फ वो ही हेल्प कर सकते हैं. तो मैं आपको 2-3 बार ही बता चुकी हूँ. premium.hellolearner.com ये ईमेल एड्रेस है. इस पे आपको अपना पूरा ईमेल लिखना पड़ेगा कि मैम हमें ये दिक्कत हो रही है. प्लीज Sachin, I really need your help in this case. Can you please join the Zoom meeting? Because I believe your group only can do something about this problem. जब तक उनके पास 10-20 मेल्स नहीं जाएंगे, they are not gonna look at it. I believe so. तो ओके मैम. सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक. आज हमारा टॉपिक है मेन वर्ब्स. कल हमने वर्ब्स पढ़े थे, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स पढ़े थे, और हमें पता चला था व्हाट आर रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स. आज हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स. ठीक है. नाउ टाइप्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. समवन प्लीज रीड. Main principal verb and auxiliary helping verb, and main verbs
read this sentence. And James has a new bicycle. They have a big garden. I go to a school every day. She teaches English. In this sentence, the verb words has, have, go, and teach uh, also express a meaning of their own. The idea of possess, possession or physical action verb which have a meaning of their own agree with the person and number of the subject of a sentence, and so the time sentence sorry tense at which the activity happen are called man verb, also called as principal verbs. Thank you. Yes. So guys, there are 3 types of different verbs. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि बेस फॉर्म होती है, फिर हमारी प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो होती हैं, कल हमने वो पढ़ी थी, आईएनजी फॉर्म पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप। तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? ये सेंटेंस में हमें हेल्प करता है। फिर आता है मेन वर्ब। अब मेन क्या होता है? मेन आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे? माय फादर और माय मदर। ठीक है, तो ऐसे ही मेन हमारा जो वर्ब होता है उसका सारा काम होता है सेंटेंस के बारे में बताना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। समझ आ गया सबको? सो मेन वर्ब हम उन्हें प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब ही होता है लीडर। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब और कॉमनली नोन एज मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कॉमनली नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, थर्ड टाइप हमारा होता है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब जो आप मोडाल्स बोलते होंगे। सो गाइस, मोडाल्स जो है गलत प्रोनाउंसिएशन है इसकी, मॉडल बोला जाता है, क्योंकि मोडाल में अगर हम बोल रहे हैं मोडाल तो उसमें डबल ए आना चाहिए, बट मॉडल वर्ब की स्पेलिंग होती है MODAL, तो मॉडल ही बोलना है, मोडाल नहीं बोलना। ठीक है, तो मॉडल वर्ब हम जब पढ़ते हैं या जब सीखते हैं जब हमारे टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब इन दोनों वर्ब से काफी डिफरेंट होते हैं। उनकी कोई 3 फॉर्म्स नहीं होती जैसे इनकी होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की भी 3 फॉर्म्स होती है, मेन वर्ब की भी 3 फॉर्म्स होती है। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब भी है, जैसे डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब से। तो यहाँ पे सेंटेंसेस है, जेम्स हैज अ न्यू बाइसिकल। Excuse me, ma'am. And ma'am, what is the linking verb, ma'am? लिंकिंग वर्ब होता है अभय जो लिंक करता है सेंटेंस में, जो हमने प्रोनाउंस के टॉपिक में पढ़ा था शायद। ठीक है, तो वो डिफरेंट है इनसे। वो हम कभी, वैसे हमने भी रिसेंटली आई थिंक एजेक्टिव के टॉपिक्स में पढ़ा था हमने, वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस जेम हैज अ न्यू बाइसिकल। अब सेंटेंसेस गाइस 2 टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आपका मेन वर्ब आए। तो मेन वर्ब नहीं आ रहा, और जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए, और कुछ सेंटेंसेस में ये दोनों साथ भी आते हैं, और कुछ सेंटेंसेस में ये लोग अलग अलग भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूं जेम्स हैज अ न्यू बाइसिकल, तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? बताइए। मेन वर्ब। मेन वर्ब हैज क्या है? हैव की फॉर्म है, हैव, हैड। ठीक है, तो हैव का मतलब क्या होता है? होना। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ जेम्स के पास एक बाइसिकल है। ठीक है, सो जेम्स के साथ हमने हैज क्यों लगाया है? क्योंकि हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं उसमें हम हैज लगाते हैं। ही हैज, शी हैज, इट हैज, इन 3 वर्ड्स के साथ हैज लगता है, इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी सबके साथ हैव लगता है। अगर मुझे बोलना है आई हैव अ न्यू बाइसिकल, तो मैं आई के साथ हैव लगाऊंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ में लिखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वर्ब और टेंसेस को समझना। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव अ बिग गार्डन। तो यहाँ पे भी हैव का हम यूज कर रहे हैं, उनका गार्डन बहुत बड़ा है या उनके पास बहुत बड़ा गार्डन है, दे हैव अ बिग गार्डन।
आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जो गाइज आप गो देख रहे हैं आई के बाद, वो हमारा मेन वर्ब है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। शी टीचेस इंग्लिश, जैसे आप बोलेंगे अनंता मैम टीचेस इंग्लिश और शी टीचेस इंग्लिश, तो यहाँ पे टीच क्या है, मेरा मेन वर्ब है। ठीक है समझ में आ गया सबको? तो इनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब्स भी बोल सकते हैं। ओके, एनी कंफ्यूजन्स इन मेन वर्ब? तो गाइस जो कल हमने लिस्ट पढ़ी थी, मैंने क्लास के एंड में आपको एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें सारे वर्ब्स थे, वो सारे ही वर्ब्स हमारे मेन वर्ब्स होते हैं। इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। Someone please read the slide. Good afternoon, ma'am. Yes, Auxiliary verbs. James has returned from his office. They have caught the thief. I am going to school now. She will teach English next year. In these sentences, though the verbs has, have, am, and will are used, they do not express any idea of possession on their own, nor do they have any meaning of their own. They do not independently communicate any action. They merely help to form the tenses present perfect, present continuous, and simple future, respectively, of the verbs return, catch, go, and teach. Such verbs are called auxiliary helping verbs. all right. ऑक्सिलरी वर्ब गाइस, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ जेम हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो गाइस अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कितने वर्ब्स हैं या कौन कौन से इसमें वर्ब्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैम एक तो हैज वर्ब है और एक रिटर्न्ड वर्ब है। देयर आर जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं गाइस, वो मेन वर्ब भी होते हैं अगर वो अकेले आए, लेकिन अगर वो मेन वर्ब के साथ आते हैं, मतलब मेन वर्ब से हमेशा पहले आते हैं, तो जो पहला वाला वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं? जेम्स हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जेम अपने ऑफिस से वापस आ चुका है या वापस आ गया है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हम हैज, हैव, हैड के साथ हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो रिटर्न इज द थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न। रिटर्न, 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 इट्स अ रेगुलर वर्ब। सेकेंड सेंटेंस, दे हैव कॉट द थीफ। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कैच। उन्होंने चोर को पकड़ लिया है या वो चोर को पकड़ चुके हैं। I am going to school now. So guys, going, go is the main verb जिसमें हमने ing लगाया है। am is your helping verb. ठीक है, सो यहाँ पे गाइज आपको हेल्पिंग वर्ब्स ज्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े से होते हैं, उन्हीं से सारा काम चलता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। यहाँ पे मेरे हिसाब से लिस्ट इन्होंने नहीं दे रखी है, नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी है लिस्ट, ज्यादा नहीं है। तो गाइज सबसे पहले हमारा जो बी वाला वर्ब होता है, मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, जिसको भी व्हाइट बोर्ड ना दिखे प्लीज जूम कर लिएगा ऐसे डबल टैप अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे रही हूँ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी मुझे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में गाइस हमारे पास आता है नंबर 1 पे बी। अब बी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल ही बताया था। बी वर्ब हमारी इज, एम, आर प्रेजेंट में होती है। इसका पास्ट क्या होता है? Been. वेरी गुड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है Been. ये हमारा मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। इसके बाद आ जाइए डू पे। सेकंड नंबर पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। अब ये मेन वर्ब भी है, ठीक है। मेन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये है, ये हो सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आगे डू फर्स्ट फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म Does. वेरी गुड, डज। कौन है भैया आंसर देने वाले? Alpna. वेरी गुड अल्पना। थर्ड फॉर्म इज डन, डू, डिड, डन। डज फर्स्ट फॉर्म ही होती है, वो थर्ड पर्सन में हम ईएस लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए। फिर आ गया गाइस हमारे पास हैव।
हैव की सेकंड फॉर्म हैव या हैज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वरना आप मुझे सेकंड फॉर्म में बोलेंगे हैज, है ना अल्पना? तो बोलनी वाली थी हैज। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। गाइस डू और डज दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होती हैं। यस मैम। हैज और हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होती हैं। और ये किसको शौक हो रहा है स्क्रीन पे लिखने का? फिर आ जाती है गाइस इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास हैड, और थर्ड फॉर्म की होती है हैड। अल्पना आपको बहुत जरूरत है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न करने की, आप बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास आ गया, अब कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, बी हो गया, वॉज वर, डू हो गया, अब हैव हो गया, और can someone tell me or name any other helping verbs? Shall will. Will is a modal verb. Should, would, could, may, might, out, They all please. are modal verbs. Thank you, Dipendra. गाइस मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ रहे हैं तो कैन कुड को अभी साइड में रखिए, उनका काम मेन वर्ब्स के साथ नहीं हो, मतलब ये वाले सेंटेंसेस का नहीं होता, उनका अलग ही है। तो गाइस फिलहाल के लिए ये हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बी, डू एंड हैव। बी इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ठीक है। तो आप देखिए प्रेजेंट में 2 फॉर्म्स आ रही हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अभी अल्पना ने बोला था हैज पास्ट, गलत है, पास्ट वॉज वर, डिड और हैड होती है, और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल बीन, डन, हैड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज रीड क्विकली। The following are the auxiliary helping verb in English. Be and its form am, is, are, was, were, been, and when. Have and its form has, had, and been. Do and its form does and did. Modal verbs shall, should, will, could, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to, you shall, look into, auxiliary in the next lesson. Thank you. यस, सो नाउ गाइस मॉडल वर्ब्स जो आप मुझे कैन कुड बता रहे थे, शैल, शुड, विल, वुड, कैन कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये क्या है? ये मॉडल वर्ब्स है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेन हमारा फोकस किस पे? हेल्पिंग और मेन वर्ब्स पे। तो हेल्पिंग वर्ब्स में ये देख लीजिए आपके, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी पास्ट फॉर्म वॉज वर, बी की एंड पास्ट पार्टिसिपल बीन, हैव की पास्ट फॉर्म हैड और बीन, हैव, हैज की, डू, डज की पास्ट फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। किसी को कंफ्यूजन है हेल्पिंग वर्ब में? अभी पूछ लीजिए। गाइस एक रूल आपको समझना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। कोई सेंटेंस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम मेन वर्ब के बाद लगाते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये गलती मत करिएगा कि किसी सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से पहले मेन वर्ब लिख रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्विकली, इस पे क्या है? मैम जी अल्पना। मैम एक सेंटेंस बीइंग के साथ बता दीजिए प्लीज। ओके सो गाइस बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म्स में आता है, मैं आपको बता देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे दोबारा से, ठीक है। ये हमने समझ लिया था। और जो भी कह रहे हैं मैम इंक्रीज फॉन्ट साइज, मैं आपको पहले ही बता दिया था, मेरे पास फॉन्ट को इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जूम करने अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो गाइज ये हमने यहाँ पे जो फॉर्म्स पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, सिंपली जब हम आईएनजी यूज करते हैं, आईएनजी हम कब यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में। तो ये वाली फॉर्म हो जब बन जाती है बीइंग, ये वाली फॉर्म बन जाती है डूइंग, कुछ नहीं करना आपको, बी के साथ आईएनजी, डू के साथ आईएनजी, हैविंग, हैजिंग कोई वर्ड नहीं होता, आप हैज के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, सिर्फ हैव के साथ लगता है। अब सेंटेंसेस की बात करें तो बी हम यूज करते हैं होने के लिए। सो आई एम बीइंग लेट,
मैं लेट हो रही हूँ. I am being very lazy today. और you are के साथ यूज कर लेते हैं. You are being lazy today. तो गाइस बी फॉर्म जो है वो ज्यादातर हमारी एडजेक्टिव्स के साथ यूज होती है. ह्यूमन के साथ हम क्या लगाते हैं? बीइंग. और बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान का ब्रांड है उसका मतलब क्या है? इंसान होना, इंसान बनना. बीइंग ह्यूमन. ओके. डूइंग में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई प्रोजेक्ट. और ही के साथ ही इज डूइंग हिज होमवर्क. ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन है नहीं. और हैविंग गाइस दो चीजों के साथ यूज होती है, किसी भी टेम्पररी चीज के साथ और खाने के साथ. आई एम हैविंग माई लंच फॉर एग्जाम्पल. और ही इज, ही हो गया था तो शी कर रहे हैं. शी इज हैविंग टूथेक. टूथेक क्या होता है? दांत में दर्द. तो टूथेक हमारा क्या है? एक टेम्पररी सा दर्द है, उसके लिए भी हम हैव का यूज करते हैं. शी इज हैविंग अ टूथ एक, उसके दांत में दर्द हो रहा है. सो गाइस ये आईएनजी फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होती हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. कोई काम जो हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा होगा. एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट स्लाइड. Look at these examples. Please read. Someone जिन्होंने रीड कर लिया वो दूसरों को भी रीड करने दे, और जिनको रीड नहीं करना तो वो घर बैठे फिर आराम से. Look at these examples. Yes. Impatient Alex is always waiting to taste whatever I cook. Is an auxiliary verb. Waiting is the present participle form of the main verb. Naomi was hoping for an A in her organic chemistry class. Was is the auxiliary verb. Hoping is the present participle completing the verb phrase. मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर इतना कीड़ा है. आई डोंट नो व्हाई. अभी अभय ने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने क्या बोला कि अभी आप जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस पे फोकस करिए. आप लोग लिंकिंग वर्ब में क्यों घुस गए? मतलब लिंकिंग वर्ब का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है. मैं इस टॉपिक को छोड़ के आपको लिंकिंग वर्ब्स पढ़ाना शुरू कर देती हूँ. एक काम करती हूँ, आप लोगों को इतना ही शौक है तो भाई एडवांस क्लासेस जाके लीजिए. हेलो लर्नर की क्लासेस मत लीजिए, स्पेशली दिस सेनोजी. No. Everything learning through the sequentially. आपको नहीं कह रही, मैं आपको नहीं कह रही. मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पूछ रहे हैं. उसके बाद कार्तिक ने 2-3 बार रिप्लाई भी किया है लिंकिंग वर्ब क्या होता है. यहाँ पे गलती क्या होती है? आप लोग आगे के जानने के चक्कर में जो टॉपिक चल रहा है वो नहीं समझते, और फिर क्विज में जो मिस्टेक्स होती हैं उसका तो क्या ही कहने. तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है प्लीज. और लिंकिंग वर्ब्स में ऑलरेडी एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ. जिसको भी प्रॉब्लम है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में जाके देखे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, लुक एट दीज एग्जांपल्स. impatient का मतलब क्या होता है? जिस इंसान में बिल्कुल भी सब्र नहीं होता. impatient or Alex is the name of a person is always waiting to taste whatever I cook. होता है ना, कभी कभी अम्मा कुछ बनाती है तो हमें ना वेट नहीं होता, बस जल्दी से हम चख लें क्या कैसा बना है. सेम वी आर टॉकिंग अबाउट Alex. is an auxiliary verb. तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स है, एक is है और एक waiting है. तो वेटिंग हमारा मेन वर्ब है और उससे पहले जो लग रहा है इज वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इज मेन वर्ब नहीं है. ठीक है. वेटिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म को. Naomi is a name of a girl, लड़की का नाम है. Was hoping for an A in her organic chemistry class. तो यहाँ पे नाओमी को लग रहा था, वो होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि उसे केमिस्ट्री की क्लास में ए ग्रेड मिलेगा. इसका मतलब उसे नहीं मिला. तो was is an auxiliary verb और hoping is a main verb.
ठीक है गाइस, तो ing में भी हम प्रेजेंट में is am are यूज करते हैं, पास्ट में was were यूज करते हैं, राइट? Do you know I have a cat? Yes, Smita, this is a good sentence. Do you know I have a cat? No, I didn't know you have a cat. Passive voice continuous being का यूज करते हैं, yes. चलिए, you are being lazy today. This is temporary state. So guys, let's start with the quiz. I am baking chocolate broccoli muffin today. Does this sentence contain an auxiliary verb? Yes or no? क्या इस sentence में कोई auxiliary verb है? सिर्फ आपको हाँ या ना choose करना है. Ma'am, can I say we are having lunch? Yes, Firoz. अगर आप खाना खा रहे हैं और उस टाइम पे आप कह रहे हैं तो बिल्कुल I am having lunch. जिसमें बोल सकती हूँ I will have my lunch after the class. वहां पे will लग जाएगा फ्यूचर के लिए. All right. अब है प्लीज आंसर. मैम, आई एम बेकिंग चॉकलेट ब्रोकोली मफिन्स टुडे. यस मैम. सो गाइस, बेकिंग का क्या मतलब है कि मैं बेक कर रही हूँ. बेकिंग की मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन हम वो केक बेक करते हैं. मफिन्स की यहाँ पे बात होती है, देखना. ओके, ठीक है. तो आई एम बेकिंग चॉकलेट ब्रोकली. ब्रोकली गाइस गोभी की फैमिली की होती है, जैसे कॉलीफ्लावर होती है, कैबेज होती है, लेटस होती है, ऐसी ब्रोकली होती है. इट्स वेरी हेल्दी. ठीक है, तो मैं आज चॉकलेट ब्रोकली मफिन्स बेक कर रही हूँ. इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल है. और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लीज टेल मी. एम. क्योंकि बेक इज अ मेन वर्ब जिसके साथ हम ing यूज कर रहे हैं. एम इज योर हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आता है. वेरी वेल डन. नेक्स्ट स्लाइड. Alex is sitting at the kitchen table anticipating his first bite. How many main verbs are present in this sentence? 1 main verb, 3 no main verbs, 2 main verbs. Count करिए और आंसर चूज करिए. गाइस, मेन वर्ब को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपको जब बताऊंगी जब आप ये स्लाइड कर लेंगे. जो थाली में है उससे को खाइए, उससे को खाइए. चलिए, अल्पना प्लीज आंसर. Yes, ma'am. Alex is sitting at the kitchen table anticipating his first bite. मैम टू है इसमें मेन वर्ब. यस, कौन कौन से हैं वो 2 मेन वर्ब्स? मैम सिटिंग एंड एंटिसिपेटिंग. तो गाइज, मेन वर्ब को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में ing नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब में हम ed नहीं लगाते. इसलिए अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ing और ed वाले वर्ड्स दिख रहे हैं वो आपके वर्ब्स हैं. जैसे ed एडजेक्टिव्स में भी होते हैं, बट यहाँ पे हम क्योंकि वर्ब्स की बात कर रहे हैं. तो Alec is sitting at the kitchen table anticipating his first bite. ये 2 मेन वर्ब्स हैं यहाँ पे. और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? मैम is. Very good. Is your helping verb. किसी को कोई क्वेश्चन है? No. Good. Jerry caught his thumb in the car door as coffee spilled from his cup onto his favorite shirt. Pick the auxiliary verb in the sentence. No auxiliary verb. Caught, spilled, onto. Gaurav, long time no see. Where are you busy? Ankit, please answer. Yes, ma'am. There is no auxiliary verb because Jerry caught his thumb in the car door as coffee spilled from his cup onto his favorite shirt. Yes, very good, Ankit. So guys, यहाँ पे पहली बात तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं कि जेरी का जो थंब था वो गाड़ी के डोर में आ गया जैसे ही उसकी गरम गरम कॉफी उसकी फेवरेट शर्ट पर गिरी. ठीक है, सो देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब. ये सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि हम कैच की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, कॉट. स्पिल की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, स्पिल्ड.
Okay, so how many main verbs are there in this sentence? Ma'am, two. Two. Caught and spill. Spill का मतलब होता है गाइस गिर जाना. अब जैसे पानी मेरे पास है और मैं पीते हुए मेरी कभी कभी आपने देखा होगा गिर जाता है, तो उसे स्पिल बोलते हैं. तो स्पिल हम पानी के लिए, कॉफी के लिए, किसी भी लिक्विड चीज के लिए स्पिल बोल सकते हैं. ठीक है. मेहुल, आई नो सेंटेंस पढ़ने में ही टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए इस क्विज की. ओके गाइस, नाउ हम बात करेंगे नाइस प्रॉपर्टीज की. समवन प्लीज रीड. The so-called nice properties of auxiliaries serve to distinguish ऑक्सिलरी. सुमित, ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी मैंने 50 बार बोला ये वर्ड. यस, auxiliaries serve to distinguish them from main verbs. Nice is an acronym for negation, negation, inversion, code, emphasis. तो गाइस एक्रोनिम क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है किसी को जब हम सिर्फ उसके फर्स्ट वर्ड से बनाते हैं. तो यस, प्लीज कंटिन्यू. negation is when auxiliaries take not or not to form the negative. Example: cannot, don't, wouldn't. Inversion is when the auxiliaries invert with what precedes them when we form question. I will see you soon. Will I see you soon? Code means auxiliaries may occur stranded where a main verb has been omitted. John never sings, but Mary does. Emphasis is when auxiliaries can be used for emphasis. I do like cheese. Main verb do not exhibit these properties. For instance, when when we form a question using a main verb, we cannot invert. John sings in the choir. Choir. का साउंड निकालिए. choir. Choir. Very good. Sings John in the choir. Instead, we have to use the auxiliary verb do. John sings in the choir. Does John sing in the choir? Yes, Sumit, you are a very quick learner. मैं जैसे ही आपको कोई वर्ड बताती हूँ आप फौरन उसे ग्रैब कर लेती हैं. It's a very good quality of yours. Okay, so guys, nice properties कौन सी हैं हमारी? Negation. तो guys, negative sentences में हम not जो लगाते हैं, not not, वो हम main verb में नहीं लगाते, हम helping verb में लगाते हैं. तो गाइस जैसे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, मैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ. अब मुझे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे थे. आई एम बीइंग लेट, यू आर बीइंग लेजी. तो यहाँ पे अगर मुझे नेगेटिव करना होगा तो मैं बीइंग के साथ नॉट नहीं लगाऊंगी, मैं एम के साथ नॉट लगाऊंगी, बिकॉज एम इज योर हेल्पिंग वर्ब, आर इज योर हेल्पिंग वर्ब. तो नॉट किसके साथ लगता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. नहीं, हैव के साथ लगता है. ठीक है. डू, डज के साथ नॉट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो फील वर्ब है, वर्ब के बाद मैंने मेन वर्ब के बाद नहीं लगाया, मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है. आई एम नॉट बीइंग लेट. ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क. आई एम नॉट हैविंग माई लंच. शी इज नॉट हैविंग अ टूथिंग. सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि नॉट हम मेन वर्ब के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं. और शॉर्ट फॉर्म्स में हम इनको लिखते हैं नेट. तो सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है इज नॉट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इजंट. ठीक है, इजंट लिखते हैं ना. तो स्पीकिंग में ज्यादा इजंट कॉमन होता है और राइटिंग में इज नॉट. फिर आर नॉट होता है, जिसे हम बोलते हैं ain't. फिर आता है am not, I am not. इसके बाद am not. जैसे I am not feeling hungry, मुझे भूख नहीं लग रही है. I am not hungry.
तो एम नॉट को भी हम एंट लिखते हैं, और इसके अलावा आर नॉट ही लिख सकते हैं, आरंट, जिसे हम आरंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डू के साथ, तो डू प्लस नॉट, डू नॉट बिकम्स डोंट, राइट। डज नॉट बिकम्स डजंट। फिर हैव नॉट बिकम्स हैवंट, एंड हैज नॉट बिकम हैजंट। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स में भी हमारा लगता है, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता, hasn't। तो गाइस ये मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ लिखी हैं, ये स्पीकिंग में यूज होती हैं, ये वाली जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और ये जो फुल फॉर्म्स है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये हम लिखने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें या फुल फॉर्म यूज करें। समझ में आ गया सबको? ऐसे ही मॉडल वर्ब जैसे हमने पढ़े थे, कैन, विल, वुड, इनके साथ यूज होता है विल नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, ओके। सबसे पहले नेगेशन में हमने ये पढ़ा। अब आते हैं इन्वर्जन में। इन्वर्जन हम क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं, तो जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे मैं बोलूं यू आर हंग्री, यू आर हंग्री क्या है, मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रही हूँ कि आप हंग्री हैं। इसको आप क्या कर दिए, स्वैप कर दिए यू और आर को, ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो यू और आर की पोजीशन जब हमने चेंज करी, तो यू यहाँ से यहाँ आ गया, आर यहाँ से यहाँ आ गया, आर यू हंग्री, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन में भी काम आते हैं हमारे। हम मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं बना सकते, हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, या फिर WH वर्ड से। फिर आते हैं कोड पे। कोड क्या होता है, ऑक्सिलरी में ऑकर आपने पढ़ा था यहाँ पे सुमित, अकर होता है, ये अकर, ए का साउंड आएगा, आ का, अकर। अकर मीन्स दिखना, होना। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन्स खुटे हुए, जैसे हम किसी के गला घोट देते हैं ना, तो वो स्ट्रैंडेड बोलते हैं उसको। सो वेयर अ मेन वर्ब हैज बीन omitted, फॉर एग्जांपल जॉन नेवर सिंग्स बट मैरी डज। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, जॉन कभी गाना नहीं गाता, मैरी गाती है। बट मैरी के बाद जो हम डज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात करें, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक बार सेंटेंस में मेन वर्ब यूज कर लेते हैं, तो कॉमा वाले सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे मैरी सिंग्स भी हो सकता था, बट डज इट मोर कॉमन एंड बेटर। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब क्या है गाइस, किसी भी चीज को बहुत गाड़ के बोलना, या फिर किसी चीज पे दबाव डालना। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरी कल बर्थडे पार्टी है और आपको आना है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, आपको इनवाइट कर दिया, और मैं आपको बोलूँ आपको जरूर जरूर आना है, तो इस जरूर जरूर आना मैं आपको क्या कर रही हूँ, इंसिस्ट कर रही हूँ। तो इसी बात पे मैं अपनी बात को एम्फेसाइज कर रही हूँ, तो इसे बोलते हैं एम्फेसिस करना। सो हम एम्फेसिस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक चीज केक, तो आपने बोला यस, आपने एक बार बोल दिया। मैं आपसे 2-3 बार बोलूंगी तो आप कहेंगे अरे हाँ भाई मुझे पसंद है। तो इसी को हम एम्फेसिस करना बोलते हैं, आई डू लाइक चीज, ओके। सो गाइज मेन वर्ब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एग्जिबिट नहीं होती, जैसे कि जब हम कोई फॉर्म करते हैं क्वेश्चन को, तब हम वहां पे हेल्पिंग मेन वर्ब को इन्वर्ट नहीं करते। when we form a question using a main verb, we cannot invert. For example, John sings in the choir. अब guys आप कहेंगे मैम choir क्या होता है, तो choir is a group of singers, ठीक है, उसे हम choir बोलते हैं, स्पेशली those who sing Jesus songs, उन्हें हम choir बोलते हैं, ठीक है। तो जॉन choir में गाना नहीं गाता, तो sing John in the choir ऐसा नहीं होगा, तो हम हमेशा मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। Instead, we have to use the auxiliary verb do. It does. Does John sing in the choir? Okay. Any questions? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म बदलती नहीं है। प्रताप आपसे किसने कही है ये बात कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म बदलती नहीं है?
अभी जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इतनी देर अपना दिमाग लगा के आप लोगों को समझाया है, मैम एज आर एम की बात बता रहे थे, मैं इनको समझ रहा हूँ। क्यों नहीं होती भाई? एग्जाम आर की फॉर्म अभी वॉज वर होती है नहीं होती? अभी मैंने आपको समझाई ये बात और आप अब कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं बदलती। कैसे नहीं बदलती? एग्जाम आर पास्ट में जाके वॉजर हो जाता है, नहीं वो प्रेजेंट तो समझ गया मैं, तो वैसे वैसे तो नहीं बदलती ना प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर कैसे मुझे समझ में नहीं आ मैं रहा। समझ आ गया मैम पूरी बात। चलिए ठीक है। Next slide, guys. Identify the word in capital as main verb or auxiliary verb. I will have the soup. So guys, यहाँ पे have क्या है? Auxiliary verb है या main verb है? Sumit, Dipendra, incorrect response. Johnny, Shahinur, Mehul, Tarla, Abhay, प्रकाश। आपको इतना अच्छा मैंने चीज बताई थी कि जिस भी सेंटेंस में दो वर्ब है उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको समझ में नहीं आई वो बात, शायद अब आ जाएगी समझ में। गलती करके सीखता है इंसान। हम किस पे थे? दीपेंद्र, प्लीज आंसर। Yeah, ma'am. The second is the right answer, main verb. Actually, I have chosen because due to your picture, ma'am. So I haven't seen. गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारे हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब भी होते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो हेल्पिंग के लिए काम कर रहे हैं या मेन वर्ब के तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विल यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना हमारे, तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब यूज करते हैं, ये दोनों ही मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो गाइस यहाँ पे have is your main verb. I will have the soup. मैं सूप पीऊंगा या मैं सूप पीऊंगी। Next slide. Identify the word in the capitals as main verb or auxiliary. Police are investigating the incident. Are यहाँ पे helping verb है, main verb है। ये भी easy है, verb check करिए। मैम आज समझ में आया है, थैंक यू, अच्छी बात है, समझ में आया ना। कार्तिक आप क्यों यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटके हुए हैं भाई? मैम वर्ब जरूरत के हिसाब से रूप बदलता है। यस, int is used for isn't, amn't, aren't, isn't. गौतम, Here are is an auxiliary verb. यस, क्योंकि मेन वर्ब क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग। Yes, ma'am. आईएनजी मैंने पहचान बताई थी, मेन वर्ब की पहचान होती है उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नहीं यूज करते। ठीक है, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, तो आर इस सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। Identify the word in caps as main verb or auxiliary. He does his homework on the way to school. Does क्या है guys? Main verb, helping verb. Very easy. Kamal, please answer. Komal. Yes, ma'am. Does is main verb. He does his Yes. homework on the way to school. Yes, क्योंकि गाइज इस सेंटेंस में और कोई वर्ब है ही नहीं, वो अपना होमवर्क स्कूल के रास्ते में करता है। तो करना, डू, डज, तो ही के लिए तो हम डज लगाएंगे, मीनिंग तो सेम रहेगा, करना या करता। तो वो अपना होमवर्क स्कूल के रास्ते में करता है, ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते में करता है। तो डज इज द मेन वर्ब। सारे हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब भी हैं, बार बार बता रही हूँ, समझिए इस चीज को। होमवर्क क्या है? वर्ब है। Which part of speech is homework? Please answer. Yes, ma'am. It is verb. No. How can homework be a verb?
होमवर्क अगर वर्ब होता तो डज हेल्पिंग वर्ब होता यहाँ पे। कोमल, किसी और को पता है होमवर्क Ma'am, कौन सा I think पार्ट ऑफ noun. स्पीच है? यस, Noun. होमवर्क इज अ नाउन गाइस। इसमें सिर्फ वर्क नहीं आता, वर्क इज अ वर्ब। होमवर्क हो रहा है, घर का काम, घर का काम इज अ नेम ऑफ समथिंग, सो इट इज नाउन। Okay, I understand, ma'am. यस, गुड कोमल। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर गाइस होमवर्क अगर वर्ब होता तो जैसे मैंने बताया डज हेल्पिंग वर्ब होता। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है सेंटेंस में जो है डज, तो डज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। Identify the word in caps as main or auxiliary. You should definitely see this movie. Should auxiliary verb है, main verb है। Kushan, please answer. Pratap. Yes, ma'am. So definitely see this movie. You should definitely see this movie. सेंटेंस पढ़ने के लिए थोड़ी बताया मैंने, आपसे आंसर करने के लिए बताया। शुड क्या है? मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है? मैम ऑक्सिलरी वर्ब। जी, तो ये बताना था आपको। So guys, auxiliary verbs are of two types. First, they are known as helping verbs, and second, they are known as modal verbs. इन दोनों को ही auxiliary verbs कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको पूरी लिस्ट अभी पीछे एक्सप्लेनेशन साइड में बताई थी, can, could, may, might, should, would, shall, ये सारे हमारे हेल्प मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब कौन सा है सेंटेंस में? मैम सी। यस, तरला, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप थोड़े इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे रही हैं, प्लीज समझिए। ये वाली जो हमने एक्सप्लेनेशन स्लाइड पढ़ी थी इसमें क्लियरली मेंशन है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। Ma'am, I'm doing patients. आई एम डूइंग पेशेंट। Sorry, I'm doing treatment patient. ओके ओके। सो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 2 में हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं, जो इज एम आर ये वाले तो होते ही हैं, इनके अलावा ये कैन, कुड, वुड वाले भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, सो बी, हैव, डू, इनकी सारी फॉर्म्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, और मॉडल वर्ब्स में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, लेकिन ये किसके अंडर आते हैं? auxiliary verbs के। Identify the word in caps. I do trust you, but you still shouldn't go to the party. Do is a main verb or an auxiliary verb? मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए। We should definitely see the Virana movie. Yes, you could die of laughter if you see this movie. So yes, Preeti, please answer. Auxiliary verb, ma'am. प्रीति, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। Auxiliary verb, ma'am. क्या है ऑक्सिलरी वर्ब? पूरा सेंटेंस पढ़िए। I do trust you, but you still shouldn't to go to that party. यस, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? Shouldn't. शुड है? Yes, ma'am. Do, ma'am. प्रीति, आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपने आंसर ठीक कैसे दिया जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। आपको वो वर्ड बताना है जो कैपिटल लेटर्स में है कि ऑक्सिलरी है या मेन है, तो शुड कैसे आप कह सकते हैं? शुड भी है, बट यहाँ पे हम क्योंकि डू की बात कर रहे हैं, डू इज ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रस्ट इज द मेन वर्ब गाइस। ट्रस्ट से पहले हम डू यूज करें, विच इज ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? Sachin, Pratap, Komal, Ajmol, Keksi, Mani. Incorrect response.
बार बार एक चीज समझा रही हूँ, नहीं समझ में आ रही कि जब सेंटेंस में दो वर्ब्स होते हैं, पहले वाला ऑक्सिलरी होता है, बाद वाला मेन होता है, बट हम तो फिर भी गलती करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिफाई द वर्ड इन कैप्स। दिस ओल्ड हाउस हैज नो सेंट्रल हीटिंग। हैज मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी है। ये तो बहुत आसान है गाइस, एक ही वर्ब है सेंटेंस में। Do is an auxiliary verb. Yes. Is Tarla a doctor? Yes, she is a doctor. किलर आप बाज नहीं आते, रोज ब्लॉग होने के बाद भी कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, राइट? चलिए, रोहित प्लीज आंसर। रोहित कुमार, सचिन, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. इतना टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर करिए रोहित, मैं इतना नहीं वेट कर सकती। संदीप, Yes, ma'am. This old house has no central heating. yes. Has is a main verb. Yes, has is a main verb guys, एक ही वर्ब है। जब हमारे सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्प किसकी करेगा वो? हेल्पिंग का मतलब क्या है? मदद करना। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है। अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो उसे आप हेल्पिंग वर्ब कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो किसकी हेल्प कर रहा है? अपनी खुद की है। ये चीज भी दिमाग में बिठाइए। When there is only one verb in the sentence, it is always main verb. No matter it's is, am, are, has, have, do, does, did, done. क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये verbs मेन verbs भी हैं। जी मैम, व्हाट इज हीटिंग हियर? हीटिंग गर्माहट। नहीं नहीं, नो मैम, मिस, विच इज पार्ट ऑफ स्पीच इज अच्छा, हीटिंग? which part of speech? यस मैम। Which part of speech? It is central heating की बात कर रहे हैं, central बीचों बीच heating। तो ये हमारा noun है। Okay? Okay, ma'am. It is a noun. So guys, आपने देखा होगा घरों में, especially when you go on holiday, on vacations, hill stations, तो वहां आप देखते हैं घरों में बीच में एक central heating होती है, जिसमें ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? I forgot the name of that part. उसमें आप ऐसे, ब्लोअर। क्या? ब्लोअर। उसमें ऐसे लकड़ियां डाल के आग लगा देते तो पूरे घर में गर्माहट रहती है। आजकल हमारे पास हीटर्स हैं, पहले तो आग लगती थी। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पार्ट। Fireplace, ma'am. Fireplace. फायर, यस, फायर प्लेस। थैंक यू सो मच जिसने भी बताया। यस, फायर प्लेस बोलते हैं गाइस उसको। तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हीटिंग। सो दिस ओल्ड हाउस हैज नो सेंट्रल हीटिंग। अगर गाइस बाहर की कंट्रीज में, जैसे यूएसए हो गया जहाँ पे बर्फ पड़ती है, कनाडा हो गया, और यूरोप हो गया जहाँ काफी ठंड रहती है, वहां अगर किसी भी घर में सेंट्रल हीटिंग ना हो तो आप लोग वहां सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है। जैसे कनाडा में तो प्रॉपर हीटिंग होती है रूम्स में, जैसे हमारे एसी के वेंट होते हैं ना, वहां ऐसे ही हीटिंग वेंट्स होते हैं। आप उससे टेम्परेचर बढ़ा और कम कर सकते हैं जितना अपने हिसाब से, तो आपके पूरे रूम में गर्माई रहती है। हम लोग तो इंडिया में हीटर्स यूज करते हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर वेंट्स होते हैं हर जगह। आप किसी कैफे में चले जाइए, बस में चले जाइए, हर जगह ठंड इतनी होती है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। Identify the word in caps as main or auxiliary verb. Can I have a glass of water? Have is main verb or auxiliary verb? Who is that mosquito killer? What is the question, ma'am? Sarladi is a sujok therapist. Sujok, okay. Sumit, please answer. आज विशाखा नहीं है क्लास में। अच्छा, तरला। Yeah, ma'am. Main verb. What is main verb? Have. पूरा बोल रही है ना, have is a main verb in this sentence. So guys, again, there is only one verb. Yes.
तो इस verb, अगर आप इस सेंटेंस में देखें सिर्फ एक ही वर्ब है, कैन इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. अगर आपसे कैन पूछा जाता तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब सही होता आंसर, बट यहाँ पे हैव पूछा जा रहा है. आई इज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट, अ इज आर्टिकल, ग्लास इज नाउन, ऑफ इज preposition, water is noun. तो have क्या है हमारा वर्ब, मेन वर्ब है. Main. Yes, can I have a glass of water? पहले वाली कर लेते हैं स्लाइड. Identify the highlighted words as main or auxiliary. She has had her dog since 2005. तो guys had यहाँ पे auxiliary verb है, main verb है. बहुत आसान है समझना. पीछे वाली स्लाइड अभी करेंगे डिस्कस. Sumit, please answer. Yes, ma'am. She has had her dog since 2005. Main verb. Yes, had is the main verb. Yes, ma'am. So guys, ये past perfect tense है. She के साथ has नहीं present perfect tense है. She has heard. तो has के साथ हम had की third form, have की third form use कर रहे हैं. तो उसके पास 2005 से कुत्ता है. She has had her dog since 2005. तो यहाँ पे had main verb है क्योंकि has helping verb है. पीछे वाली स्लाइड गाइज एक बार आप रिफ्रेश करेंगे तो शायद आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा. सो क्विकली रिफ्रेश दिस. बड़ी जल्दी ख्याल आ गया सेन्योरिटा आपको, व्हाई दिस योर explanation and slides are not matching. I have had this computer for 3 years. So guys इस sentence में have क्या है? Auxiliary verb, main verb. Have Yes, Gautam. Have is an auxiliary verb. तो guys यहाँ पे भी आपके पास दो verbs हैं, have and had. पहले वाला क्या होता है हमेशा? Auxiliary. पीछे वाला main. चलिए, ये वाला तो हमने कर ही लिया है. Next slide. Lisa has been singing for 10 minutes now. Has is the main verb or auxiliary verb? How can someone realize this after a complete hour that the explanation is not matching the slides? The earlier slides were about future progressive tense that I changed. So guys, I change the session every day because मेरी टीम अपने हिसाब से टॉपिक देती है और मैं अपने हिसाब से चेंज करती हूँ उसको जो हमारी चल रही है सीक्वेंस में, राइट? जैसे आज हमने मेन वर्ब्स पढ़े तो कल वर्ब्स के ही उससे कोई टॉपिक होगा. ऑलराइट, अभय प्लीज आंसर. यस मैम. सेकंड वन मैम ऑक्सिलरी वर्ब. has हमारा auxiliary verb है क्योंकि been singing is the main verb. ठीक है, ये क्या है हमारा present perfect continuous tense. She has been singing for 10 minutes. वो 10 मिनट से गाना गा रही है. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था अब तक चल रहा है, 10 मिनट पहले शुरू हुआ था अब भी चल रहा है. मैम आई डिस्कनेक्टेड मैम, अगेन रीस्टार्ट. Yes, it's okay. My parents had fish for dinner. Had is the main verb, auxiliary verb. Okay. Alpna, please answer. Yes, ma'am. My parents had fish for dinner. Main verb. Had is main verb. So guys, had means खाया था. तो मेरे पेरेंट्स ने कल डिनर में फिश खाई थी. Had is the main verb, right? Did you have a shower this morning? Main verb, have or auxiliary? No slides. Dipendra, I think your network is not working fine. Ma'am, I have a 5G Wi-Fi.
Still, okay. Ankit, please answer. Ma'am, first one is right, main verb. Yes. Did is already an auxiliary verb, guys. तो have यहाँ पे क्या है? Main verb है. Did you have a shower this morning? क्या तुम सुबह नहाए थे? Shower लिया था? Yes, I did. No, I didn't. Frank had played tennis when he was 12. Had is your main verb or auxiliary verb? OMG, I am on future progressive slide, so I was explaining on that. Very good. I already informed everyone to refresh the slides to go on the topic of verbs. It's okay, still showing I'm on top on the leaderboard because nobody else was on that slide. Dipendra, can you see the slides now? Yes, ma'am. Please answer. Frank had played tennis when he was 12. Had auxiliary verb. Past perfect tense, guys. फ्रैंक ने टेनिस खेला था जब वो 12 साल का था. सो वो खेल चुका था, समथिंग लाइक दैट, जो हम हिंदी में बोलते हैं. सो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड यहाँ पे, क्योंकि प्ले इज द मेन वर्ब. प्लेड मैंने बताया था ईडी फॉर्म्स मेन वर्ब में लगती है. Look, the bus is coming. We have to hurry. Have is your helping verb or auxiliary verb? Komal? Yes, ma'am. Main verb. Have is main verb. Look, the bus is coming. We have to hurry. देखो बस आ रही है, हमें जल्दी करना पड़ेगा. We have to hurry. तो guys, look, the bus is coming, ये एक सेंटेंस अलग है. इसके बाद फुल स्टॉप है, मतलब वो सेंटेंस खत्म हो गया. हमारा उस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है. We have to hurry में से हमें चूज करना था, तो have क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है. जो हमारा दूसरा वाला पहले वाला सेंटेंसेस में is coming है, is your helping verb, coming is your main verb. Last slide. Has Mrs. Jones written the essay? Interrogative sentence. Has is your main verb or auxiliary verb? Pratap? Preeti? Yes, ma'am. Ji, Pratap. John written the EG. Has Mr. John written the EG? Yes. So Mrs. Jones की बात कर रहे हैं हम. Mrs. Jones ने लेटर लिखा है या लिख चुकी हैं क्या? Mrs. Jones. Has Mrs. Jones written the letter? ये guys present perfect tense interrogative sentence है, और हमने स्लाइड में पढ़ा था interrogative sentence हमेशा helping verb से बनते हैं. तो has is your auxiliary verb, not main verb. Understood? तो गाइज ये हमारी लास्ट स्लाइड थी. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप लोगों को आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. आई एम कंफ्यूज. हरी इज अ नाउन और वर्ब? कौन से सेंटेंस में पढ़ा था हमने हरी? ये रही. Look, the bus is coming. We have to hurry. Of course, it's a noun. अगर ये नाउन नहीं होता तो have हमारा मॉडल वर्ब होता. तो hurry means in great haste. We have to move in a great haste. So move is already a verb. We have to hurry. Okay. So guys, इसी के साथ हमारा सब ये वाला सेशन समाप्त हुआ है. Gautam on top. Very good, Gautam. 147 coins. Then Senorita, Kalpana, Tarla, and Dipendra. Very well done. How much is your typing speed? Not very good, Nitin. I'm sure of it. I don't know the exact number. So yes, we used to write the essay myself. गौरव वी क्यों आया है यहाँ पे? अगर आपको myself लिखना है आएगा ना. I used to write the essay. So guys, I believe ये आपकी जो problem है solve हो गई होगी. So that is all for today. I'll see you in my evening session at 5. Sorry for yesterday. I wasn't feeling well. But today definitely I'll take my session. I'll start it on
5. At 5. So see you. Have a great day ahead. Yes.
Good afternoon, everyone. Welcome to the class, guys. Yes, hello, ma'am. Hello. Good afternoon, Milan. How are you? I am fine, ma'am. And Yes. मैम Any question? मैम जब भी मैं आप बोलते हैं ना कुछ वर्ड से आप सेंटेंस बनाने के लिए, जी. तो जब बोलते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ सेंटेंस आता ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोचिए, अगर मुझे किसी ने अचानक से बोला कि मुझे आई डोंट नो स्पेसशिप के बारे में कुछ पता है, राइट? सो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होगा, मुझे सोचने में बहुत टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि मैंने Yes, कभी ma'am. स्पेसशिप के बारे में पढ़ाई नहीं की है, राइट? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो फॉर दैट रीजन आप इन सब चीजों के बारे में कंफर्टेबल होंगे जिस चीज के बारे में आप जानते हैं, जिस चीज से आप सराउंडेड हैं, राइट? Yes, ma'am. सो आपको क्या करना है? आपको खुद को इंग्लिश से सराउंड करना है. यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? आप जितना सुनेंगे और लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए, उतना आपके लिए इजी होगा खुद सेंटेंस बनाने में, खुद इंग्लिश बोलने में. सो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान के पास जाए और बोले कि आइए आइए मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए, राइट? सो Yes, इसके yes. लिए सबसे इजी तरीका क्या है? यूट्यूब है हमारे पास. हम यूट्यूब पे कोशिश करेंगे जितना हो सके इंग्लिश में सुनने के लिए. हम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं. आप चाहे तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में वीडियोस देखने के लिए. नोट्स वाले जो वीडियोस होते हैं, इफ यू आर लेट्स से स्टडीइंग सीएस, सो अगर आप सीएस के नोट्स देख रहे हैं तो आप वीडियोस इंग्लिश में देखिए. अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग हो सकता है, बाइक्स हो सकता है, नेचर हो सकता है, कुछ भी चीज में इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, बट इंग्लिश में, राइट? एंड ऑलवेज ट्राई टू वॉच वीडियोस. अभी आपका जो लेवल है उसके हिसाब से ऑलवेज ट्राई टू वॉच वीडियोस इन इंग्लिश ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स. जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है, सोचिए कोई इंडियन है, उन्होंने इंग्लिश में वीडियो डाला है, वो देखिए. Yes, ma'am. कोई पाकिस्तानी है, उनका वीडियो देखिए इंग्लिश में, राइट? इस टाइप के. सो ये आप स्टार्ट कीजिए. ओके मिलन, जितना आप सुनेंगे उतना आप याद रखेंगे, उतना आपके लिए इजी होगा सेंटेंसेस बनाना, नए नए सेंटेंसेस के बारे में सोचना, राइट? टू थिंक अबाउट स्ट्रक्चर. और ये क्या होता है, आपको कॉन्शियसली करने की भी जरूरत नहीं होती है. इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रोसेस, लिसनिंग टू पीपल कंटिन्यूअसली, ये अनकॉन्शियसली आपका माइंड रजिस्टर करता रहेगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. ओके, आई Okay, होप ma'am. दिस Okay, आंसर्स योर क्वेश्चन. Yes, गुड ma'am. आफ्टरनून मैम. Thank you, गुड ma'am. आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. यस श्रीनिवास, मैम गुड मैं आफ्टरनून. ट्राई कर रहा हूँ मैम स्पीक करने के लिए. मैं तो स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रीडिंग भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके साथ. बट मेरा मैम जब भी रीडिंग कर रहा हूँ और मेरा मैम मैं देख रहा हूँ मेरा क्या हो रहा है कि वो बेसिक सा वोकाबुलरी स्ट्रांग नहीं है. तो ओके ओके, तो उसका ही प्रॉब्लम हो रहा है मैम. मैं काफी बार, वो वोकैबुलरी, 2 बार आई थिंक वो थर्ड टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम ही मैम. जी, वोकैबुलरी सेम जो प्रॉब्लम होती हो है, रहा है. जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड यस यस. श्रीनिवास. वन सेकंड. वोकैबुलरी जो होती है, पहली बात तो वोकैबुलरी के बहुत सारे ओके डिफरेंट तरीके होते हैं, सॉरी नॉट तरीके, टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं वोकैबुलरी के. ओके, सो क्या मैम होता अभी है? तो और एडवांस में इंग्लिश भी हो रहा है और इतना. हेलो जी जी, हेलो मैम, अभी तो एडवांस इंग्लिश आ रहा है, तो इसी इसी के टाइप से मैम. और ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैम ज्यादा आ रहे हैं, तो इसी से नहीं, बोलने से यही थोड़ा बात थोड़ा है. कम हो. जी, यही बात है ओके कि क्या होता है श्रीनिवास, कि वोकैबुलरी के बहुत सारे कैटेगरीज या लेवल्स होते हैं, राइट? जब कोई जस्ट स्टार्ट आउट कर रहा ओके है, ओके सोचिए मैं जस्ट इंग्लिश सीख रही हूँ या कोई भी लैंग्वेज, तो मैं एकदम बेसिक वोकैबुलरी से स्टार्ट करूंगी, राइट? उसके ओके बाद आता है एडवांस्ड वोकैबुलरी, इंटरमीडिएट लेवल. सो वो सब कब आता है? जब आप ऑलरेडी सिंटेक्स वगैरह में, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हैं एंड आपको पता है कि हाँ सेंटेंस कैसे बनता है, ये क्या सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है. सब्जेक्ट आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, वर्ब इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. तब क्या होता है, धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट, एडवांस, इन सब चीजों की तरफ जाते हैं. एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस, क्या क्या चीजें आती है वोकैबुलरी में? वी गेट थिंग्स लाइक फ्रेजल वर्ब्स, वी गेट थिंग्स लाइक इडियम्स, वी गेट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आने लगते हैं, राइट? क्योंकि जो वर्ड्स होते ओके हैं एडवांस्ड या इंटरमीडिएट वोकैबुलरी में, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, राइट?
थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, बट हम तो कभी भी डिफिकल्ट चीजों से सीखना शुरू नहीं करते, राइट? वो डिफिकल्ट वर्ड मैंने क्यों सीखा? सोचिए, रन के जगह पे मैंने सीखा एक वर्ड डार्टेड, DARTED, राइट? रन के जगह पे सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि रन मुझे आता है, मुझे पता है रन कैसे यूज करना है, 100% मुझे उसके सारे यूजेस आते हैं, तब जाकर मैं सीख रही हूँ डार्टेड। क्यों? ताकि मैं बेटर कर सकूं अपने बोलने को, राइट? बट जब हम ओके सीख रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब बेसिक वोकेबलरी सीखने के लिए कभी भी वोकेबलरी को अलग से नहीं सीखना चाहिए, राइट? वी शुड नॉट अप्रोच बेसिक वोकेबलरी एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टॉपिक। बेसिक वोकेबलरी सीखना सबसे इजी होता है, अगेन, लोगों को सुनना या फिर पढ़ना, राइट? सो यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल। सोचिए ओके कि आपको इंटरेस्ट है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, सोचिए आपको इंटरेस्ट है स्यूइंग में, राइट? सिलाई में आपको इंटरेस्ट है एंड आप सिलाई के बहुत वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, राइट? सो सोचिए कि एक वो है, एक वर्ड है स्टिच, STITCH। अब बार ओके बार आप जब वीडियोस बार बार देखेंगे उसमें स्टिच बार बार आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ड है जो स्यूइंग से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। सो आप कभी सुनेंगे आई एम स्टिचिंग राइट नाउ, कभी आप सुनेंगे आई विल स्टिच दिस टुमारो, कभी आप सुनेंगे दिस स्टिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्या होगा, आपका ब्रेन उस वर्ड को रजिस्टर करता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ओपन अ डिक्शनरी, राइट डाउन द वर्ड, राइट डाउन मीनिंग, कुछ नहीं करना है, आपका ब्रेन खुद से रजिस्टर करेगा। छोटे छोटे वर्ड्स है, बहुत सिंपल वर्ड्स है, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने का। So basic vocabulary build करने के लिए start listening to people speaking in English. Again, non-native speakers से शुरू कीजिए and ओके you start reading as well. अगर आपको पढ़ना पसंद है, only if you like reading, कोई जबरदस्ती नहीं है। If you don't like reading, बिल्कुल मत कीजिए, right? Only if you like to read and whatever you like to read, just start reading that. ये धीरे धीरे आप करते जाइए, maybe it will take you 3 months, 4 months. आपके पास एक ह्यूज वोकेबलरी का स्टॉक होगा, बट ये आपको कॉन्शियसली करना है कि हाँ, आज मैं 1 घंटा वीडियो सुनूंगा इंग्लिश में किसी न किसी का, या आधा घंटा या 15 मिनट, जो भी आप करना चाहें, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट कि मैं करूंगा ही करूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि कभी मन किया तो किया, कभी नहीं। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट दिस एंड बेसिक वोकेबलरी बिल्ड करना बहुत ईजी है। पहला आपका फोकस होना चाहिए टू लर्न हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, राइट? वो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीखेंगे, इट विल ओके टेक टाइम यस बट यू विल रीच देयर, राइट? once you learn कि कैसे sentences बनाते हैं, once you have a good basic vocabulary, then we move on to intermediate advanced level vocabulary, right? उसकी अभी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। एंड आपको क्या करना है, ये टाइम बेस्ट है बेसिक वोकेबलरी बिल्ड करने का। क्यों? एक हाथ पे आप ग्रामर सीख रहे हैं, एक हाथ पे आप सीख रहे हैं कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, क्या ग्रामर होता है। उसके साथ अगर आप बेसिक वोकेबलरी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसी के साथ सोचिए 6 महीने में ग्रामर भी खत्म हो गया आपका, वोकेबलरी भी बन गया, then you can move on to the next level, right? यस मैम Okay, I hope this Ma'am, I would helps. like to say a जी few things, ma'am. जी Like Kumar, I'm not promoting. I mean, I'm trying to help him. Like बिल्कुल my बिल्कुल YouTube बताइए। channel can be very helpful for him Very nice, Kumar. You have a या YouTube because channel. I You I should provide let me know as well. small sentences and a small sentence translation, ma'am. Very There, good. What is the Hindi name? to English. Yes, Kumar. What's the name of Ma'am, the channel? YCLE. It means you can learn English. Y stand for you, and C stand for can, L stands for L, and E stands for English, ma'am. वाह, बहुत अच्छे. You can learn English, right? You should let Yes, me ma'am. know as well. I will also follow, right? Ma'am, So यस बहुत please मैम check आई and विल बी give me फॉलो feedback, ma'am. definitely. I also follow Raji's YouTube channel, so I would love to follow yours as well. 6,000 subscriber is already there, ma'am. Amazing, very वाह nice, गुड very nice. It's really cool. Okay, so आप follow कर सकते हैं. You can also try these things. अच्छा, and बहुत यस यस बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी YouTube पे, free Ma'am, है but बिल्कुल. ma'am, I would love to get your feedback. Like, Definitely, definitely. I'll check it out yeah, today please itself check, after the look class. into it, and yeah. Definitely, definitely. यस चलिए मैम guys, आई yes विल ma'am. sure and follow the Kumar's YouTube जी channel and ma'am जी. I recent the seen the see the 4000 essential uh, Right. essential English Essential so English ma'am words. this was very helpful ma'am बहुत and हेल्पफुल है बुक. guessing आप the very basic फर्स्ट बुक से स्टार्ट vocabulary कीजिए. स्टार्ट विद द okay फर्स्ट बुक. अगर छोटे स्टोरीज भी पढ़ेंगे आप, उसमें शायद 10-20 ही वो अंडरलाइन करते हैं, बट बहुत वर्ड्स है, राइट? इट हैज अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स.
very simple, very basic words जो आपको हमेशा speaking में काम आएगा. And your brain is also learning. जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, your brain is also learning Yes, the yes. syntax, right? वो धीरे धीरे structure भी समझ रहे हैं. So बहुत अच्छा है, बिल्कुल start कीजिए. Yes, Dipali, do you have a question? No, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine. How about you? I'm fantastic, ma'am. Great. And talking to you after a very long time, right? Yes, ma'am. जी. Because of morning class, I had a work. That's why I was not joining No class. problem, no problem. होता है. I can understand. Very difficult, you know, to maintain everything. आप लोग तो कर लेते हैं. I don't know how you guys do like classes and everything. बहुत difficult होता है. At least for me, it's very difficult. मुझे तो classes लेकर पढ़ने में भी मौत आती है basically. चलिए, let's start. So today's Ma'am, class. sorry, ma'am. Yes. Am I audible, ma'am? Yes, I Kumar, mean, you're I audible. have no idea, ma'am. Why don't you have YouTube channel? I mean, you teach really well. If you teach online, maybe you will, ma'am. It is really, I mean, it has a great potential, and I'm Kumar, working 12 hours a day, so I don't have infrastructure and at the same time time also, ma'am. But I managed to do that yes, as a yes, hobby. Kumar. Very soon is the word. Keep. Like I've Yeah, already please, ma'am. started working and notes वगैरह भी आप लोगों को देना है PDF. I want to give you the PDFs. So website भी I'm creating. Hopefully within a Ma'am, few days. inspiration could be English connection, ma'am. She has more than 9 Very million. very inspiring. She is very inspiring. बहुत अच्छा भी है channel. English connection आप लोग भी चाहे तो follow कर सकते हैं. It's very Ma'am, but your teaching style is completely different yes, and different है. completely useful. Yes, different है. मुझे एक चीज मतलब I won't say कि like problem है obviously whatever works, but I don't believe in the translation method. मतलब वो मैं believe ही नहीं करती हूँ कि translation method से काम होता है. So that is the only thing that I would say is like Yes, a ma'am. little different, but otherwise very good channel. Very good. Definitely. Yeah, ma'am, but we should always work on our strength. But the thing is, we have to also take care of what is there, what is demand there, what people's बिल्कुल, demand. Definitely, definitely. That is one of the reasons why it is so famous. I'm right? looking forward, ma'am, for your YouTube channel. Definitely, definitely. Hopefully, बहुत जल्दी. I have already started working. धीरे धीरे हो जाएगा. बहुत Okay, जल्दी means how long, ma'am? Within I think Within a I would week? say within a week. हाँ बोल सकते हैं a week or two. Okay, ma'am. I'm Alright. really happy and I'm looking forward to it, ma'am. Yes, yes, definitely. I hope आप लोगों को भी पसंद आएगा. Let's see. शुरू करते हैं देखते हैं क्या होता है. Okay? Yeah, ma'am. चलिए let's start guys. So vocabulary से शुरू करते हैं. Let's read a few. Let's start with the story today. Right? Story पढ़ के start करते हैं, then we will look at the words. So जैसे जैसे story पढ़ रहे हैं, try and understand the meaning. Okay? अगर आपको word नहीं भी आता है, side by से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है meaning. Right? Who wants to read? बताइए. Can I, ma'am? जी. Definitely. Milan, Dipali, and Karla. Right? So we will start with Milan. Milan, you can start first paragraph. Yes, ma'am. The main chief, है ना? The main chef. Oh, chef. Okay. Chef. Right? Yes. The main chef. Main नहीं है, mean है. Oh, mean chef. जी. Mean का मतलब होता है cookers. Right? Okay. चलिए. Once there was a chef who was mean to his cooks. He was mean to the people who came into it. He charged too much for meals. Many people were not able to afford the cheapest bean dish. When his metal oven broke, he did not have it fixed, so everything baked in it burned. The only light was from candles, and the whole place was a mess. Sometimes he did not pay his waiters since they had no funds. They had many debts.
Okay, very nice. Very nice. Thank you so much, Milan. Chalo. So once there was a chef. Chef is a bawarchi, right? The person who cooks, professionally cooks, right? So they are called chef. Noun. Okay, this noun. Who was mean to his cooks? Mean क्या है? What part of speech? Adjective, right? Mean person, mean chef, mean boy. So adjective है. Mean का मतलब क्या है? Mean का मतलब है खुदगर्ज, right? A person who is selfish. They are called mean. To his cooks. Cooks क्या है? What part of speech? Noun. Noun, बिल्कुल correct है. Noun, right? A person who is cooking. Again, professionally जो खाना बनाते हैं उनको cooks भी बोला जाता है, chef भी बोला जाता है, cooks भी बोला जाता है. Okay, this is the noun. But cooks हमारा क्या हो सकता है? Verb भी हो सकता है. Cook, cooked, cooked, cooking, right? So depending on how we are using it in a sentence, it can either be a noun or an adjective, right? He was mean to the people who came in to eat. जो आते थे, he was very mean to the people, the customers, right? He charged too much for meals. Charged is verb. Charge, charged, charged, charging. अब ये जो charge है, इसके different meanings हो सकते हैं verb में, right? Charging your phone, I have charged my phone. That वो भी हो सकता है और दूसरा हो सकता है how much you are charging someone for something. कितने पैसे आप मांग रहे हैं किसी को कोई चीज बेचने के लिए, right? That is also charge. So he charged too much for meals मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे लेता था meals के लिए. For the food that he was serving. Meals is again noun. Okay, meals matlab meal is basically a complete dish. Okay, complete dish that is called a meal. Many people were not able to afford. Afford again verb. यहाँ पर to afford है, which is functioning as infinitive, but afford functions as verb. Afford, afforded, afforded, affording. Okay, to afford the cheapest bean dish. Cheapest क्या है बताइए? Adverb. Adverb No. किसको डिफाइन कर रहा है? बीन को. बीन Cheapest डिश. bean. एडजेक्टिव, राइट? Okay, adjective. एडजेक्टिव. बीन डिश क्या है? नाउन है, राइट? सो नाउन को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव है. कौन से फॉर्म में है? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. चीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, राइट? बीन इज बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं बीन को? जो राजमा होते हैं उनको बीन्स बोला जाता है. Affords mean man. किडनी बीन्स बोला जाता है, राइट? डिफरेंट काइंड्स के बीन होते हैं. ब्लैक आइड बीन्स होते हैं जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अगेन आई डोंट नो. वो व्हाइट होता है उसमें एक फली बोलते हैं. फली फली फली. ओके ओके, मुझे नहीं पता. सो ये सब बीन्स के टाइप्स है. ओके, सो इसको बीन बोला जाता है. जैसे राजमा हो गया, ब्लैक आइड बीन हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बीन्स है. ओके, सो लोग बीन डिश को भी अवेल नहीं कर पा रहे थे. इट वाज सो एक्सपेंसिव, राइट? सो ये भी नाउन है बीन. ओके, when his metal oven broke. metal oven. अच्छा, ये बताइए यहाँ पे metal किस चीज का काम कर रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग. मैम एडजेक्टिव है. वेरी गुड, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही. कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, राइट? जस्ट शोइंग मटेरियल. वेरी गुड. बट मेटल कैन आल्सो फंक्शन एज नाउन, राइट? if I say it is made out of metal, then it is functioning as noun. हो सकता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है. वेरी गुड. oven, oven we know जिसमें खाना पकाया जाता है, right? We put it in the oven and it comes out. So usually baking के लिए या broiling वगैरह के लिए ovens का use किया जाता है. Broke, broke is again verb. Break, break, broke, broken, breaking. Break, broke, broken, breaking, right? Verb है हमारा, तोड़ देना. To break something is to dismantle it, kind of like, right? He did not have it fixed. So उन्होंने fix भी नहीं करवाया. His oven had broken and he did not even get it fixed. But he was charging a lot of money from the customers for the cheapest meals. सबसे cheap meals के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा था. So everything baked in it burned. So वो इस broken oven में जो भी बनाते थे वो burn हो जाता था, वो जल जाता था, right? Burnt is again verb. Burn, burned, burnt, burning. Okay. Baked is again verb. Bake, baked, baked, baking. Okay. Bake करना मतलब बनाना, but not frying it, like तवे पर या चूल्हे पर नहीं बनाना, but oven पर बनाना, oven के अंदर बनाना, उसको baking बोला जाता है. For example, cakes are baked, bread is baked, right? ये सारी चीजें bake की जाती हैं.
The only light was from candles. So candles से light आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ candles से ही. Candles again is noun, right? Candles मतलब candlesticks of course जिनको जलाया जाता है to create light, and the whole place was a mess. पूरा का पूरा जो जगह था, it was a complete mess. Mess here is functioning as noun. Mess का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, right? सब कुछ इधर उधर है, that is called mess. Okay. Mess का verb form क्या है? Anyone? Ma'am, messed. Messed up हो सकता है, it is messed up, but messed up is again verb. Phrasal verb हो Mess. गया ना. Messy, right? Messy. Messy. It is very messy. So जब messy बोलते हैं तो वो हमारा हो जाता है verb. Men can remember this very easily, right? Messy का तो नाम ही सबको याद है. Okay. Sometimes he didn't pay his he didn't pay his waiters. Pay is again a verb. Pay करना मतलब किसी को उनका पैसा देना. Pay, paid, paid, paying. Pay, paid, paying. Right? So he didn't even pay his waiters. Waiters is again noun. Waiters are the people who wait on you. Right? The people who wait on you. जब आप जाते हैं वो पूछते हैं what do you want, so on and so forth. So उनको waiters बोला जाता है. Okay, it is again a noun. Since they had no funds, they had many debts. Funds का मतलब है पैसे, right? They did not have any funds. Again, funds is now. उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, funds नहीं थे ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए. Rather, what did they have? उनके पास क्या था? Debt था. Debt. इसका pronunciation जो होता है B silent होता है, okay? B silent होता है. So debts, debts. B का sound ही नहीं आता है. Debt नहीं बोलेंगे, debts. Okay. So they had many debts. Debts का मतलब क्या होता है? कर्जा. उनके पास बहुत सारा कर्जा था. Again now. Yes, Kumar? Ma'am, there is many dates. How it is, ma'am, countable? Countable है. They had many debts. Okay. Countable है. A lot of debt can we say, ma'am? A lot of debt भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. Thank you, ma'am. Okay. Yes. चलिए. So I hope यहाँ तक clear है. Let's go to the next part. Who was going to read? Dipali? Right. जी दीपाली. चलिए यहाँ से यहाँ तक. Okay. From here. Okay, ma'am. The chief behaved this The way. chef. The chef behaved this way all the time. He monitored. He monitored the cook and ill if they did not do things his way. One day, he cook decided that they were right of us abuse and that abuse and that they would not be passive anymore. Everyone opposed the chef at first. They thought about swing him. Instead, they tied off the chief with rope. Now they controlled the restaurants. They decide the price of food. Very good, very good. बिल्कुल सही है. Thank you so much. Ma'am. Yes. Someone said, ma'am. Chili. So the chef behaved this way all the time. Behaved is again verb, right? Behave, behaving. इसका noun form क्या है? Behavior. Very good, very good. Noun form is behavior, right? So ये जो chef था हर वक्त इसी टाइप से behave करता था, इसी तरीके से behave करता था. He monitored the cooks. Monitored is again verb. Monitoring. Monitor करना मतलब किसी पर निगरानी रखना, right? To be looking at them all the time, trying to see what they are doing, if they are doing their work or not, so on and so forth. That is called monitoring. Okay. So he was constantly monitoring the cooks and yelled if they did not do the things his way. Yelled is again verb. Yelled का मतलब last class only we discussed. Chillana. Very good. Yes. Shouting, right? Absolutely correct. So
और जब भी कोई कुछ काम नहीं करता था वो चिल्लाने लग जाता था, उन पर येल करने लग जाता था. One day the cooks decided that they were tired of the abuse. Decided is again verb. Decide, decided, decided, deciding. Right? So decided का मतलब उन्होंने तय किया. तय करने को हम decided बोलते हैं. Okay? To decide is to तय करना. That they were tired of the abuse. Tired क्या है? पर थक जाना मैम, उब जाना. Yes, उब Fed up. जाना, but Adjective. Fed up, which ma'am. Adjectives. adjective? Correct. Just ed है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा, verb हो जाएगा, right? So adjective है, tired person. I am very tired, right? So adjective है. So tired Yes का ma'am, मतलब होता है helping verb is थका. there before it. Right, exactly. Absolutely correct. So tired मतलब थका होना, right? Of the abuse. Abuse is noun. Abuse का मतलब होता है हिंदी में किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, बेसिकली अत्याचार. ओके, अब्यूज का मतलब होता है अत्याचार, और यहाँ पर नाउन है. ओके, इसका एडजेक्टिव फॉर्म मैम टॉर्चर, कैन वी से टॉर्चर मैम? टॉर्चर. यस, टॉर्चर बिल्कुल बोल सकते हैं. देयर आर टू एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. abused, अब्यूज्ड हो सकता है, अब्यूज्ड पर्सन Abusive मतलब द also ma'am. विक्टिम. अब्यूसिव Abusive. हो सकता है, अब्यूसिव हो सकता है, राइट? दीज आर द टू. अब्यूज्ड मतलब जिन पर अब्यूज किया गया है, जिस पर अत्याचार किया गया है. ओके, एंड अब्यूसिव मतलब जो अत्याचार कर रहा है, जो उस पर Ma'am, अत्याचार कर रहा है. and what about adjective ma'am? These are only adjective. Abusive person, abused person. Abuse is a verb ma'am. Abuse is a verb. Abuse can be verb. Abuse noun है सबसे पहले तो, right? I am tolerating the abuse. So noun. Understood? उसके बाद abuse, abused, abusing. ये क्या है? हमारा verb है, right? Then we are getting abusive and abused. ये हमारा क्या है? Adjective है, right? For example, verb बोलेंगे he is abusing me, he has abused me, he abuses me, right? So on and so forth. Abusive, he is very abusive. Adjective बन गया. The person who is abusing. Abused, I am abused. क्या बन गया? I am abused मतलब कि मुझ पर abuse किया गया है. I am the abused person. So adjective बन गया. The person who is enduring the abuse, right? And अब्यूजर वगैरह भी इसी से आता है, ये भी नाउन है. ओके, अब्यूजर भी नाउन है, जो अब्यूज करता है उनको अब्यूजर बोला जाता है, ये भी नाउन है. ऑलराइट, एंड एडवर्ब क्या बनेगा? Abusively. अब्यूसिवली. ओके, ये हमारा एडवर्ब बन गया. ही स्पोक टू मी अब्यूसिव, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर है गाइस? बताइए. Yes ma'am, thank you ma'am. मोस्ट वेलकम. चलिए, सो after that, कहाँ था? Yes. So they were enduring this abuse. उन पर ये अत्याचार किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था. Then they would not be, and that they would not be passive anymore. So उन्होंने डिसाइड किया हम अब पैसिव नहीं रहेंगे. पैसिव क्या है? पैसिव is I think adjective. Okay, passive person, passive voice. So adjective है most probably. थोड़ा चेक कर लेंगे हम, don't worry. So passive का मतलब होता है कुछ ना करना, right? To not do anything actively. जी, निष्क्रिय. बिल्कुल सही, वेरी गुड. निष्क्रिय, राइट? सो इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं हम पैसिव नहीं रहेंगे, इसका मतलब कि हम कुछ करेंगे, राइट? हम निष्क्रिय नहीं रहेंगे. सो दैट इज व्हाट पैसिव इज. एवरीवन ओपोज्ड द शिप. अगेन वर्ब है, राइट? ओपोज किया उनका. सो ओपोजिंग समथिंग और समवन मींस उसके खिलाफ जाना, उनके खिलाफ जाना. ओपोज, ओपोज्ड, ओपोज्ड, ओपोजिंग, राइट? इससे अपोजिशन वगैरह भी आता है हमारा नाउन, राइट? अपोजिशन एंड ये. ओके, सो उन्होंने अपोज किया शिप का. एट फर्स्ट दे थॉट अबाउट स्विंग. थॉट इज अगेन वर्ब. किसका फॉर्म है? Think. Think ma'am. Very good. Think, thought, thinking, right? So they thought about suing him. Sue करना किसी को मतलब किसी को बेसिकली कोर्ट में ले जाना किसी कारण से. ओके, वर्ब है sue, sued, sued, suing. ओके,
सो sue करना मतलब किसी को किसी वजह से केस कोर्ट फाइल में मैम, घसीटना। जी केस फाइल। यस, किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करना। ओके, दैट इज suing basically. So they thought about suing him. Instead, they tied up the chef with rope. Tied up is again verb. What kind of verb? फ्रेजल वर्ब Phrasal मैम, verb. बांधना। Correct, correct. Phrasal verb. Tie up करना मतलब बांधना, किसी भी चीज को बांधने को हम बोलते हैं tie up. So उन्होंने क्या किया, शेफ को ही बांध दिया। किससे बांधा? रोप से बांधा। नाउन है, रोप का मतलब होता है रस्सी, राइट? रोप. So now they controlled the restaurant. Controlled is again verb. Control, controlled, controlled, controlling. Control करना मतलब किसी को अपने वश में करके उससे कुछ भी काम करना, right? So control basically. So they controlled the restaurant. Restaurant is a noun, right? Restaurant मतलब जहाँ खाने जाते हैं, सबको पता है. Okay, so they decreased the price of food. उन्होंने price कम कर दिया. Decreasing something मतलब कम करना. Decrease the temperature. Temperature कम कीजिए, right? Decrease the price. Price कम कीजिए. So verb है decrease, decrease, decreased, decreasing the price of food. Food का जो price था, उन्होंने वो कम कर दिया. Okay, very good. Next, Stella, you can start from here. Yeah, ma'am. Remove the best ingredients and made large quantities of food. They turned on the lights. The restaurant was converted into a happy place for the first time. Many people come to eat. The chef realized that the restaurant's problems were his fault. The chef learned an important lesson, lesson. The new Generous generous chef insisted on giving the customer a free meal. Very good, absolutely correct, right? बहुत अच्छा, very nice. So they used the best ingredients. उन्होंने सबसे अच्छे वाले quality के ingredients use करना शुरू किया. Best is what? Superlative. Adjective. Very good. Superlative adjective. Good का है, right? Good का good, better, best. Ingredients. Ingredients मतलब जिससे कोई चीज बनाई जाती है, right? So the ingredients needed in baking a cake are what? Eggs लगते हैं, butter लगता है, oil लगता है, flour लगता है. So those are the ingredients of baking a cake. So ingredients are the things that are required to do something, to make something out of it. Okay. So noun है ये हमारा. So you can understand best ingredients, adjective है, noun को define कर रहा है. And made large quantities of food. Quantities is again noun. Okay, confuse नहीं होना है. Quantity हमारा noun है यहाँ पर. And quantities का मतलब है कि amount, बहुत बड़ा amount, right? So large हमारा क्या है फिर से? Adjective. Correct, बिल्कुल सही है. Adjective है, quantities को define कर रहा है. So वो लोग उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे quality और बहुत ही large quantities का उन्होंने food बनाना start किया, खाना बनाना start किया. They turned on the lights. Again, phrasal verb. Turned on, right? Yes. Turn on करना मतलब किसी चीज को चालू करना. So turn on the fan, turn on the light, so on and so forth. Turn on the tap, right? Tap के लिए भी बोलते हैं कि चालू कर दीजिए. Phrasal verb है. The restaurant was converted. Converted is again verb. Convert, converted, converted, converting. Convert करना मतलब किसी चीज से किसी चीज को change कर देना, right? जैसे कि सोचिए किसी ने रिलीजन कन्वर्ट किया, इस रिलीजन से उस रिलीजन में चेंज हो गया, सो कन्वर्टिंग, राइट? किसी चीज को बदल देना, बेसिकली दैट इज कन्वर्टिंग. ओके, सो दे कन्वर्टेड द रेस्टोरेंट इनटू अ हैप्पी प्लेस. हैप्पी क्या है फिर से? Adjective. एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, राइट? सो हैप्पी प्लेस, प्लेस को डिफाइन कर. सो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट को कन्वर्ट करके एक खुशहाल जगह बना दी, राइट? फॉर द फर्स्ट टाइम मेनी पीपल केम टू ईट. केम इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कम. कम, केम, come, coming. Okay, so come, came, come, coming. The chef realized that the restaurant's problems were his fault. Realized verb. Now, realized, realizing. Verb है, right? So realize करना मतलब किसी चीज के बारे में अचानक से समझ में आना, basically, right?
कोई चीज जो आपके आंखों के सामने थी, आप अचानक से समझ मैम गए, हिंदी में रियलाइज। एहसास होना। एहसास होना, राइट, थैंक यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, एहसास होना। व्हाट इज द नाउन फॉर्म बताइए? Realization. Realization, very Realization. good. Bilkul correct. Realization. Right. So the chef realized that the restaurant's problems, restaurant के जो problems थे, problems again now, जो दिक्कतें थी, right, problems थी, were his fault. वो उसकी गलतियाँ थी. Again noun. Fault is noun. Okay. Fault का word form बताइए. Fault मतलब गलतियाँ, right? गलतियों को fault बोलते हैं. Verb, sorry, not Faulty. verb. Yes, faulty is the Fault. adjective. Faulty. Adjective, right? So faulty मैं बोलने adjective बोलना चाहती थी. Yes, faulty is the adjective of fault. Ma'am, Fault से one more एक, thing I would like to say. yes, Realize has two form of spelling, ma'am. Like one is a SED and British. ZED. Yes, ma'am. So why it is so? I think it is British and वो है British and USA वाला. And ma'am, I would like to just know that which is British and which is American. Z वाला British है और S वाला USA है. Okay, आप एक बार चेक कर लीजिए. American है S वाला. ये सिर्फ realized में नहीं है, बहुत सारे words है जिसमें ZED होता है और SED होता है. जैसे civilization वगैरह में भी होता है. Yes. Okay, yes, recognized as well, civilization as well. So ये ZED और SED का जो difference है, ये USA और ब्रिटेन का है, मुझे पता है. But एक बार अमेजिंग और अमेजिंग भी होता है ना, वो भी. नहीं, अमेजिंग ZING होता है. Okay, उसमें नहीं होगा. Realize versus realize. देख लेते हैं. Realize and realize are two different spellings and words. Chances are, if you are reading something that originates in US or Canada, you will realize. And chances are, if you are reading something that originates in UK, Australia, or Muslim, you will see realize. Okay, मैंने उल्टा बोला. SE जो है वो UK का है और ZE जो है वो USA का है. Mostly. Okay, हम इंडिया में ZE ही फॉलो करते हैं. In India we mostly follow ZE. Okay, मतलब ZE जो होता है वही फॉलो करते हैं इंडिया में mostly. चलिए. So noun है fault. Faulty हमारा adjective है. Okay. और एक word होता है faltered, right? Faltered, वो हमारा word होता है. Okay. Faltered मतलब कोई गलती कर देना, इसको faltered बोलते हैं. He has faltered. Okay. The chef learned. Yes. Ma'am, FAULTER, falter. जी बिल्कुल. TERED होगा अगर past tense है. Okay. Faltered. Okay. Okay, ma'am. The chef learned an important lesson that day. Learned verb है. Forms बताइए. Learned के. Learned. Learned. Right. बिल्कुल correct. Right. ये forms है. Learned, learning. Okay. So ये forms थोड़ा याद रखिएगा. The chef learned. उन्होंने सीखा. क्या सीखा? An important lesson. Important is again adjective. इसका adjective है lesson का. Lesson is a noun. Lesson मतलब सीख. Right. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख उसने सीखी. महत्वपूर्ण is adjective. Important and seek is noun. Lesson. Right. So the new generous chef. Generous क्या है? Kind. Like adjective. Adjective. Correct. Kind है. Yes, correct. Generous मतलब kind, open-hearted, someone who is not selfish, right? Opposite of selfish. So ये जो नया शेफ आया बहुत ही generous था. He insisted. उन्होंने insist किया. Verb है. Insist, insisted, insisted, insisting. Right? Insist करना मतलब जिद करना मैम. जिद. उन्होंने जिद किया on giving the customers a free meal. उन्होंने जिद किया कि हम customers को एक free meal देंगे. What is a generous? Please tell me again. Generous is adjective. Generous means the opposite of mean, the opposite of selfish, right? Generous मतलब बहुत ऐसे इंसान जो kind है, जो selfless है, जो सारी चीजें लोगों को देना चाहते हैं, right? अगर मैं generous होंगी, good nature. अगर कोई generous होगा तो वो अपनी चीजें दूसरों को देना चाहेगा. Okay? Adjective है, शेफ के लिए यूज किया जा रहा है. So शेफ ने जिद की, insist किया. क्या इंसिस्ट किया कि सारे कस्टमर्स को एक फ्री मील मिलेगा. कस्टमर्स इज नाउन. जो खरीदने आते हैं उनको कस्टमर बोला जाता है, ग्राहक. राइट. फ्री मील. फ्री हमारा एडजेक्टिव है, मील हमारा नाउन है. दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, सॉरी नाउन फ्रेज बनता है. राइट.
सो फीमेल यहाँ पर बेसिकली नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज। ओके, चलिए, आई होप क्लियर है। यस, बहुत सारे वर्ड्स सीखे हमने, लेट्स ट्राई इट, यूज फटाफट थोड़ा देख लेंगे वर्ड्स को। यस, हु वांट्स टू रीड नेक्स्ट, बताइए। मैम में आई मैम मैं आई। यस, अल्पना, अल्पना एंड आई कैन सी श्रीनिवास। ओके, ओके, चलिए अल्पना एंड यस मैम। श्रीनिवास, यू गाइस स्टार्ट। अल्पना शुरू कीजिए। yes ma'am abuse is verb to abuse someone or something means to hurt them on purpose. The mean man abused his dog when it barked too loudly. बिल्कुल करेक्ट है, राइट। टू हर्ट समवन ऑन पर्पस, किसी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाना, अब्यूज। अब्यूसिव एडजेक्टिव, अब्यूज्ड एडजेक्टिव, अब्यूसर नाउन है, राइट। अब्यूज भी हमारा नाउन हो सकता है और अब्यूज हमारा वर्ब भी हो सकता है, राइट। वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़िए। यस अल्पना। Yes, ma'am. Afford is verb. To afford something means you have enough money to pay for it. I have been saving my money so I can afford to buy a new bike. बिल्कुल, अफोर्ड मतलब कोई चीज को खरीदने की क्षमता रखना, राइट। आई कैन अफोर्ड दिस, इसका मतलब ये है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ये चीज खरीद सकती हूँ। ओके, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, बताइए। Affordable. वेरी गुड, अफोर्डेबल, राइट। अफोर्डेबल हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। यस अल्पना। Bake. Bake is verb. To bake means to cook food with heat. My sister is a good cook. She bakes delicious cakes. करेक्ट, बेक 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 बेकिंग, राइट। इसका Yes. एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? Baking. बेक्ड। Baked. बेक्ड हमारा एडजेक्टिव है। ओके, बोलते हैं ना बेक्ड गुड्स, we will sell some baked goods, we will sell some baked cookies, right? So adjective हमारा baked है। Then ma'am, Okay, what till the bakery? bakery noun, Okay. bakery, baker, ये सब नाउन है। रूट वर्ड बेक है बट ये नाउन है। बेकरी का मतलब जहां पर बेकिंग किया जाता है और बेकर का मतलब जो बेकिंग करता है। ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़िए। यस अल्पना। Bean is noun. A bean is a plant seed that is good to eat. There are many different kinds of beans to eat. राइट, ये जो भी राजमा वगैरह आते हैं ये सारे बीन्स के टाइप्स है, राइट। इट इज अ नाउन। Yes. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अल्पना। आफ्टर अल्पना चलिए who is going to read? श्रीनिवास जी, श्रीनिवास। श्रीनिवास wanted to read, okay, चलिए प्रीति you can read. Yes ma'am. Okay. Yes, yes, one by one. Okay. ma'am. पहले श्रीनिवास then प्रीति। Yes श्रीनिवास। Can I you start can ma'am? Yes. Candle. Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Thank you. Srinivas, please continue. Okay. Ma'am, the which sentence? Candle. Candle. Right? Candle is a noun. A candle is a stick makes that is it on fire to light or heat. When the lights went out, we lit some candles. We lit some candles. Very good. बहुत अच्छे। So candle wax से बना होता है, right? So wax हमें actually bees wax से originally wax मिलता है। So bees जो वो बनाते हैं hives, right? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं bee hive। उससे दो चीजें मिलती है, एक हमें मिलता है honey और दूसरा wax मिलता है, right? उस wax से हम कैंडल बनाते हैं। So कैंडल का जो बॉडी आप देखते हैं ना, मोमबत्ती का जो बॉडी होता है वो जिस चीज से बना होता है उसको बोलते हैं वैक्स। वैक्स, ओके, WAX। सो वैक्स से बना होता है कैंडल, मोमबत्ती। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट वी लिट सम कैंडल्स। मैम वैक्सिंग वाला वैक्स भी यही होता है? जी बिल्कुल, वैक्सिंग वाला वैक्स भी यही होता है, राइट। उसको पिघला देते हैं, लाइक ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है, उसका शायद कंपोजिशन अलग है, बट उसको भी वैक्स बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वी लिट सम कैंडल्स में लिट क्या है? लिट वर्ब है, किस चीज का वर्ब Lit है? is a verb, ma'am. Irregular verb. लाइट, करेक्ट, रेगुलर वर्ब है, नॉट रेगुलर, इरेगुलर, राइट। Irregular, ma'am, लाइट, yes. लिट, लाइटिंग। ओके, सो वर्ब है, रिमेंबर दिस। लाइट का फॉर्म आता है लिट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो नेक्स्ट बताइए। यस, कन्वर्ट।
Read, please, Srinivas. Okay, next is convert. It is for to convert something means to change it into something else. The man converted his messy field into a gold garden of flowers. बिल्कुल. So convert करना मतलब किसी चीज से किसी चीज को बदल देना, right? Convert verb है convert, converted, converted, converting. Simple है, right? इसका वो बताइए, noun बताइए, adjective बताइए. Conversion. Conversion, बहुत अच्छे. Noun. Conversion is noun और adjective Converted. बिल्कुल converted होता है. Okay. Ma'am, what about convertible? Convertible is also correct. Convertible is also Conversation. adjective. Conversation नहीं है. Conversation बिल्कुल अलग है. Right? Conversation मतलब बातचीत. Convertible भी होगा adjective. Convertible cars, right? बिल्कुल सही है. Okay. चलिए next, yes Srinivas, read the next one. Srinivas, yes. Debt, man. Yes, Debt debt. is a noun. A debt is an amount of money that a person knows. A debt is an amount of money that a person owns. I have not paid my gas bill. I owe a debt to the gas company. Right. So debt का मतलब होता है कर्जा, right? आप कितना मनी किसी को देना बाकी है उसको हम debt बोलते हैं. याद रखिए B का pronunciation नहीं होगा. B is silent. Okay? B हमारा silent है, so pronunciation जो है वो debt होता है. Debt. Okay? जैसे dead होता है वैसे ही debt होता है. B नहीं आएगा. And इसका मतलब होता है कर्जा कि आपको कितना पैसा किसी को देना है, right? How much money you need to pay someone. I have not paid my gas bill. मैंने अभी तक gas bill नहीं दिया है. I owe a debt. ये o word debt के साथ बहुत आता है, बहुत कॉमन है. Okay, o is again verb. O, owed, owed, owing. Okay, o, owed, owing. O is a verb. O का मतलब होता है बाकी रहना, काइंड ऑफ लाइक कितना कर्जा बाकी है, हम हिंदी में बोलते हैं, राइट? वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं आई ओ अ डेट टू हिम. ओके, सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा. ओ इज अ वर्ब. Ma'am, or due का बीच में difference ड्यू, क्या? ड्यू दिस मच अमाउंट इज ड्यू. सो ड्यू हमारा एडजेक्टिव होता है. ओके, Okay. ड्यू एडजेक्टिव है, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. दैट 200,000 रुपीज इज ड्यू, राइट? सो And इतना ma'am, पैसा we बाकी can है. say also rest amount. क्या अमाउंट? डेट अमाउंट. Rest, REST. रेस्ट अमाउंट नहीं बोलेंगे. रेस्ट अमाउंट कब बोलते हैं? द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. जबकि इतना लाइक सोचिए आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और उससे आपको एक्चुअली 20,000 देने थे, सो 10,000 बच गए, आपको देने पड़ेंगे. सो यू कैन से द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई विल पे लेटर. जो बाकी का अमाउंट है वो मैं बाद में दूंगी. ओके, उसको हम डेट नहीं बोलेंगे. डेट इज कर्जा. सोचिए आपने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए. So you owe a debt of 5 lakh rupees to me. Okay? Then you owe a debt of 5 lakh rupees to me. Or you can say that 5 lakh rupees is due. Okay. Yes, Vishakha. Ma'am, there is one word AWE. That means also owner. नहीं, AWE we I often read that awful, AWFUL. awful. अच्छा, हाँ, ये AWE नहीं होता है, awful होता है, राइट? awful बिल्कुल करेक्ट है. बट awful का मतलब अलग है. awful का मतलब घिनौना, राइट? यू लुक awful मतलब आप बहुत खराब दिख रहे हैं. ओके, awful हमारा एडजेक्टिव है. ओके मैम. All right, next who wants to read? बताइए. प्रीति? Yes, ma'am. जी प्रीति. Yes, you can start. Decrease and verb. To decrease something is to make it less than it was before. Hiring more police officers has decreased crime in the city. Very good.
वर्ब है, राइट? डिक्रीज, Yes. डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीजिंग। Decrease. डिक्रीज करना मतलब कम कर देना, राइट? हायरिंग मोर पुलिस ऑफिसर्स, जितने पुलिस ऑफिसर्स हायर किए गए हैं इसकी वजह से क्राइम कम हो गया है, सिटी में डिक्रीज हो गया है। ओके, करेक्ट, वेरी गुड प्रीति। वो बताइए, नेक्स्ट बताइए, रीड। Fault is noun. A fault is a mistake. It is my fault that the can ran away. I left the door open. राइट, इट इज माई फॉल्ट दैट द कैट रैन अवे, राइट? फॉल्ट का मतलब होता है गलती, राइट? मिस्टेक। सो फॉल्ट इज बेसिकली अ नाउन और एडजेक्टिव क्या बनेगा? फॉल्टी, राइट? फॉल्टी। गुड, नेक्स्ट। यस प्रीति, रीड द नेक्स्ट वन। Fund. फंड, फंड, Fund is noun. A fund is an amount of money that people have. We all put money into our club fund. करेक्ट। फंड क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो सब मिलकर रखते हैं, या अकेले में भी रख सकते हैं आप। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव, राइट? सो वी क्रिएटेड अ फंड। फंड इज नाउन। फंड वर्ब भी हो सकता है, बाय द वे। ओके, फंड कैन बी वर्ब एज वेल। मतलब क्या होता है बताइए? फंडेड, फंडिंग। मैम डोनेशन डोनेट करना। यस, काइंड ऑफ लाइक डोनेट करना। ऑलवेज डोनेट, डोनेट हमेशा नहीं होता है, बिकॉज अगर आप किसी चीज को फंड कर रहे हैं, किसी को Charity. मनी का देना, Charity. चैरिटी में राइट, फंड किसी देना। को, नॉट रियली चैरिटी एज वेल, चैरिटी और Bucks, ma'am. डोनेशन। जी, Bucks. मैम कलेक्ट करना। no, once everyone please mute yourself. Someone is singing Bharat Bhagya Vidhata. I could only hear that much. चलिए, सो फंडिंग और चैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, चैरिटी या डोनेशन जो होता है वो हम सेल्फलेसली करते हैं, राइट? सोचिए, मैंने जो डोनेट कर दिया, मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट सोचिए कल को कोरोना का एक नया स्ट्रीम आ गया और उसका मैंने क्या किया? फंडिंग किया कि उसके लिए वैक्सीन बनाई है। सो वो जो फंडिंग में कर रही हूँ, मे बी उसको बेचकर मुझे पैसे चाहिए, राइट? वो जब बन जाएगा तो मैं उसको बेचकर पैसे लूंगी, या फिर मैं कोई रिसर्च के लिए फंडिंग कर रही हूँ जिससे मुझे कोई फायदा होगा। सो फंडिंग इज नॉट अ सेल्फलेस एक्ट। ओके, उसमें भी पैसा ही दिया जाता है किसी ना किसी काम के लिए। Invest. Can we say नॉट invest? इन्वेस्ट। अगेन, इन्वेस्टिंग इज समथिंग जिसमें आप बस पैसे के लिए ही कर रहे हैं। Okay, so I would say funding is somewhere between investing and somewhere between donating. Like हम कुछ गेन भी करते हैं उससे, और उसके अलावा हम उसको मतलब कर भी रहे हैं। We are also providing some kind of value to the society. Okay, so verb भी बन सकता है, and funding मैम यहाँ हमारा पे जो noun भी बनता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, यस, म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल जो फंड, वो एक्चुअली नाउन वाला फंड है, राइट? इट बेसिकली मीन्स यू आर गिविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट? एक कंपनी के शेयर्स को आप खरीद कर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी से खरीद रहे हैं, सो वो आपका फंड बन गया, राइट? इट बिकम्स योर फंड, यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी, वो ग्रो करेगा। ओके, सो दैट इज लाइक द नाउन। अंडरस्टूड श्रीनिवास? चलिए, यस मैम, यस मैम। ओके, चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस बिकॉज बहुत सारे and हमने also वर्ड्स। in Fuji ma'am. Fuji जी, Fuji ma'am capital. पूंजी, जी, कुमार, पूंजी, पूंजी। पूंजी, हाँ। Punji. कैपिटल, Sorry हाँ, for बोल bad सकते हैं। Hindi. यस यस, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। We can say that it is the capital, right? Because if I say I have 20 lakhs as fund, right? इसका मतलब है कि 20 lakhs मेरे पास है कैपिटल के हिसाब से यूज करने के लिए। That is correct. Okay, let's try. चलिए, who wants to answer? Let's start with Alpna. Alpna, would you like to try? जी, Alpna. Yes, Alpna, are you there? Yes, ma'am. Yes, जी, ma'am. जी. I'm speaking. A Yes. certain amount is quantity, ma'am. A certain amount, quantity. बिल्कुल सही है. Make a sentence, Alpna, quantity से. Okay. Yes, सोचिए, बताइए. Okay, you think.
Dipali? Ma'am, it make only amount of quantity. नहीं, amount का मतलब एक certain amount का मतलब होता है quantity. एक certain amount का मतलब होता है quantity. For example, if I say I have a large amount of money, मतलब मेरे पास एक बहुत huge quantity का money है, right? Yes. दीपाली बताइए next one. Ma'am, जी, can I try, ma'am? Yes, Alpna, I'll give you a chance. You think तब तक, right? Okay, Yes, ma'am. yes. Okay. दीपाली बताइए to make less. Decrease, ma'am. Decrease. Any sentence, दीपाली? सोचिए. Yes, अल्पना बताइए sentence. Yes, ma'am. I have a certain amount that I have to invest. Okay, that's good. But आपको quantity use करना था अल्पना. So you can say I have a huge quantity of money or a small quantity of money that I have to invest. Right? Okay, right. Very good, very good. Yes, दीपाली बताइए decrease. I have a bucket of I have a bucket. I have the apples. I have a bucket. मैम एक bucket भर के apples है, so I decrease them. So it was more, so I decrease it by half bucket. You see decrease कम करना होता है, right? So क्या हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मैंने apples को कम कर दिया? No, right? It doesn't make sense. Usually liquids या इस टाइप की चीजों के लिए यूज होता है. For example, I decrease the temperature of the room. रूम का टेम्परेचर मैंने कम कर दिया. Right? I can say I decrease the amount of money I give my son. मैंने उसको जितने पैसे देती थी उसको कम कर दिया. Okay? Yes, Tarla I think has a sentence. Tarla बताइए. मैम my quantity का spelling बता देना. जी बताइए बताइए. My friend made a large quantity of chocolates. Very good, very good. Correct. Vishaka, do you have a sentence? Yes, ma'am. I have a sentence with decrease. As we climb up the mountain, the density of air decreases. Very good. बहुत अच्छा sentence है. Very good, Vishaka. Level of oxygen also. Level of oxygen also decreases. Okay, yeah. बिल्कुल Level correct of oxygen is. Very good, very Ma'am, good. is there any shortcut key in Zoom for to raise hand? I searched on Google, but I didn't find one. No shortcut तो नहीं है. I don't think so. मुझे तो I am very much technically challenged, so I cannot really tell you अगर होता भी. Mute and unmute is shortcut, but Yes, mute hand and raise is unmute not तो मुझे भी आता है. Yes. Yes. Alternate plus A, right? चलिए. Next after Dipali. After Dipali, Kumar. Kumar, would you like to answer? बताइए. Sure, ma'am. Watch To watch closely. Monitor, ma'am. Monitor. Correct. Can you make a sentence, Kumar? My job is to monitor 15 workers every day. Very good. And Absolutely. my job is to monitor the quality of production. Correct. I mean the Very quality of good. product also. I have a sentence. Very good. जी बताइए. When my sister was in the hospital, doctors monitor her condition. Monitored. Past tense. Monitored her condition. बिल्कुल सही है. Very good. Very good. बिल्कुल सही है. Okay. After Kumar, Milan, try कीजिए. Yes. Yes, ma'am. Plant seed. The plant seed. एक bean. plant का seed. Bean. Correct. Bean. जो हम खाते हैं, right? Can you try and make a sentence, Milan? Milan, rajma जो होता है, rajma, have you eaten? Because in West Bengal we don't really eat rajma that much. Yes, yes. Rajma is kidney beans. Okay. Yes. और एक white कलर का आता है, उसको बोलते हैं white में एक black ऐसा spot रहता है, वो भी हम वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा नहीं खाते, उसको बोला जाता है black eyed bean. Black eyed bean. Okay, you can try and make a sentence. Okay. I have eaten kidney bean. Right, I have eaten kidney beans. Right, you can definitely say that. Yes, बताइए. Next. Beans are rich in protein. Very good. Beans are rich in protein. Correct. Next. Ma'am, my favorite vegetable is beans. Vegetable नहीं.
You can say my favorite dish is beans, right? वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल का मतलब तो सब्जी हो जाती है, राइट? हम यूजुअली इंडिया में क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज बनती है जिसको चावल के साथ खाया जाता है तो हम बोलते हैं सब्जी, राइट? बीन की सब्जी बनी है, बट दैट इज नॉट अ वेजिटेबल, राइट? सो यू कैन से माय फेवरेट डिश इज बीन्स, करेक्ट है? ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मैम बीन्स सब्जी सब्जी, सब्जी मतलब वेजिटेबल। बीन्स करी, ओके ओके, वो बीन्स अलग है, वो बीन्स अलग है बाय द वे। सब्जी में भी एक बीन्स आता है, राइट? वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का, वो अलग है। ओके, दैट इज डिफरेंट। ये बीन अलग है, ये राजमा, उसके बाद और भी मुझे नहीं पता, सच में नाम नहीं पता बीन्स के। वो जो होते हैं उनको बीन्स बोला जाता है, बीज होते हैं वो बेसिकली। ओके, वो अलग है और वेजिटेबल अलग है। यस, 1 सेकेंड अल्पना, यस बताइए अल्पना। ओके Yes, I love to eat kidney bean with rice. very good, absolutely correct. Little bit of ghee, right? Amazing. Yes, chaliye. After that, Sandeep, would you like to answer? Sandeep, okay. Srinivas, would you like to try? Yes, Vishakha, you can try. Money you owe. Yes, Money you owe. money you owe, debt, ma'am. Debt, right? Correct है, सही है। बताइए, सेंटेंस बताइए विशाखा। oil means in the candle. No, Srinivas, Hello? you are hearing me later. Hello? I think you are facing network issue, Srinivas. Okay. Yes, Vishakha, debt से बनाइए sentence. Yeah, ma'am. I had taken a loan and now I became debt. Now I am in debt. Now I am in debt. Okay. I am Okay. in debt. Okay, yeah, मैं ma'am. डेट में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, Yes, हम ma'am. बोलते हैं ना Yeah. हिंदी में, मैं कर्जे में हूँ। Yes, I am in debt. Correct. Yes. Next बताइए। Yes, Vishakha, would you like to try? Yes, ma'am. बताइए। Sorry, not Vishakha, not Vishakha. Tarla, Tarla, would you like to try? Ma'am, I would like to try. बताइए, बताइए। Yes, Kumar. Ma'am, Vijay Mallya company went bankrupt due to huge debt. Yes, due to his huge amount of debt. Right? बिल्कुल correct है। Very good, very good. Okay, चलिए। So I hope you have learned a lot of words. पूरा तो complete नहीं कर पाए। Try and make some sentences, guys, and I'll see you guys at Ma'am, 6 before p.m. that, I have one question, ma'am. I mean, Yes. how were you sharing the screen, ma'am? Like, How was I sharing is the there screen? PDF application, ma'am, that you are using? ये book है, book. It's a book. Book का नाम है Essential English Words. Sorry, 4,000 Essential English Words. And book I 4,000. got it, but how were you? I mean, using while using Zoom? I think you have linked आप it. बस it's simple, नहीं, you just open the tab, जो भी आपको खोलना है, Word हो, PDF हो, जो भी हो, वो आप खोल लीजिए and बस share कर दीजिए, share screen. And which it one will was show. that, ma'am? Like the PDF? ये PDF था. It was a PDF. Yes. Just PDF. Yes, it's simply a PDF. Ma'am, there is an option like draw, highlight, every, but I हाँ don't है, find इसमें है, that option इसमें in है। my PDF. ये कौन सा PDF का वर्जन है? I'll tell you. Is it integrated, ma'am? I have no idea. See, मुझे इतना समझ में नहीं आता, मेरे दोस्त लोग कर देते हैं Like, वैसे ma'am, कि हो I जाएगा। mean, you have downloaded externally or it was already there in the system? Don't ask me seriously, Kumar. I even bought this laptop with my friend. He went and said, खरीद कर दे दो इसको जो भी चाहिए. So like he told all the specifications. I No, don't know anything about पहले these things. इंस्टॉल करना पड़ता है विंडोज पे मुझे तो एप्लीकेशन. कोई Ma'am, आइडिया नहीं, actually, मैंने उनको बोला था। I have Yes. certain PDFs application, but I don't find highlighting and text options there because I also want This to one is really teach good. I this do way. also. I mean, teaching practice This for one is YouTube really channel. good, you know, like Kumar, I actually do, I check papers on this. So बहुत help भी होता है इसमें. But So I can you tell really me the don't name, know. ma'am? कैसे मतलब can how do I search for that? You tell me. I will definitely tell you. But मुझे बताइए कि कहाँ search कहाँ करना है. Let me see. Ma'am, on PDF. desktop you can. अच्छा ये है Adobe Reader Touch. Okay, ma'am. Adobe Reader Touch. Okay, it Its is not name there is in my. Adobe Reader Touch. I will have to download. Thank you, ma'am. Yes, most welcome. Okay, चलिए, see you guys at
Good evening, everyone. Pro learners, quickly join the Zoom meeting. All right, so guys, what activity should we start with today? There are only 7 students in the class. So individual speaking or conversation. Hello? Can you hear me, guys? आप लोग Yes, भूल ma'am. जाते हैं ये speaking session है? Ma'am, individual speaking.
Guys, if you have any individual topic, then please share, because I have some different topics, and sometimes I believe that you guys do not know how to answer the different topics. So could someone please share the common topics that everyone could talk about? Because with someone else to do your homework. Like how to procrastinate better than yours, how to become the next Miss Universe. Most embarrassing experience in your life, how to look intelligent. Actually, we have done almost all the topics. So that's why it becomes really difficult to give you guys topic. और जब मैं कुछ हटके topics देती हूँ, वो आपकी समझ से बाहर हो जाते हैं. So today we can go ahead with how to judge people based on their hobby. I think this is a good topic. I believe so. Not sure how you are gonna take it. So first, please, while you start speaking, you can talk about hobby. What is a hobby or what are hobbies? And then you can talk about your hobbies, and then how you can judge someone's hobby. Yeah, people's, how can you judge people by their hobby? Okay. So if you don't understand the topic, raise your hand or just ask. ऐसा ना हो कि बाद में मैं वेट करती रहूं and you guys are speaking something else or you're not able to understand the topic. How to judge? I believe you know the meaning of judge. Judge करना किसी को. How to judge people based on their hobby. ठीक है? This is your topic. So this happens in an interview a lot when they ask this question, what are your hobbies? They like to, understand your personality, your background, what kind of person you are. So hobbies do tell about your personality type. So make sure you raise your hand once you are ready to speak. Alpina, मुझे लगता नहीं आप ready to speak हैं. Ma'am, I have to raise my hand. That's only for means I will speak. Yes, that's only the reason. So you want to speak on this topic without any preparation? Oh no, ma'am. I want to prepare myself. Yes. Yes. But later. So don't raise your hand, na? Okay, okay, Raise ma'am. your hand once you are ready. क्या हो गया? सब भूल गए rules class के? No, no, अगर ma'am. आप ready हैं speaking करने के लिए, आप तब अपना hand raise करिए. Advance में मत करिए. Okay. Okay, great. Abu Yusuf Nahid. So I think IELTS is a big deal and you cannot prepare IELTS at home. So you really need a mentor or a tutor who could guide you in the proper way. IELTS is not what you think. It seems easier, but it is not. Trust me, I have been an IELTS trainer. So I know what, because only a trainer could tell you the tricks. Because in reading, you are supposed to answer almost 60 questions in 60 minutes, which is impossible. Like you need to read, you need to find the answer. So it is impossible without any tricks. So yes, I think you need everyone needs a trainer. I would never suggest you to prepare on your own. It's not ESL, it's not English speaking language, it's IELTS. It's different from ESL. So interview you can prepare on your own, but not IELTS. Okay, so first of all, this exam is very expensive. You are going to pay 15,000 for one exam, and if you don't get your desired score, then I know you have to pay again and everything. So it's better to be prepared in advance.
I hope you understood what I am trying to say. Good evening, man. Good evening, Rishan. 1 second. Arif, the spelling of right. First of all, I would request you to learn the spellings. It's WRITE. I want to learn how to write English, not RIGHT. Right means sahi, right, WRITE wala likhna. Yes, Ishan. Yes, ma'am. So, Yes. as per topic, ma'am, how we can judge people on base of hobbies. So, it is not that much tricky. I think first of all, attach. Usually, you attach with those people whom you found a very like-minded people. Find. Like Who you you have a find? Found is wrong. No yeah, past tense. yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Whom you find a like-minded people, like your mutual interest, based Hmm. on your mutual interest. Then you start to live with them. Then you start to cheer those moments. So you already sit with those people, those kind of mental whom you like most, whom you think that they're gonna agree with me, and we will chill, we will enjoy each and every moment. So we are unintentionally we are already attacked. We are already find those people, and I think we have no need to judge because judge when you are asked to judge. Like if you ask me, okay, I'm giving you this target. Are we going to have a dinner with this guy? He's new to me, and I don't know how to select people for my life or for my business partnership. So you have experience. So can you judge? So yeah, that can be the elements. Like if you can ask your their hobbies, for example, if the person gives you a piece of information, like a person gives you a piece of information, like he's a sportsman. So if you are a sportsman, so you can figure out many personality traits, and those personality traits can help you to make a picture of that guy or make a picture of that particular person. So it helps, but it is not that much usual. It is not that like you always judge people on the base of habits or hobbies. For example, hobbies can also change, can vary with the passage of time. For example, when you become a professional and you didn't get time to, if I want to be a cricketer, so I didn't get time to play a cricket. So I'm not playing, and you did see me. So how can you judge me on the base of my this hobby? Though I love to watch whenever the live match, or whenever the cricket I get time, so I love to watch. Mhm. So I think it's very tricky. There are many other things, and which are better than if you really want to judge people. But on the base of hobbies, you get cheat, and you couldn't get the right information you need and the purpose to judge that person, a particular that person. I think it would be in vain. Uh, so better to enjoy those moments, cherish those moments, than to judge on the base of hobbies, because you are part of that person at the particular moments. Like for example, you are guys who go on a tour, and you met that person, so definitely it shows that he's also crazy about this, and as you are. So you plan different things. You take risk to go on hilly areas, and where sometimes you risk your life. So why you do this? Because you are crazy about it. You wanna do this. So you already like, so no need to judge on the base of hobbies, because you are same. But again, you wanna do a business, you wanna propose someone, you wanna any you have any another a particular intention. So then you can get information to win. You can use this hobby to win the confidence. For example, if I'm a spokesman, so if I ask you, so I can start with this way. Like, okay, I used to play this cricket, and I was a bowler, and you was a batsman. You were a batsman, so yeah. So then you can build this foundation of your conversation, but you couldn't get the relevant information. You couldn't judge the people on the basis of this hobbies. So for that, I think you have to follow the route procedure. That's what I think about this topic.
Very good. I really like the way you shared the points that we like to spend time, or we like to, become friends with people whom we share the same hobbies with. So very well answered, Zishan. Very well done. Anyone else who would like to share their views on the topic, how to judge people on their hobby or hobbies? One person can have different hobbies, one hobby or more than one hobby. So yes. I believe nobody wants to speak. नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने टॉपिक एक काम करिएगा, खुद लेकर आइएगा, क्योंकि मेरे दिया हुआ टॉपिक पे आप लोगों को बोलना नहीं होता, एंड इट इज लाइक वेस्टिंग द टाइम ओनली. 20 मिनट हो गए हैं मुझे क्लास स्टार्ट करे हुए, उसमें से सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट ने स्पीकिंग करी है. ग्रेट. अपना प्लीज गो हेड. Ma'am, yes. Good evening, ma'am. Ma'am, today's topic is how to judge people based on their hobbies. Yes. I start to myself like I am shy, I am introvert. So when I see any person who is like extrovert, or maybe she knows everything, so that time He is I wrong. They are not talking about one particular person. They. okay. That time I feel like I feel inferiority complex in me, like why don't I like them, and I am not like them. I don't like them is मैं उन्हें क्यों नहीं पसंद करती. Why I am not like them. Helping verb plays a vital role. M लगाया तो मैं उनकी तरह क्यों नहीं हूँ. Don't लगाया तो मैं उन्हें क्यों नहीं पसंद करती. okay. Yes. Why I'm not like them. Yes. And this time it will it can be helpful for me, or sometime it can be harmful for me, because if I realize that I would be like them, then I will improve myself. Like I try to improvise myself. If I feel that it is harmful for me, that sometimes it is like I lack of my confidence in me, in I myself. lack in my confidence. Off is wrong. I lack in confidence, या lack in my confidence. तो my भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो I lack in confidence. I lack in confidence, and that is wrong. And sometimes some situations make us like that. And like if I talking about me, I am talking about. I'm talking about
मतलब मैम मुझे ऐसे बोलना है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो If I talk about myself, बात करूं तो ये present simple tense. If I talk about myself, I talk about myself like I am introvert and I want learn everything. I want to, मैंने पहले भी बताया है, want के साथ हमेशा to आता है, ये चीजें लिख लिया करिए. Okay ma'am. I want to learn everything means because I want to be a all rounder person in my words, and I try to learn everything whether it is useful for me or not, and uh, and some situations make me proud when I when I when I do anything for me, and it is it is मतलब मैं सीखती हूँ, like it is learned to I learn it. I learn it, and as I love to dance also, and when I see anyone who dance very well, that time who dances very well, that time I try to learn dance also, and it when I dance then I feel also very good. Then I Means, also feel, also हमेशा verb से पहले लगता है, then I also feel good. and I also feel very good. Whether I have never to go any competition, but I learn for myself only, I because have never been to any competition. I have learned myself only. Okay. So and I also feel that I should never judge people by their first appearance. Maybe first appearance, maybe it is not like that. Means maybe that person is has different nature. Uh, uh, Sometimes like I am introvert, and when I see any person like who is extrovert, that time I shouldn't judge that why they are like they are introvert, why they don't keep quiet, and why they not they are not uh, like me. So that is my, I think that is my wrong opinion, and because everyone has their own personality. Yes. And we never We should judge, never we judge should them. never judge people uh, by their first appearance. Like I am talking about you, ma'am. Like when I saw you in the first class, I first time I realized that you are very strict teacher, and uh, I think I thought that time I have never been speak in your class, and I just joined your class, and I don't want to speak in your class that time. I didn't passed. I didn't speak in your class, but slowly I didn't want to. But slowly, when I attend I start attend your classes. I started your classes. Then Attending I कौन realized. लगाएगा? Yes, ma'am. Attending कौन लगाएगा? वो भी खा रहे हैं आप तो. I started attending your classes.
I started attending your classes. Then I realized that you are maybe you are strict, but uh, because of your strictness, we can learn many things. Because when you interrupt us and when you try to teach us, then I mind our mistakes, and I try to never do our mistakes. Means I never repeat our आई के mistake. साथ आर कैसे आ सकता है अल्पना? आई का possessive pronoun क्या होता है? We, ma'am, we. जी. And I think this will help us. Means your strictness will help us Yes. for learning everything, and many things happen with us that then uh, uh, that time we realized that we never we should never judge people by their first appearance. Yes, this is very true. We should never. Yes, ma'am. All right, so very well done, Alpana. Finally, किसी ने बोला आपके अलावा तो कोई और शायद स्पीकिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और ट्रस्ट पे मैं किसी से बोलूंगी भी नहीं कि गाइस प्लीज गो अहेड एंड स्पीक, शेयर योर व्यूज, बिकॉज ये आपकी अपनी मर्जी है. दैट इफ यू वांट टू स्पीक इन योर क्लास आपका भला है, इफ यू डोंट वांट टू स्पीक इन योर क्लास आपका भला नहीं है. मेरे इसमें कोई वो नहीं है. अल्पना बस अपने वर्ब्स पे वर्क करिए और ये टेंसेस का ध्यान रखा करिए. जब भी आप पास में बात करिए, आप पास में बहुत अटकती हो, तो मुझे समझ नहीं आता. पास सबसे इजी टेंस है क्योंकि पास में ना ही हमें वर्ब में एस और एस लगाना पड़ता, ना ही कुछ और लगाना पड़ता. सबसे इजी है पास टेंस, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. उसमें आप सबसे ज्यादा अटकती हो. तो जब भी आप बोल रही हो तो पहले रियलाइज किया करो कि मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ या मैं पास्ट में. अगर आप पास्ट की कोई स्टोरी सुनाने जा रही हो तो उससे पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाओ दैट आई हैव टू स्पीक इन पास्ट, आई हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके? Yes, ma'am. All right, great. Devendra, please go ahead. Good evening. Good evening. The topic was how to judge people on their hobby. I think it plays a very good role to make someone's good aura, to make himself, him or herself, good business quality and all. For an example, if somebody wants to open a school, okay, so what he will do, he published, he will give advertisement in newspaper and all. So through that newspaper, candidates will apply in his or her school that they wanted to be a teacher in that particular school. So that person who gives the advertisement, he will, the candidates will apply through that their biodata form and all. So in biodata form, they use their hobbies too. So from that hobbies, the principal or the chairman will came to know that what kind of activities they can do. See, somebody is interested, some candidates in interested in sports activity and all. So that it shows ki that teacher can make a good build quality between students and him. So that good quality definitely going to impact on the academic results too, and that academic results give the give boom to my business too, give booms to my business too. It means my school going to be a hike now. So from that hobbies, I came to know which kind of qualities are having my candidate. So it's very important to पहले से अनुमान लगा लेना, like what we say. Presume, they will presume. Okay, so और it's assume और presume दोनों हो सकता है. so they can presume what kind of hobbies and what kind of interest are having my candidate. So this will definitely going to play a good role in his school. I'm just taking an example of school only. There might be a different An example of school only. There might be a different categories and all. One more example, like Ravindranath Tagore. So as much as I read about him,
he was a very choosy kind of person. He always make friends. If he wanted to be make a new friend, he always took lot of time with him. वो उसको पूरा खंगाल लेता था. Then only he can make a friend. Then only he will make friendship with him. That's why the reason he wrote two national anthems, one India and one Bangladesh. Bangladesh. And he was awarded by the Nobel too. So Yes. that thing I think we should learn from the Rabindranath Tagore. Today's topic connected with him because he was very choosy to making friends. He Making friends is wrong. To make friends. to make friends. My mistake. Mhm. And yes, that's why I think judging the people on their hobby is very important because it plays a very good role in our life too. We should have a good surrounded company to us. So अभी तो इतना ही दिमाग में आ रहा है मैम और सोचता हूँ then later ना. It's okay. Very well done, Devendra. Very well done. All right. So next we have Devendra. And Ma'am. in making friends होगा देवेंद्र अगर आप कह रहे हैं गाइस पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है ना बहुत गाने की वो बाहर चल रहा है सो इन मेकिंग फ्रेंड्स होगा लाइक ही वाज वेरी चूज इन मेकिंग फ्रेंड्स हाँ जी अल्पना आप कुछ कह रही हैं मैम जैसे मुझे बोलना था मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या करना चाहती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ ओके थैंक यू मैम दीपेंद्र प्लीज गो हेड Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? I am good. How about you? Yeah, ma'am. I'm very good. Ma'am, actually, when it comes to judge anyone or anywhere in the world, so two things come out, like one positive and negative. So, in which sense you are judging people? If you are judging in a negative, so it's an extremely bad thing. But if you are judging in a An positive thing, extremely bad thing. And vowel hai e. It's an extremely bad yeah, thing. ma'am, an extremely bad thing. But if you are judging people in a good sense, in a positive sense, then it may be good. So the topic is about on the same thing. So actually, ma'am, it's a very like a difficult task for everyone. If you are not like if you don't know anyone, like what like in which field they are working, so you can't judge them. But if you know them, they are working in a particular field and you are belongs to the same field, so it's really easy to find out what they are doing. So ma'am, actually I would like to share one example. One of my cousin, and he is working in a same field, technical field. Actually I'm working also in the same field. So sometimes you are sharing idea to each other. Like he said me like just few days many ideas to me. And sometimes if I have some idea in technical, so I was thinking I'm thinking that he needs idea in this field. So then I would I want to give him idea. So Yes. it's easy to find. Mhm. So same thing I'm doing in my LinkedIn account. Actually, I want to make friends from foreigner. Yeah, if he or she is not belongs to Belong. same particular field, so I don't want to friend or I don't want to connected with them. So if they are in the same field, if you are working in the same field, so I would like to have connection with them, so they can share, they can post anything. So simply, from their post, I can get something. So it's easy and to make and working in a particular field which helps you most. Yes. So doing and making a same a mutual connection, so it's a really good thing, and you will be in good situation. So taking a decision and learning from your mutual, because they are working in a same field and you are doing also same work, so it makes your life bright. So these are the things you need to consider. But judging anyone like they are working in different field, you are working in different field, and you are saying that I'm very good, I'm an extremely good in this field, and you are nothing. So which is a bad uh, thing I can say. So we'll have
to think about before to say anyone that you are not enough good, because they are working in their field and they are very happy. So we shouldn't comment on their work, on their life, because they are happy and they are struggling to achieve something. So actually I'm I judge people very calm and very positively positively, sorry ma'am, positively, yeah. So it's a very good thing that if you are judging anyone in a good sense, so you will be motivate them that you have to work, you have to work, and don't lose your hope, because anything will happen in the future if you are working hard and you are thinking that I can do. Because giving a hope to anyone, then he or she will be so much motivated, and he or she can do something better. Before, she wasn't good in something, but due to your motivation, he or she can achieve anything in their life. So giving a motivation, and if you are not giving a hope to anyone, so they might be in a trouble, and due to your killing hope, so they want to be success in their life. So these are the things you need to consider to judge any people anywhere in the world, whether it's a company or just a one friend. And the vendor was given a Just really a good friend, just example. one friend is wrong, Dipendra. Just a friend, okay? Just या तो one बोलिए या a बोलिए. Just a friend, Yes. he has given a really good example. Like if you are hiring anyone in a company, so first you need to many people मैम just की by लाइट their चली गई. CV, resume. दीपेंद्र, So it's sorry. मैम मैम का नेटवर्क चला गया शायद. शायद. चलो बोलो, मैं आई एम लिसनिंग, यू स्पीक. Yeah, I was saying that like an interviewer judge, how interviewer judge, they don't know anything about you, so they just look your resume, look your CV, and analyzing the things in the CV what you have written. So through your written paragraph, so they will judge you according to the paragraphs, like according to the things which you have written in your resume. So through that resume, so they can judge you negative or positive, that you are able to do something in this company productive or not. You are able to do like by, if you are not good in this position, so they will not hire you. So they will search for another people. So you are not suitable for this job, so they simply can say that you are not good enough in a good communication skill, as well as in a resume you have given like your degree is a little bit different as compared to others people. So I need highly and successful, like who have great skills in a particular field, who have experience about 3 years 4 years, so they can do something better in this field. So these are the things you'll have to consider before judging anyone so people. So yeah, I have done. Actually, let's Yeah, wait for the well name. said, Dipendra, well said. You spoke very well. Yeah, thank you. Welcome. Depends, sir. Yeah. Can you hear me? Yeah. Say positively. Say positively. 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 Come again. Positively. Positively. Am I right? Lee. Positively, Yeah, yes. you are right. Since you are I am not the host. pronouncing this, come on, yeah. Come again. Positively. Positively. Come with a sentence. That would be great. Yeah, there are two things. First, you need to judge anyone. So
One is negative and second is positive, negatively, and second is positively. Yeah, Good one. you done. You did. Yeah, other person are also there. Sandeep Kaur, he can also speak. It's Sandeep Kaur. Is he or she? I don't know. If she is core, then she. So, because core is attached with she. Yeah, she has unmuted. Ma'am, do you wanna speak? Yes, I want to speak, but I am preparing. Few lines are left. Okay. No issues. Take your time. So, what was the topic, guys? Like, how to judge a person? No, how to judge a person based on their hobby. Based on their hobby. Hobby. Yeah, That was the topic. yeah. So is Sachin Yeah. there? How to judge people based on their hobby, interest. Is Sachin there? Yeah. Yeah, madam. I'm the Yeah, one. I recognize your voice, so that's why I'm asking. Really? You recognize me? Great. Yeah. And Dipender's voice is also I recognize. Familiar to you. Yeah. Good one. You are great going daily sessions, daily practice. Yeah. We are lagging behind from you. No, So no, no, sad. no. You are winner. You no need to attend. You no need to attend any class. Not like that. You are a teacher for me. Oh, oh my Yeah. goodness. We are survival. Nothing like that. In some way, I can say. In another way, like nothing. I'm nothing in front of ma'am No, and no, all. no. You are, Sachin. You are. Leave And many it. students If agree with me. Many students agree with me. Is Jisan in the class? no, he's in the VC. Now today is no. I think after speaking here, he went away. I'm watching that he's in the VC. I thought that class is not running. Then I came here. I thought, oh, class is running and he's still there. I think he Sachin, has spoken, right? you heard me in ma'am Yeah. class. Yeah, Then I heard. Yeah. tell He me finished how I in improve the beginning. myself or not. Means That was good. I think ma'am has given me feedback. So yeah, there is no ma'am point is in doing yes, that. I know, but I'm asking to you. You are doing such a good job, I would say. Definitely, it's good. You are improving day by day. Now, what you want? Everything is going good, and work on that when where ma'am has told you that past tense. So Yeah. go with that. That would be great. And about the topics, You are using. I think Actually, Sachin, what happened, when I start speaking in ma'am's in front of ma'am, I get nervous. I got nervous. So I then forget. tell this to ma'am directly. Tell this to ma'am. Ma'am, I'm Yeah. afraid of you. That's it. Yeah, Ma'am will I tell me told her, another solution for that. I told her, now I'm speaking, but I'm relaxed this time. But in front of ma'am, I got nervous and I forget everything. Means I know what I'm speaking, but what That's good. yeah. So, Someday I will. Dipen, have you joined by Zoom or Learner Live? Hello, Learner Live. Oh God, you are host. Yeah, How will you I'm host. add? You cannot add ma'am. Maybe ma'am will come back or not. I don't know. Yeah. Sometime it happens. Someday ma'am tell us that some other one was host and Parveen, you can also speak. Okay, bye. Carry on. You can also speak. Oh. Are you going? No, I'm not. Mhm. I'm waiting Yeah. for Sandeep, ma'am. Let her speak. And I think nobody can judge by their hobby, but at least you can make some point on that. And I think
if I talk about cricket directly, then it's very clear that many people start judging that they don't know what is happening in the ground, but they start making points, as our Indian figure says that always point finger on others instead of focusing ourselves, right? So anybody can judge easily, but you cannot judge a person by their hobby, and only you can just make some points on that, but that would not be absolutely correct, I would say. And just like if I take example, when Alpana ma'am was saying that, so I remember that point when I was Name convincing is her to join the group. So she was not coming in first stage, or you could say that first impression, she was not coming, but after some time she realizes that okay, there is something in him, then she believes on me. After that she came. So you cannot judge a person directly by his behavior or hobby, But you because at that time, but you have thought about what you had thought about me at that time, like how to uh, judge me. not judge means I your comments were coming, so I thought that you are a good learner and you really need a practice, that's it. So I was keep No, trying. I told, yeah. why when I was not coming in your group, that time, but you are that time, but you were thinking about me, like I was thinking only that she doesn't know about Hello English, how to follow and unfollow others. yeah, So yeah, that was the only point coming in my mind. So I thought, let's give chance to Paras. If she requests you, maybe you will come. So many times, sir. So you cannot judge a person directly, but yeah, after all, right. you got to know that every person is good, and then the journey begins. So I think because of hobby, you cannot judge. Yeah, Maybe the person will pretends you in front of you, but behind the scene there is something else. So it would be anything else. So you and cannot judge. many people ask me that why are you learning English? And I realize that they are also judging me. Then if I settle in my life, then why Hmm. I need to learn English? Maybe they are Directly say judging that. me. They Exactly. directly say that I'm in hunger. I'm in Yeah, hunger. I'm very hungry to learn. Simple. yeah, yeah, I want to yeah, develop myself. I want to improve my personality. yeah. Simple. I try to explain them, but means maybe they are judging me like why she is learning, because I think she is not need no need to learn English at this time. So Hmm. like Many persons are there. today's Who, point are today's topic are never we should never judge To just people. today's topic are not today's topic. Today's topic, okay. Thank you, Dipendra. anyway, go ahead. And what about Sandeep? Will you speak? Because it's like we are capturing the moment. You can speak. Yeah, Sandeep, you can speak because ma'am is not here, Hello so you everyone. can speak. Hello everyone. I am a new student. I joined from last week. My English is not too good, but I am trying to speak. What's your name? Let me confirm. You are girl, right? If I'm not wrong, Yes. because your voice is saying like that. Okay. Am I correct? I'm saying that I am a new student. I Yeah, yeah. joined That I know. from last That I got to know. week. I'm just My confirming English whether is you not are too male or good. female. I'm trying to just trying to clear my point. My topic is how to Okay. judge people based on their hobby. People have many different types of hobbies. Every person has their own hobby. First, I want to clear the meaning of the hobby. Hobby means something that you do regularly for pleasure in your free time. Here is a topic how to judge people based on their hobby. I think it is very difficult to judge someone by their hobby because these are uh, because these are
just fun activities, which are uh, different of every person. Some like to listen, some likes to listening music, and some likes traveling and reading books. But from my point of view, it is very difficult to judge someone by his or her hobby. That's it. No, 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 no. I'm Let her trying. complete. It is very difficult to judge someone without having enough information. I do not believe this is possible because hobby are universal, and it is very difficult to determine a person by their hobby. I guess this it is like saying don't judge a book by its cover. Thank you. Are you done? Yes. Okay, great. So, Dipen, you wanna say something? Or No, you can go first. no. I just listen to her for the first time, I think. And I think, is that your first time that you are speaking? Yes. Okay. No, second time I speak in this class. Okay. I not So, find out the ideas, get the ideas about this topic. Otherwise, I can speak more on this topic. see, ma'am, what I believe, when you join regularly the classes, so you will be familiar with the topics as well as with the teacher and your co-learners. So, as it is your first time or second time, I wouldn't like to interrupt anything, but few grammatical mistakes were there, whether you have prepared or your sentences, Okay. because there was some grammatical mistakes, some likes. So there some like there should be like only. So Okay. like this kind of mistake, subject verb agreement mistake, I hope you know. So this type of mistake in your speak, rest everything is fine Okay. because your fluency is there. Rest, what you have to do, you have to work on that. You have to practice more and more. If you can attend as much class, you can do it. I think the next class will be for Anisha ma'am. Attend that class also, speak there, and practice as much as you can. You need only a practice. Okay. That's all I want to say. Thank you. Sachin, you got pro membership or subscription? Super subscription. Okay. And Sujata ma'am, why are you silent? What happened? I got a call. Coil or call? Call. Slip tongue. Slip of tongue. Okay. Slip of tongue. Yeah. Anyway, that. So, don't you want to speak on the topic? Yeah, I want to speak, but I'm scaring. In front of me? Oh Why my are you goodness. scaring? There In is front no of any me. teacher. You can speak. Now, no, There is no teacher. now, now the turn comes to judge Sachin, no? That's why. Now you have 5 Oh minutes only God. left. Come on. You can speak. Okay. I'm not the Can judge. you? The judge is only the teacher. Yeah. Okay. Okay, here some disturbance is there. Some songs are being played. But you are Yeah. properly audible. You can speak. Okay, okay. Mhm. Yeah, I don't agree. We can't judge people based on their hobbies.
Because some people have hobbies to refresh their minds or earn money by teaching classes, by taking classes like painting classes, dance classes. That's why we can't judge them. And also, according to their time, they change their hobbies time to time. Sometimes they have painting hobby, preparing food hobbies, like that they changes, so that we can't judge by based on their hobbies. And some people don't have any hobbies. How can we judge them? We can't judge them, no? So that don't judge a book by its cover. That's all, Sachin. Go ahead. What happened? You are going good and okay. Yeah, I have many hobbies, but if anybody says, if anybody judge me, you are like that, you are like this. If anybody judge like this way, I don't agree. Like that, other people also don't agree if we judge based on their hobbies. Mm. Okay, that's all, Sachin. Yeah. That's all. Okay. I mean, somehow you managed it. I manage. That's good. Yeah. But I don't have some many points. You were Actually, not I ready for don't that, have but the ability to elaborate the topic. Actually, that's at least my. that's great. At least you have made something. That's I like. And please, if you could forget this, people, it's people. Okay. Yes, You yes. know very well. Many I have times. told you there also, and here I am telling Yes. you again, people. Yes. Forget it. Correct. Yeah, That's I people forgot. only. Sachin, I Exactly. want, if you when you finish, then let me speak. First you finish. Again? No, no, I want to say something else. Yeah, why not? First you finish. What are you saying? What were you saying? What were you saying? What were you saying? Okay. What were you So saying? I told you that Sujata ma'am, thinking, and Yes, I think yes. you. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Milan. Mm, Good evening, everyone. Welcome to the class, guys. Chiliye. So this is a speaking class. We will continue with our topics. Those who did not get a chance yesterday, hopefully they will get a chance today, right? मैम आज This- आज कोई जाने वाले हो आप कहाँ पर कोई yes, yes. I'm not going anywhere. I was actually taking some pictures for some work. ओके That's why I had to get. I hardly get it. So काम नहीं होता है तो उसके बिना मैं ready भी नहीं हूँ. ओके Chaliye. So we will start. Those who did not get a chance yesterday, they'll get. Milan, you have to speak today. Okay? यस मैम Chaliye, all the pro learners join quickly. We will start now. And if you guys have any questions, especially about what we have discussed till now, you guys can ask me. Okay? पूछ सकते हैं. चलिए, Karup, Srinivas.
I hope you guys are enjoying the classes and understanding everything. अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता या फिर कोई सजेशन भी है आप लोग दे सकते हैं, राइट? क्योंकि what I do is if you guys are constantly giving me suggestions, I try to teach accordingly, right? अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप देने की कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूंगी इनकॉर्पोरेट करने की क्लासेस में। मैम आप कभी गूगल ड्राइव यूज किया है? Yes, ओके। I do use No. Google Drive, अभी भी करती हूँ। Yes. नो मैम जो बोलते हैं ना, जो आप फाइल शेयर करने के लिए, तो आप तो जी। बाहर से भी फाइल शेयर कर सकते हैं, माने उसके मदद से। कर सकते हैं, बट एक्चुअली बात ये है कि हमें अलाउड नहीं है, राइट? वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ओके अदरवाइज आई ओके वुड हैव डेफिनेटली शेयर्ड द फाइल इन दैट वे, राइट? ओके बिल्कुल कर मैम। देती, अलाउड नहीं है, क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग गाइस, आई थिंक द प्रीवियस क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। Zishan and Dipendra and the rest, right? If you guys want to speak and if your name is not there on the list, then you can put your hands up, right? क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट में बहुत लोगों के नाम हैं। अगर आपका नाम नहीं है, जी श्रीनिवासन तरुण, I can see, I'll write down names. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट, धीरे धीरे शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चंस है गाइस, कोई डाउट्स है? ओके, who wants to start? I can only see 3 people, Srinivas, Tarun and Milan. बताइए, who wants to start? मैम मैं ही करती हूँ। Okay, great, Milan, that's the spirit. Okay. Very nice. Okay. चलिए, what will be your topic then? I will talk about my country. My gosh. All right, very good topic. Chलिए, let's start. Okay. My country name is India. You can say, you can call with other name like Bharat or Hindustan. My country capital is Delhi, and here many type of religions peoples has lived together, so that many different type of festivals Are celebrated. are held in our country. And people celebrated those festivals. I don't know people celebrated or not, but they celebrated their holidays. And so and our education system is not very good, but yes, it is improving day by day. And our so yeah. Milan, you're going great. Very nice. Very nice. Yes. Continue. Our economic grow day by day, improving. So yeah, this is my country. Thank you. Very good. Very good, Milan. बहुत अच्छे. Very nice. Very well spoken. Okay. All the sentences were well formed. All the ideas were very nice. Okay. Great work. Keep it up, Milan. Keep practicing. All right. Yes, हर एक क्लास में ऐसे ही बोलना है। आपने खुद से बोला? Yes, The ma'am. entire thing you spoke. Very good. Very good. Great. Great. Very nice. Keep practicing. Okay, Milan. You are doing great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Abhay. How are you, ma'am? Yes, I am much better. Thank you. How are you guys Thank you, doing? ma'am. बताइए. Yes, ma'am. I am also fine, ma'am. Great, great. And any questions, guys? Because lots of you joined a little later. Any questions from your end? If not, then we will continue with the speeches. Okay. Chलिए. Then we will move on. My name also. Yes, Z, right? Yes, Z and Adi. Chलिए. So after that we have Zishan. Zishan, would you like to speak?
Or do you Yes, want to? ma'am. Good afternoon, ma'am. Good evening. Good evening, Good Bhagatan. evening. Yeah, ma'am. You look fresh today. Like you look like the old man. Thank you. So I'm I think feeling you also much better. recovered. Yeah, ma'am. It sound like you were on track. Yes, yes. Thank you. Thank you so much, Zishan. So good to see you, ma'am. Thank And the you. topic is politeness. Yes, politeness. Okay, let's start. So, like this is kind of behavior. This is kind of uh, personality characteristics. I think every person should have, and if they don't have, so they should try to obtain this kind of personality traits because it will help you a lot in thick and thin. And if you stuck and you can't see anything, I think this is the only personality trait that can help you to solve that particular problem. Because politeness, like you get assistance, you get honor, you get respect from other people. So when you present yourself, you set your image, you develop your image of politeness. So definitely people would love to sit with you, share with you, talk with you, and they actually that person can that people can be helpful in solving their problems. So you can have rich experiences. You can add more valuable things in your personality just because of this politeness. And how it works, like if you like mostly the polite people, what they do, like they always use say please, thank you in their conversation. They actually try to pretend, they actually try to give this expression, yes we are. So that's why they use humble words, gentle words, which doesn't sound hard. Those words which do not sound hard, do not sound kind of you could say that the hostility. So so they use mostly those kind of words, please, thank you, right, I'll help you, yeah, wonderful. They love to appreciate, they love to give credit to people, they love to back up, they love to give confidence to their opposition, and they don't get annoyed with the success of others people. They actually celebrate together. So these kind of the things the polite people do, and they always they always term themselves, yes I did wrong, I think I shouldn't say to you, I think I should have stopped myself. So they don't blame others, they actually figure out what we did wrong. And if I hadn't done this, so then the result would have been different. So this is how they present. And they they don't, like if they know their boundaries, they don't cross those boundaries. For example, if I'm want to know about you and you don't want to share to me, okay, I would ask you one time, or and that the method shouldn't be like direct method, it should be indirect. If I really want to, if I'm really eager to know. But even then, if you denied, if you give me even a single emotions, a kind of negative emotion, you don't want to talk, so they don't force you, insist you say something like that. So they are very gracious persons, I think. uh, and they try to make people comfortable. They don't want to annoy people. They remain calm. And this is the whole process. I would like to mention the one great batsman or great keeper from the India, Mahendra Singh Dhoni. So you see that that person has been a successful just because of this character, this traits politeness. They don't shout. They don't. You haven't seen this guy in a aggressive mode. They remain calm, and that's why they make very outstanding decisions. And that's why he's been a most successful captain, most successful captain and player in the history of cricket. So this is very important. And I'm a aggressive person, but I know the importance of politeness. And whenever
I try. It is not that much easy to adopt this opposite thing. Like if you are aggressive and you thinking to adopt politeness, it's a very elusive thing. But it would be a very beneficiary, benefited for you if you adopt. So you have to try. At least we can do that, and if you are trying, so I assure you, you can adopt, you can change, you can surprise your opposition or your surrounding. So that's all. Absolutely. Very nice, Zishan. Thank you so much. Absolutely correct, right? Politeness is so important for our character, and it's very, very important to build social relationships, good social relationships, right? Just like you gave the example of Dhoni. Absolutely correct. Thank you so much, Zishan. Very well spoken. Thank you. And you used very good words like hostility and all. Very good vocabulary. Thank you. Chili, after Zishan, then we have Dipendra. Dipendra, would you like to speak? Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. How are Good you? evening. Yes, I'm much better. Thank you. How are you? Yeah, ma'am. I'm also good, and thanks for asking. Great. So I would Chalo. like to speak on relationship for turn because I have spoken on others. So Right. now it's turn for relationship. Bilkul. Chalo. Let's start. Yeah, Dipendra. ma'am. Actually, ma'am, when it comes to relationship, because it's a really important, I think, in every life, in every human's life. So living in a bad relationship, it can affect your life, and it can't give you option to live a better life. So you'll have to think about to whom you are spending your life. He or she suitable for you, or he or she doesn't suitable for you. So also because sometimes ma'am, living in a bad relationship and you are ignoring them again and again, I will facing problems. So sometimes I have seen many examples in my society as well as in others villages. So what I have seen, they are making huge money in their life through their business, and they are happy. But when he or she came at home, so he doesn't feel very good, happy, because they don't have mutual understanding. If you are living in a good relationship, so you'll have to make it better through your mutual understanding what they want and what you want. So you'll have to consider as a positive, because taking a positive, so make your life better and you will live in a good situation. So these are the things you'll have to think about your relationship, because for small and tiny things it can affect your whole life, and you will be in a like a divorce. So don't make any bad situation in your life. So also, because in which field you are and in which field they are, so these are the things, because according to the field sometimes it's easy to share, because your wife is the only one who you can share everything, and your husband is the only one who can share everything, to sharing your problems and positive idea, so they can suggest you according to the thoughts, according to the idea, according to the plans. But no one can give you real fact, no one can give you solution. I have seen, ma'am, many examples like you met an accident. There is no anyone who can help you nowadays. Without any assistant, you will have to, go for the hospital and hire for nurse and giving money to them, so they can look for you, like a sense of your house, like your family. So it's a very tough question. So husband and wife is always stand in front of their like one. So also relationship like a fathers, mothers, sister, brothers. So you'll have I have seen in my society they are how they are loving
and how they are spreading their love towards their brother and sister. They are helping in bad situation, and which is like I can say really good thing, because uh, what I have think, there is nothing better than this world, helping people to succeed in their life, to see happy, to see in a pleasant, like mood. So because you are given to hope to live a better life, if you can't give, who can go give them? Because family and relationship, like relatives, and apart from relatives and your family, no one can give good suggestion to him, because outside worlds what's are happening, because they are totally busy in their life, they don't have so much time, so they can give you and they can suggest you this course is a good for your life, so you will be able to achieve something in your life. And they can't teach you anything, but your family is always stand in front of you, and they can support you in any bad situation or situation that you are having right now. But apart from your family and relatives, I don't think that people have so much time, so they can give you um, like a precious time to make your life better. Because I can say before, people were given like their precious time to those who wants to really achieve something in their life. But nowadays, due to high competition, people are busy in their life, they are struggling, because we are living in a digital era and people don't have so much time, because they have also dream, they have also hobby to complete, and they want to see that I want to become something in my life, in my career. So due to this, so they don't came to your house, came to your home, and they can tell you that why you are upset, why you are feeling not good, why you met an accident. They no one can ask you, no one can care you. Even your friends, you are thinking that my friends are true friends, best friend, they can they are always saying that I can help you. No one can help you in a poor situation, in bad situation, in worse situation. But your family and your husband and wife is always a stand, because they are loving you, they know the value of you, that what are you doing. Sometimes I have seen, if no one is supporting you, like even your wife, then your mother is the only one who is always a stand in front of you, because she knows everything about you, because she has given you birth, and she nurtured you very well since the birth you have taken. So as a mother, they are as a mother, they are saying that you are my son, you are my daughter, and I would like to give you chance to fly again. So hope this time you will be do something better, and you will achieve something good in your life, and hope you will be good in the future, and so you can live a better life. So mothers only can understand. So I think our relationship is a very important uh, thing in our life. So when it comes to relationship, you must be active what they are think, and if they are uh, like for selfish, I have seen many people are selfish, they are not helping their mothers and fathers, brothers, even sister. They are living their own life, they are ignoring their family. They have spent you many rupees, them like $1,000, and you become something in your life and you forgot your family, so which is an extremely bad thing. You will have to think about your family, you will think about your brother who gave you so much money to study further and to become something in your life. But you Okay, have, very nice, Dipendra. You can continue. yeah ma'am, I'm about to end, ma'am. Okay, sorry. So yes, I know that you'll have to spread love towards our family, because they want your support right now. In the like young age, they are supporting you, because you need and your base is totally on your fathers and mothers, so they can help you and they helped you. But this is the time you need to help, but due to your family, due to your wife, and you forgot
to them, and you are saying that there is no need. So it's happens in mostly in a village, in a rural area, but I don't know about cities or urban area. So so talking about relationship, when these are the things come in our mind and I have seen, so Right. I am feeling very bad at the time. Thank you, ma'am. Very nice, very nice. The things are well done. Okay. Just I think like it was a little repetitive, right? So आप थोड़ा points को और structure करके बोलिए. Okay. When Oh you're yeah. speaking, just structure the points a little bit when you're speaking. Otherwise, very well spoken. Definitely all the points are absolutely true, right? बिल्कुल सही थे and very well spoken as well. Thank you. Thank you so much, Dipendra, for speaking. चलिए. After Dipendra, yes, Sandeep, I'm writing down your name. After Dipendra, we have Alpna. Alpna, are you there? Yes, ma'am. Yes, Alpna. Good evening. What Good will be your evening, ma'am. topic? Ma'am, my topic is education. Education. Okay. All right. Let's start. Okay. Education is most important for everyone uh, because if we are educated, then we can do many things. Like we can achieve our goals, and in some way we can help our society also. Because if we are educated, then we follow rules uh, which are following in our society, and uh, we can also educate our children also. Like if we are if we get a good education, then we can do good job also. And nowadays uh, uh, if you have a good job, I mean if you are doing good job, then you can earn lot of money. And like money is also important for us. And if we want earn money, then we also need get knowledge, much knowledge about anything, like means what we want to do. And we can get knowledge uh, only from education. Some students complete their education, means complete their education, and after if they want some if they want some their own business, they have to more study. And they go outside and they get uh, masters. And after their masters, they establish their business, because they know they each and everything about their business, means what they want to do. And if if we are illiterate, means if we don't know anything, and then that time some other people, like cunning people, try to fool you, uh, try to make fool you, like because Make you nahi hai. know, Try to fool you is correct. Fool is a word. fool your. Try to fool you is correct. Try to make you fool nahi hoga. Okay, try to fool you. And this time maybe you can get uh, harm yourself, Maybe you because can harm yourself. you can harm yourself because you don't know anything, and you just follow them. So uh, Yes. education is yes, education is most important. And like nowadays we are very platforms, we have many platforms like Hello English app. Like me, some people's like they are not educated,
means they can't get more education in their era. So this time they can also learn anything, means learn English and many things they can, because this is easy platform for learning English. You can learn English uh, at home, at At home, your own home. at your own home, and you no need to go anywhere. And other things also you can learn at your own home also, whether it is education, or if you want to do any business, you can learn by your phone, and you no need to go anywhere.